Hey, what's up? I think I'm live. Yes, I'm live. कहाँ हूँ? कहाँ हूँ? Let's see. Let's wait for people coming in. There's a lot of stories. काफी कहानियां बतानी है. आज क्या करना है? आज खेलना है और बताना है कि कहाँ भाग गया मैं जल्दी से. Hopefully as soon as people are coming in, पता चल जाएगा. ऑडियो ऑडियो सब कुछ सही है. इंस्टा पे भी डाल देता हूँ. Let's go. Hmm. Streaming looks good. And we've got a few viewer as well. Welcome, man. देखते हैं कब सब कुछ ढंग से चल रहा है. कहाँ हूँ मैं? वेगस के अपने एयरबीएनबी में हूँ. इतने दिनों से कहाँ भागा हुआ हूँ वो तो बताना ही पड़ेगा. And just gonna figure out how the chat is. आज स्पार्टन में खेलने वाले हैं. ऑनलाइन खेलने वाले हैं. यहाँ वेगस में अभी सुबह 5:55 हो रहे हैं. अर्ली मॉर्निंग. Close to 6 in the morning. And yeah, we've got a few people coming in. Awesome. Just gonna configure the chat. Oh wow, काफी जल्दी जल्दी लोग आ गए. Alvin's here. Sanyam Jain. Yeah, man, you're the first one. Thank you, thank you. Missing the vlogs on YouTube, huh? Uh, even I am missing making them, but things happened. Good luck, sir, says Abhishek Gautam. Thank you, man. Where the vlog stopped. It was a fantastic series. मेहनत लगी यार. At least we did it for a week. That was something which had not been done previously. एक हफ्ते के लिए अब डैनियल लेग्रानो करता है. बट अपने इंडियन कंटिजेंट में से करने में मज़ा आया. आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट. दोस्त लोगों को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करी पर नॉट एवरीवन लव्स बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. बट ऑल गुड, ऑल गुड. Am I playing WSOP? I was. Emphasis on was. और thank you Arindam Nayak. फ्लेम बॉय हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछते हैं. अरिंदम नायक says good luck. Thank you. My one day grind session. Yes, the Sunday grind. उसको मतलब विजुअलाइज करने में कैसे वो वीडियो आने वाला है और ये सब काफ़ी टाइम लगा था. इट वाज वन डेज वर्क लेकिन एडिटर ने लिटरली हाथ उठा दिए थे 12 घंटे में. मैं नहीं कर रहा, मैं सोने जा रहा. सो दैट वाज समथिंग फन. मज़ा आया था उस वीडियो को बनाने में. डेफिनेटली इट्स वन ऑफ माय मोस्ट परफॉर्मिंग वीडियोस फॉर श्योर. Hmm. And playing poker says good luck भैया. Thanks man, thanks. So we've got quite a few people over here. बहुत सही. मज़ा आएगा आज. देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या होने वाला है. Just gonna check my channel as well. वहाँ पर सब कुछ लाइव स्ट्रीम चल रहा है नहीं चल रहा है. Yep, looks good over here. Thank you for liking if you like the stream. And मज़ा तो आने वाला है. ठीक है, पहले let's open some tables. थोड़ा खेलते हैं. Just gonna check the socials are right. Uh, सब सही लग रहा है. And I'm gonna sneeze. Now this might be the reason WSP vlogs नहीं आ रहे हैं. So guys, Mr. Wade visited. So I've been self-isolating. I've got all the symptoms for COVID. That is why this happened. पिछले 3-4 दिनों से कमरे के अंदर ही बैठा हुआ हूँ. I'm flatmates with निशांत. सो रहा है वो बगल वाले रूम में. पर उसने बोला कोई नहीं मैं जब सोता हूँ तो आराम से नींद में सोता हूँ. तू कितनी भी आवाज़ मचा लेगा कोई फ़र्क होगा ही नहीं. वेगस की ग्राइंड थोड़ी रुक गई है बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो.
and we will hopefully get back to the grind, but the situation in Vegas, अगर तुम ट्विटर पे देख रहे हो, इतनी अच्छी नहीं है because of a lot of people getting COVID. अपने फिल हेलम्यूथ को COVID हो गया था यार, and a lot of like Joe McKean got COVID, Alan Cunningham got COVID, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही है, but there's a benefit to it also, right? हम आज यहाँ पर IOPC खेल सकते हैं. All right, we're gonna start with somewhat of a grind. यहाँ पर देखता हूँ क्या खेल सकते हैं आज. And the fun part about today's stream is again we are doing it without delay. We'll just try hiding our cards, hopefully better than last time. And कहाँ पर है अपना status and timings के साथ शुरू करते हैं. आज SHR भी है ना? SHR के लिए कहीं कोई साड़ी है? होगी कोई 11,000 की साड़ी कहीं पर. चलो सीधे SHR का क्लाइंट ही खोल के देखते हैं. टूर्नामेंट लॉबी एंड है. एक तो 4:30 बजे साड़ी शुरू हुई थी एंड एक ही है, सो आई विल जस्ट रजिस्टर दैट. अच्छा जी. एंड टेबल 2 में उसको ले आते हैं. गप्पे भी मारेंगे. एक सेकेंड, जस्ट लेट मी कॉन्फ़िगर दिस. दैट सीम्स ऑलराइट. इसको यहाँ ले आते हैं. यू कैन ऑलरेडी हेयर द साउंड ना, स्पार्टन की आवाज़. और आजकल मैं स्पार्टन माल में कैसे देख रहा हूँ, निशांत 1K 2K 2K 4K खेलता रहता है, तो उसमें देख रहा हूँ मैं निशांत क्या क्या मज़े कर रहा है. So I think this will work, and let me bring the table out as well. Sahi. And now I can fold my 10-6 suited because the guy shoved 34 bigs. All right. तो टेबल भी ऊपर आ गई है एंड चार्ट कहाँ गई. चार्ट भी यहाँ आ गई है. अर्जुन चड्डा, फाइनली द फिश इज बैक इन द ऑनलाइन स्ट्रीट्स. यस मैन. अर्जुन, तुम्हें घर चलाना है नहीं चलाना है, मतलब जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक कैसे रहेगा. And yeah, that is also true. No one cares if you have COVID and WSOP apparently. काफी लोग तो things are not the greatest, let's say. And I'll tell you about the ticket. You're asking me about ticket मिलेगा. I'll tell you, जो हमने ticket दिया था, I have some really good news for the conversion we got. कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मुझे मेरी टीम ने मज़ेदार बताया था. कहाँ गया कहाँ गया. I got a message. I got a message from हरसिमर सिंह. हरसिमर सिंह took the 1100 का टिकट जिसने निशांत का बैक रोल हमने बोला था ना गेस करो and we'll give tickets. So we gave out 10 tickets. I guess Spartan gave out 10 tickets. I was the mediator. And he ended up finishing fourth for a good 1,25,283. मुझे ये भेजा वो, and I was like, wow man, insane. क्या ROI, क्या sick, क्या टर्न और रिवर आया यहाँ पर. If you guys got to see. And मैं अपने कार्ड छुपा के खेल रहा हूँ, but I'll let you know when you need. मतलब तुम पूछोगे तो बता दूंगा, and there's no delay, so उसमें और आसान हो जाएगा. And यहाँ पर ये फोल्ड करते हैं अपना बेकार सा हाथ. All right. So if you like the stream, थोड़ा लाइक मारो यार स्ट्रीम को. मैं देख रहा था वीडियोस पे भी, मतलब ऐसे कोई लाइक्स आ नहीं रहते हैं, तो मतलब लाइक अच्छा, इससे अच्छा अच्छे लाइक्स तो स्ट्रीम पे आ जाते हैं. तुम लोग क्या वेगस का कंटेंट देखना नहीं चाहते हो या? बट थोड़ा छोटा बना रहा था उन्हें, वो ज़रूर चीज़ थी. आई वॉजन हैविंग मच टाइम. इतना टाइम मिल नहीं रहा था यार. खेलो, उसके बाद टीम के साथ काम भी करो, वो चीज़ ज़रूर हो रही थी. बट अच्छा ही रहा. अच्छा, और क्या दिखा रहे हैं हम. ओके यहाँ से ये फोल्ड करते हैं. ओके
ओह ये ऐसा होता है, जल्दी से देखो छुपा दिया मैंने। सो इसको एक सेकंड चेंज करने के लिए ट्रांजिशन करना पड़ेगा। ओके दैट सीम्स फाइन एज वेल, वरना मेरे पत्ते दिख जाएंगे। हाँ तो न न न न न न न and transition back. So we have a hand which we would like to open. Kanchan in the big blind. ठीक है। एंड चैट कहाँ भाग जाती है, चैट की दिक्कत, चैट देखनी पड़ेगी पहले। Oh, a lot of people from Facebook as well. Prakash Pandit. All the best says Prakash Pandit. Thank you. And pretty good board. इस बोर्ड पे ठीक है, let's go this. 37.25 कंचन स्टार्ट करिए हैंड एंड शी डिसाइड्स टू रेज दिस वन। ओके ये जाएगा। तो क्या आरओआई मारी यार बंदे ने, सिंह साहब ने। 1100 रुपये से 1,25,000। इंसेन इंसेन। Says good luck Jay. Mohit is here, Venkata Ramana is here. Quite a few old names हाँ दिख रहे हैं, काफी पुराने पुराने नाम भी दिख रहे हैं। बढ़िया। अब रीस्ट्रीम 10 बिग ब्लाइंड। अब मेरे कार्ड्स अगर दिख रहे हैं बता देना है। Why did I stop my vlogs after a day? Bro, COVID हो गया। अब क्या कितनी बार Venkata, welcome to the stream, man. I got COVID. That's why the vlog stopped. Wasn't feeling great. I self-isolated. और निशांत ने बहुत मदद करी भाई, पानी वानी सब कुछ बाहर रख देता था। अपना चकना वकना बेचारा वेजिटेरियन घर से अपने लिए लाया था, बीवी ने अपने को दिया था उसे, वो बेचारा वहाँ बाहर रखे जा रहा है। Okay, on this turn, if I want to bet, then I want to bet three-way with this sizing. रॉकी सेज हाय। अच्छा जी, रॉकी से ही मेरी बात हुई थी, रॉकी भी आना चाह रहा था वेगस, शायद मैंने डरा दिया। तो ये चीज़ हुई है शायद। एंड नाम है सरिया बंदे का। दैट्स क्रिएटिव नेम, लेट्स जस्ट से क्रिएटिव। एंड ही डिसाइड्स टू फोल्ड। वी हैड अ पेयर एंड अ फ्लश ड्रॉ, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हिच पेयर एंड अ फ्लश ड्रॉ था वहाँ पर। बताओ तो पहले कैसे लगा, मतलब वो व्लॉग सीरीज, मतलब यूएस में समझ रहे हो ना दिक्कत क्या होती थी, बिकॉज आर डे एंड्स एट लाइक 11 PM एंड वी वांटेड टू पोस्ट 11 AM इन द मॉर्निंग। सो अपने को इतना ज़्यादा प्रोडक्शन टाइम मिलता नहीं था, इसलिए छोटा रखना पड़ता था व्लॉग। एंड मे बी इफ यू डू इट इन लाइक ईस्ट एशिया, यू गेट द टीम गेट्स लाइक एटलीस्ट 12-16 hours टू एडिट इट, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। Yeah, I'm definitely recovering. Like day before yesterday and the day before that weren't the greatest. काफी दिक्कत हो रही थी, but much better right now. चीज़ें अच्छी चल रही हैं अब तो ठीक ही लग रहा है। I still have a running nose, that is the case, but बाकी सब चीज़ें ठीक है। Welcome everyone, welcome जो भी आ रहा है नया यहाँ पर। I'm just gonna pop out this chat instead अपनी, and yeah, the chat is up as well. अभी क्या टाइम हो रहा है, 6:38 हो रहा है। सो इन 22 minutes वी गॉट द 4 करोड़ स्पार्टन मेन मैन। मतलब मजाक है। मैं तुम्हें एक सिनेरियो बताता हूँ। यहाँ पर ना एक डेली डीप स्टैक इवेंट होता है 2 बजे। इट्स अ $225 बाइन। आई हैव नॉट प्लेड इन अ लॉन्ग टाइम, बट इट्स अ टर्बो स्ट्रक्चर, $200 की बाइन, बट लाइक 1,500 लोग, 1,000 लोग खेल लेते हैं, एंड उसका फर्स्ट प्राइज जाके ना मतलब 40-50 हज़ार डॉलर होता है। एंड यहाँ पर मतलब स्पार्टन का सीधे 4 करोड़, $500,000 गारंटी से ज्यादा। तो फर्स्ट प्राइज इन दिस कितना, अगर 4 करोड़ का मैं 20% भी नहीं 15% मानूं तो 60 लाख तो ऐसे ही हो गया। सिक मैन, लाइक द वे इंडियन पोकर हैज गॉन की गारंटीज क्या होती है। मुझे याद है जब स्पार्टन लॉन्च हुआ था, द डे आई मेड माई आईडी,
आई रिमेम्बर माय रूममेट वाज द वन हु won द फर्स्ट टॉर्नी. पहली टॉर्नी में शायद 900 रुपए जीते थे. फर्स्ट एवर टॉर्नी ऑन स्पार्टन. 100 रुपए रिबाय कुछ ऐसा था. सो या. और SHR के टिकट का क्या सीन है? से अर्जुन चढ़ा, तुम्हें क्या चाहिए वैसे अर्जुन? मतलब अरे तुम खेलो यार SHR टिकट विकेट तो. मैं कुंडली घुसूंगा शायद. देखते हैं. पोकर पवन says get well soon brother. Thank you, thank you, thank you. I hopefully am recovering well. एक तो यहाँ पर मतलब ओके, आई हैव अनदर स्टोरी. पहले एक और मस्त स्टोरी बताता हूँ. तो गाड़ी ली थी नहीं, अपनी गड्डी ली थी, लॉस एंजलिस से घुमाते फिराते यहाँ आ रहे थे. एंड हमारा आखिरी व्लॉग वाला जो प्रोसेस हो गया था, बट आई कुडंट शूट द अदर पार्ट, सो वो कभी ऑनलाइन गया ही नहीं. एंड दैट व्लॉग was actually the title was gonna be I had to call 911. यहाँ पर ये फोल्ड है. तो and actually I had to call 911. The first 15 seconds of the clip was me talking to 911 and then the intro and all that stuff. तो वो चीज़ होने वाली थी. क्यों? क्योंकि मैं अपनी कार लेके गया ग्रोसरी स्टोर. अपना आराम से एल सुपर करके यहाँ पर एक मस्त मैक्सिकन ग्रोसरी स्टोर है. एंड सभी कुछ मिलता है वहाँ पर. एंड मैं वापस आता हूँ और मेरी गाड़ी अजीब सी स्टार्ट करते हुए आवाज़ मचा रही है. सो आई एम लाइक व्हाट द हेल हैपेंड. सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हल्के हल्के गाड़ी लेके घर आ गया. एंड वी लुक डाउन एंड अपनी गाड़ी का कैटलिटिक कन्वर्टर यहाँ पर लोगों ने काट के निकाल के ले गए हैं कबाड़ी वाले बेचने के लिए. रियल फैक्ट्स. सो अपेरेंटली ये न्यूज़ में मैंने पहले ही पढ़ा था कि हो रहा है, कैलिफोर्निया में हो रहा है, वेगस में हो रहा है. तो अपनी कैटलिटिक कन्वर्टर क्या होता है? पोल्यूशन, मतलब हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं उनको रोकने के लिए गाड़ी में लगा हुआ होता है. एंड नाउ माई कार इज मेकिंग अ नॉइज कि मॉन्स्टर ट्रक होगा, पूरा बज रहा है गोंग 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 गोंग. एंड मैं अपनी रेंटल कार एजेंसी को कॉल करता हूँ. एंड फिर पिकअप, ये सब 2-3 दिन उसमें बर्बाद हो जाते हैं. एंड इसके पीछे मुझे कोविड का भी लग रहा है, तो मतलब सीन खराब ही चल रहा है. बैड बीट पे बैड बीट चल ही रही है. 9-8 ओपन किया था शिपमेंट ने. ऑल गुड. एंड ये वाला सीन होता है. एंड फाइनली व्हेन द कार रेंटल एजेंसी टेक्स इट, उसके बाद अपेरेंटली दे टेल मी कि मेरे पास तो सिर्फ इंश्योरेंस किसका था, थर्ड पार्टी. अगर किसी को मैं भेड़ दूं तो उसकी कार का पेमेंट करने के लिए, एंड अपनी लाइबिलिटी एंड अपनी कार का रेंटल. एंड देयर वाज नो थेफ्ट क्लॉज. सो दे ट्राइड चार्जिंग माय कार्ड फॉर $4,000. लाइक अलग अलग ही स्कैम चल रहे हैं मतलब. एंड उसकी उन्होंने कोशिश करी. थैंकफुली आई वाज यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, नॉट द ट्रेडिशनल बैंक ATM कार्ड. So I'll probably not pay, probably will pay, भगवान जाने. But they are in their right to try and take it. And मैं बोल रहा, जब मैंने लिया था तो मैंने सीधे पूछा था कि भाई Kanchan over here shoves. This is in most cases like, this is an interesting spot actually. If I'm folding this, then what am I calling? अपने पास एस 10 ही है. अबे यार ये मतलब टाइम आउट हो गया. लेकिन वही सोचने, अर्जुन बताएगा यहाँ पर क्या करना था. अर्जुन जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. अच्छा, पोकर पावन से दैट वाज हिज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. तो वो कैटलिटिक कन्वर्टर ले गया. एंड जो पिकअप ट्रक वाला आया था ना, वो भी हंस रहा था मुझ पे. वेलकम टू अमेरिका मैन, दिस इज हाउ नाउ हाउ इट्स बिकम, और ये सब अनसन बातें कर रहा था वो. तो कॉल क्या क्या करना है वहां पर, मतलब बॉटम ऑफ द रेंज कहाँ पर है? उत्सव तनेजा इज हियर. अर्जुन सेज हाय फिश. अर्जुन तो चैट में. एज जैक सूटेड प्लस. अरे यार इतना टाइट. अच्छा, एज 3-3 पे फोल्ड. तो अपनी सही में बैड बीट शुरू हो चुकी थी.
अगर मैं अपना पूरा सिनेरियो बताऊं, लेट्स पिक्चर कि अगर तुम वेगस कभी जाओगे तो कैसे जाते हैं। पहले मैंने पकड़ी दिल्ली से फ्लाइट, दिस वाज लाइक आई थिंक 9th of May। मैं थोड़ा पहले निकल गया था, अपना लगा, अपनी फ्लाइट्स देखी मैंने जल्दी जल्दी, एंड एक दिन के नोटिस पे बुक किया था मैंने। आईपीसी भी नहीं जा पाया था मैं, उससे पहले मैंने निकलने का प्लान बना लिया था। तो वरना आईपीसी में भी कंटेंट बनाने का मेरा प्लान था, पर वो भी नहीं हो पाया। सो फ्लाइट जब देखी तो पहले तो इतनी महंगी चल रही है ना आजकल फ्लाइट्स, रिसेशन तो अब आ ही गया है, आने ही वाला है, पर फ्लाइट्स इतनी महंगी थी वन वे। सो आई एंड अप लैंडिंग इन वॉशिंगटन डीसी, डलस एयरपोर्ट में अपन लैंड करते हैं। पर उससे पहले हम कहाँ जाते हैं, सऊदी अरेबिया में इनका कोई एयरपोर्ट है, हमाद एयरपोर्ट है कौन से, और उसमें था मेरा एक छोटा सा 13 घंटे का ले ओवर। मतलब इनसे ले ओवर, पूरी रात भर वहां पर एयरपोर्ट में बैठे बैठे। Actually the thumbnail of this video is उसी के लाउंज में बैठी हुई फोटो है, and then my team edited and brought the IOPC logo in and what's happening and all that edit करके। तो वो हुआ। I get to US, and US में कार रेंटल का ऑप्शन मिल रहा था। तो कार रेंटल में क्या मिल रहा था, एक फोर्ड इको स्पोर्ट मिल रही थी, और उसी रेट पे अपने को क्या मिल रही थी, क्या कहते हैं उसे, पिकअप ट्रक। मैंने बोला बहुत चला लिए अपने नए फोर्ड इको स्पोर्ट, आज चलाएंगे पिकअप ट्रक। पिकअप ट्रक रेंट करता हूँ मैं वॉशिंगटन में। मैं कितने 2 दिन रहा। आई गॉट माई कोविड बूस्टर। मैंने कौन सा मॉडर्ना का वैक्सीन लगा रखा था। ओ भाई साहब क्या कूलर हो गया, जैक 4 वर्सेस जैक्स। एंड वहाँ पर मैंने अपना बूस्टर लगाया। देन आई वेंट टू मेक्सिको। मेक्सिको जाके वहाँ पर मैंने अपना घर रेंट कर लिया 1 महीने के लिए। क्या बोल रहे हो भाई? Why can I not start something like storytelling? Storytelling वही तो कर रहे देखो। To be honest, when someone's playing online, they're never playing their best game. मैं पहले ही अपना बेस्ट गेम नहीं खेलता हूँ, मतलब थोड़ी बोरियत आ ही जाती है। अर्जुन अपने को ऑन करता ही रहता है। क्वीन 3-6, pretty nice board, and M8 A7 रोहिला है क्या शायद। आई probably हाँ, क्या ही कॉल कर रहे हो यार, यहाँ पर सब कुछ तो मेरे पास है। एंड ही फोल्ड्स, आई हैड एज डूस ऑफ क्लब्स, सो मतलब सब कुछ अपने पास था। एंड तो अपने वहां पर भी मैंने सोचा था डेली व्लॉग्स बनाएंगे। तो मैंने अपना रिकॉर्डिंग, देखो कंटेंट की सबसे मजेदार बात क्या है, यू डोंट गेट टू सी 99% आई रियली बी ऑनेस्ट, लाइक 99% ऑफ द कंटेंट आई मेक नेवर मेक्स इट आउट। क्योंकि इट्स लाइक पूरा नहीं हुआ, अच्छा नहीं लग रहा, ये सब बहुत नाटक होते हैं। तो मैं वहाँ पर पिकअप ट्रक लेता हूँ, मतलब कंटेंट बड़ा सही मिलेगा। अब वहाँ पहुँचता हूँ और मैं बोलता हूँ दो, मतलब आई रीच अराउंड 3 PM लोकल टाइम। एंड मैं बोलता थोड़ी नैप ले लेते हैं, क्या है, इमिग्रेशन बहुत टाइम लगा था यार डीसी में। एंड अगली नेक्स्ट थिंग आई वेक अप इज लाइक मिडनाइट हो रही है। मैंने बोला कोई नहीं, अपना पिकअप ट्रक लेके अब पहुँचते हैं वहाँ के MGM नेशनल हार्बर करके, व्हाइट हाउस के ही, मतलब व्हाइट हाउस से 10 किलोमीटर दूर एक कैसीनो है, मिलना वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच के खेला, हारा। अगले दिन भी क्या, मतलब सेशन इतने बड़े नहीं थे, एंड लाइक द स्टेक्स वर आल्सो लाइक 5-5, एंड ऐसे ही कुछ था, 5-10 शायद, नहीं 5-10 में नहीं था। दोनों सेशन हारता हूँ। उसके बाद आई वाज लाइक फक इट, वैक्सीन वैक्सीन लगाया, मैं मेक्सिको भाग गया। मेक्सिको में मैंने घर रेंट किया 1 महीने के लिए। एंड आई थॉट ठीक है मेक्सिको में खेलते हैं थोड़ा बहुत ऑनलाइन। एंड उसके बाद अचानक से प्लान बन गया, लाइक माई रियल प्लान वॉज टू कम जस्ट टू प्ले द मेन से एक हफ्ते पहले, लाइक 22nd of this month और समथिंग वेगस में। एंड अचानक से प्लान बन गया, अचानक से ये हो गया कि डेली व्लॉगिंग कर सकते हैं, पूरी टीम ऑर्गेनाइज हो गई। अपनी टीम में भी मतलब थोड़े इश्यूज हुए, काफ़ी दिक्कतें हुई, and ended up negotiating with Spartan that this is something we can do, and they were like yes, hell yes, let's do it. So matlab that was really great, something like that happening also.
एंड वी एंडेड अप, मुझे सबसे मजा वही आया यार, 10 टिकट्स दिए उसमें से एक लौंडे ने 1,25,000 में दिया, मतलब मजाक है। एंड पहुंच गया मैं यहाँ पर। पहले 2 दिन मैं डेली व्लॉग करने, जैसे ऑब्वियसली आई वेंट टू एलए मीटअप गेम खेलने, क्योंकि वहाँ सीधे कैमरा निकाल के खेल सकते हो। एंड वहाँ ठीक ही था शायद। फर्स्ट डे आई ब्लफ्ड इट ऑफ, सो आई ब्रोक इवन। सेकंड डे आई वॉन। थर्ड डे रोड ट्रिप करके यहाँ पहुँच गए। एंड यहाँ आके उसके बाद सीन थोड़ा अजीब ही रहा। तो एंड फाइनली ऑब्वियसली हर दिन के डेली व्लॉग्स तो देखे ही। निशांत कल कितना पीएलओ खेलने गया, सुबह से चले गया था लौंडा, रात के 1-2 बजे आया। एंड या ही swings a lot, like insane swings. The other day actually I also went to play PLO, and ये किसके बाद था, जब when I uh, बबल्ड मॉन्स्टर स्टैक। अच्छा, मतलब पूरी स्टोरी तो खत्म करनी पड़ेगी। जब मैंने व्लॉग में आखिरी व्लॉग दिखाया, दैट इज द मॉन्स्टर स्टैक व्लॉग। अब उसकी कहानी मैं कंप्लीट ऐसे करता हूँ। आई एंड अप there are like 1800 people left, 976 paid, so I'm pretty sure like getting into day 2 also उस समय I was trying to double up at the end of the levels, because I was like अगर बस्ट हो गए तो 1v खेल सकता हूँ। I did not double 60k के साथ day 2 में गया। एंड डे टू की स्टार्ट अच्छी थी, आई डबल्ड अप, देन मेड अ हीरो कॉल व्हेन आई वाज टेलिंग माय सेल्फ इन, डोंट हीरो कॉल अगेंस्ट दीस पीपल, डोंट हीरो कॉल अगेंस्ट दीस पीपल। एंड finally with like 1100 people remaining, I ran ace king into aces, um, lost that, and then I still had like 13 bigs and button opened, and I 3-bet shoved king queen, and he snap called king 9 suited and made a flush. So that is how we busted the monster stack. अपने इंडियंस ने काफ़ी अच्छा किया मॉन्स्टर स्टैक में। अयर कैश, सुशी कैश्ड, इंटर एक्चुअली एंडेड अप फिनिशिंग लाइक 18th मैन, दैट इज सिक। निशांत कैश्ड, एंड निशांत का तो गोइंग इनटू डे 3 आई थिंक ही वाज 9th इन चिप्स एंड इंटर वाज 8th इन चिप्स, तो मतलब 100 बिग ब्लाइंड से ज़्यादा थी निशांत की। बट ऑन डे 3 ही मैसेज मी लाइक इन 4 आवर्स कि बस्ट हो गया। ही हैड प्रीटी बैड रन ऑफ कार्ड्स, थोड़े कूलर्स भी हो गए उसके, दैट इज व्हाई ही बस्टेड। और कोई डिटेल्स वेगस की पूछनी है तो, खास खबर क्या चल रही है आजकल? मतलब इंटर इज मेकिंग ह्यूज रन्स मैन। एक आई थिंक 2500 में ही bubbled the final table, finished like 10th. Monster Stack, which is like a huge field, कितने 6,000 लोग खेले, पता नहीं कितने हजार लोग खेले, and he finished what like 18th, तो वो भी insane है। कोई WSOP के क्वेश्चंस है तो पूछो, उसके बाद 8 मिनट में तो हम स्पार्टन का 4 करोड़ गारंटी खेलने ही वाले हैं। Ace King versus 9-10। All right, this seems fine. All right, क्या खेल सकते हैं दूसरी चीज? तब तक जनता भी बता देगी क्या खेलना चाहिए क्या नहीं खेलना चाहिए। ओके, सो टेबल 1 को अब छुपा सकते हैं। ओके, मुझे थोड़ा सा बताओ यार, शेड्यूल में क्या क्या अच्छा है? अर्जुन बता रहे हो तुम तो सीधे चाह रहे हो कि 1 लाख की तुम्हें टिकट दे दिया जाए। इतने मतलब अमीर लोग कैसे दे सकते हैं टिकट? 10 people आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड 880 नहीं। I want to play less amount of tables, chat with the stream, have fun, and yeah, that's the scene over here. No delay. Cards कोशिश करेंगे छुपाने की. We are not really great at doing it, but we'll try. We'll definitely try. Oh, a lot of people from Facebook are also here. ये नहीं भाई, गिव अवे नहीं चल रहा है, अपनी आईडीज बताने का कोई फायदा नहीं है। सब मैं खा गया, सब मैं खा गया। Mr. COVID is here, Yuvraj. That is what happened. Yep, the vlogs. Um, thank you for watching all my vlogs. Blog तो नहीं लिख रहा हूँ यार आजकल, vlogs लिख रहा हूँ। Oh shit. Gonna sneeze, gonna sneeze. Sorry guys. Oh, don't even have tissues, हाँ? सीधे towel का इस्तेमाल किया जा रहा है। All right.
सब लोगों की डिमांड देखो, सीधे टिकट वालों की। टिकट वाले यहाँ पर नहीं है यार। वी आर हेयर फॉर द स्टोरीज, राइट? वी आर हेयर फॉर द स्टोरीज। ओह, थैंक्स फॉर लाइकिंग मैन, होली शिट, 25 लोग देख रहे हैं, 19 ने लाइक मार दिया है। ये तो अलग ही सीन चल रहा है, मतलब क्या बात है। सब आज मूड से आए हैं। एंड कहाँ कुछ तो बीप हुआ है। ओह शिट, आई हैव गॉट ओनली 14 बिग ब्लाइंड्स नाउ। हाँ, सैटेलाइट है, थोड़ा टर्बो स्ट्रक्चर तो होगा ही। हाँ, जगरनॉट इज देयर, अनिकेत वाघ मारे, मतलब बंदा रुकता ही नहीं है जीतने से। ही वॉन लाइक 30 lakhs लास्ट संडे, लास्ट टू लास्ट संडे आई से। Shit. Sicko he is, man. Like from being mod ultimate to being poker pro ultimate, huh? Karan Malhotra is there. Yeah, tell me what stories do you want? What gossip from Vegas do you want? I've got a lot of gossip from a lot of people around. सारी चीजें तो नहीं बता सकता। रियल कैश जोन सेज हाय, क्या नाम है? पूछो। एम आई गोना बी प्लेइंग एसएचआर? सैटेलाइट तो खेल रहे हैं, घुसे तो खेल सकते हैं। इट्स अ प्रीटी टफ फील्ड मैन, रियली ऑनेस्टली। I like playing high rollers. Like I remember one of the high rollers I was playing in Goa. Kanchan was on my table and Neil was on my table. It was a very reggy table. तो उसमें अपने ने decide कर लिया था कि मतलब हाई वेरिएंस खेलना है, पूरी रेगी टेबल है, या तो आर या घर जाएंगे जल्दी, क्यों मेहनत करनी है, क्यों ग्राइंड करनी है। जसमीत सिंह रिहान says hi, how's WSOP going? Sadly WSOP has to take a break क्योंकि मिस्टर विड इज इन टाउन, अपने को कोविड हो गया ये चीज। एंड या लुक्स लाइक द डिले इज आल्सो नॉट दैट मच। थोड़ा यूट्यूब में स्ट्रीम जब करते हो तो 10 सेकंड का डिले तो आता ही है, 10 सेकंड तो हम झेल लेंगे यार। आशीष आहूजा जिंदा है अभी, यू स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी द अदर डे। अरे सही में यार, द अदर डे आई वाज कफिंग एंड लाइक स्नीजिंग ऑल द वे। निशान बेचारा बोल रहा है जिंदा है ना, कुछ भी चाहिए बता दियो, मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलूंगा, कोई नहीं, ये वो सब कुछ निशान करने को तैयार। तो अपडेटेड द टाइटल ऑफ ऑल पेजेस। अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी शायद। So we are multi-streaming, re-streaming into Spartan's channel also. So if you're watching, welcome. If you don't know me, my name is Jaideep. I make content now. Previously, I would say I'm a poker pro. Now I say I make content, you know. Yeah, I do still play poker for a living. And यहाँ देखो क्या फ्लॉप्स आ रहे हैं। किंग एट सीधे लगा लिया टर्न पे। एंड अभी मैं वेगस में हूँ। आई केम हियर टू प्ले द WSOP एंड मज़े करने के लिए काफ़ी लोगों से मिला मैं यहाँ पर। Oh, the most funniest of people I met was who made like who made like fun in a fun way. Nipun Java. So I met him and he was like, "Man, you should get sponsored by Airbnb." कितना vlog में तो पूरा अपना Airbnb ही दिखा रहा है। मैंने बोला content नहीं था अपने पास, बच्चे की जान लोगे क्या? He's like all good पर मतलब टांग तो खींच रहे थे मतलब। पहले यार ये तो उड़ाने पे लगे हैं, फिर मैं मुश्किल से कंटेंट बना रहा हूँ। एंड वी विल डिफेंड हियर एंड देखते हैं। 887 घर बस गया है। एंड ही बेट्स 25% which is good sizing by him considering stacks behind. शिपमेंट पास यहाँ पर क्या है? अपने पास तो कुछ नहीं है, अपने पास क्विंटन था तो वो जाएगा। लिख दूं क्या मैं यहाँ पर कहीं पर दिस इज कोविड स्ट्रीम? देखो मौका मिला है अपने को 4 करोड़ का एक बड़ा पीस जीतने के लिए, तो इसको लेट्स होप दिस इज। तो एक और चीज हो गई, जब गाड़ी अपनी कन्फेस्टिकेट कर दी उन्होंने, मिशिबिशी ले गई अपने आप,
इट्स गुड दैट हैपेंड राइट, वरना कोविड में मैं एलए कहाँ ले जाता गाड़ी वापस देने, बिकॉज आई वाज सपोज टू लीव यूएस ऑन द 14th एंड कम बैक ऑन 22nd। ये कोविड होने की वजह से, गाड़ी जाने की वजह से अपना मतलब ट्रिप ही पूरा आइटिनरी ही चेंज हो गया। तो मैं अभी भी यहाँ पर हूँ एंड इट्स टाइम गाइस। तो सब लोग खेल रहे हैं क्या आज का 1D 11 के 4 करोड़? गौतम सरिया पता नहीं कौन है, दिस इज कंचन एंड काना राजा एंड देखो गले में अभी भी खराश तो है ही। ओके लेट मी ओपन द अदर टेबल आल्सो, लेट्स गो। आज सच सच बता देना है, कुछ दिख रहा है टेबल पे जल्दी से। गोपाल कुमार इज हियर, हेलो हेलो एंड कंचन इज ओपन and we will still be calling. Aniket has shoved. We overcall. We should be ahead of this range. We have ace queen. He has a king, so he wins. And एक सेकेंड है, यहाँ से तो बस्ट हो गए। कितनी बिग ब्लाइंड्स मिल रही है, एक सेकेंड में वो देख लेता हूँ, उसके बाद अगर ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। 4000 चिप्स मिलेंगी एंड ब्लाइंड्स आर 125 250। तो 12 एंड 16 बिग ब्लाइंड्स मिलेंगी। अभी एक सैटेलाइट और चल रही है, आई विल रजिस्टर दैट इटसेल्फ एंड तब तक फिर सीधे 11 के रेज कर रहा हूँ अभी तो मैं। अब 11 के रेज कर दिया है तो उसको दिखाना भी तो पड़ेगा। तो 11 के में ओके, आई माइट हैव मेड अ मिस्टेक। ओह या, टेबल 1 तो अपनी स्पार्टन की लॉबी दिखा रहे थे। तो जल्दी से क्वेश्चंस पूछो भाई लोगों, मतलब कहाँ की गॉसिप क्या चाहिए सब बताएंगे आज तो। ओके, आई एम मेसिंग डेफिनेटली समथिंग अप एंड आई हैव टू क्विकली हाइड थिंग्स राइट। तो पहले तो ये टेबल बंद करनी पड़ेगी। ऑल राइट, सो ट्रांजिशन कैसे करेंगे, टेबल 2। ओके लेट मी जस्ट डू द ट्रांजिशन, तब तक मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी सैडली गाइस। एंड अपना नूब स्ट्रीमर तो है ही, इसलिए कॉन्फ़िगर कैसे करनी होती हैं चीज़ें वो एक बार देखनी पड़ेंगी। ओह नाइस, अंडरस्टूड व्हाट इज़ हैपनिंग। तो ये हो गया एंड टेबल 1। So in case you are wondering what tourney I am playing, it's the 11K 4 करोड़ गारंटी। उसकी लॉबी में मैं बगल में खोल के दिखा दूंगा and I do have to hide my cards better and I think I was able to do that। हो गया है शायद। बहुत चिप से स्टार्ट कर रहे हैं यार, 250 बिग ब्लाइंड्स, दैट्स इनसेन। सो यू कैन सी द लॉबी आल्सो, कौन सी टोर्नी अभी रजिस्टर की है देखते हैं। 76 पीपल हैव जॉइंड इन, आई एम श्योर 1A B C से भी हज़ार लोग तो आ ही गए होंगे एंड चैट्स लुकिंग गुड। वीडियो में डैनियल की फोटो डाली मेरी टीम में। दैट वाज द डे वेयर आई वाज नॉट फीलिंग द ग्रेटेस्ट, so we obviously when we created our resources we had like the nuclear bomb which is like डैनियल के साथ फोटो है, बिना टाइटल वाइटल के डाले, बिना एडिट करे फोटो डाल सकते हैं जल्दी से जिसमें क्लिक बेट होगा। एंड आई वाज सो टायर्ड, आई वाज लाइक गाइस लेट्स जस्ट डू दैट, आई डोंट वांट टू पुट द टीम टू द वर्क एज वेल, मेरी भी हालत खराब हो रही है। सो मॉन्स्टर ब्लॉग पे हमने आखिरी में सीधे डैनियल की फोटो चेप दी एंड या दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग ब्लॉग फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड एस 9 डूस 250 बिग ब्लाइंड डीप। चलो ये चलते हैं, ही स्नैप कॉल्स बिना डरे एंड टर्न इज द फ्लश
I don't have to always check it this deep. So I'm gonna bet again. His name is Gabbar Singh. Oh man, he's won 2 titles. Weird ace jack, no hearts. But हमेशा auto check तो नहीं कर सकते हैं यहाँ पर. फ्लश कंप्लीट हो गया. हाँ भैया, तुम्हारे पास ही है हमेशा. All guild up. This is an MP open, right? चलो थोड़ा मजे से खेलते हैं. I'm gonna 3-bet this. I might be playing the. Okay, अट्ठियाँ थी मेरे पास. ऑल राइट. अचानक से ही पूरी दुनिया को मेरी याद आने लगी. पापा भी मैसेज कर रहे हैं. थोड़े लोग सैलरी मांग रहे हैं. Awesome. And yeah, you can see my socials. अगर अब WSOP vlogs will not be coming back. पर अगर खेलूंगा so I'll definitely be posting a little bit on Instagram. So you can see my Instagram handle Nomadas. You can definitely start following me there. Spartan Poker official started following, man. So you better might as well. Ayush Arya says fishes are also prone to COVID, man. Yeah. ओके. इस बंदे को इसी को 3-bet किया था ना, या इसको किया था, इसी को किया था. वी गोना गो अगेन 3-betting ऑल द वे. 250 बिग ब्लाइंड डीप इन पोजीशन है. एंड ही कॉल्स. फ्लॉप इज एस डूस 4 2 क्लब्स. यार अब 250 बिग ब्लाइंड डीप यहाँ पर. I don't like going small ever इतनी deep. And मेरे पास जैक 9 of clubs था, so we flopped a flush draw. मतलब 250 बिग ब्लाइंड डीप क्या है, डरा के खेलना. यही सेम चीज ना मॉन्स्टर स्टैक के इवेंट में हुई थी. मतलब मेरी टेबल कुछ 3-bet नहीं कर रही है, कहीं कुछ नहीं कर रही है. पहले 2 घंटे में मतलब मैं ही टेबल का मोस्ट अग्रेसिव रह रहा हूँ. इन 6 hours आई गॉट लाइक, जो स्टार्टिंग स्टैक था ना 50,000, उसमें सबको एक एक ग्रीन चिप दी थी. एंड एक बंदा हमारी टेबल से बस्ट हो गया था. जो 10 चिप्स थी ग्रीन, उसमें से 7 मेरे पास आ गई थी. लाइक आई वाज रनिंग सुपर गुड एंड प्लेइंग वेल एज वेल. ये देखो 3-3 आईओपीसी जीत रखे हैं, फिर 3-bet कर रहे हो मुझे. ठीक है भाई, खेलेंगे पोस्ट फ्लॉप तुम्हारे साथ. एंड क्वीन हाई बोर्ड. अच्छा देखते हैं कैसे खेलना चाहते हैं. मस्ट बी अ गुड प्लेयर. कोई बताओ भाई ये कौन है. आई एम. अच्छा मिस्टर मी 6. अच्छा ये गए हैं 25%. कूल, लेट्स कॉल. Turn is a 9. I think the board gets better for me. Raghav Gar, I was hoping I was make. Oh, to be honest, I was not winning. मतलब काफी हार रहा था मैं. Maybe COVID's like great, right? खेलना कम. And he goes for the pot. No, pot भी नहीं गया, but he goes big. I really don't think he should be doing. Okay, we call. I think I don't have many raises here, or do I? Oh, whatever. We call. Rivers another 9. करण मल्होत्रा से सारांश है 3 bets a lot. So इसकी साइजिंग तो एक ही साइजिंग होने वाली है यहाँ. And he decides to check. So the hand he has in most cases is like, yeah. Okay, we're going all in. Let's see what he wants to do. 96 big blinds में 124. सोच तो रहा है लौंडा. He folds. We had a queen.
but yeah, we were trying to target something like 10 with a flush draw, which might hero call sometimes. A worse queen like queen jack. We had king queen, so that was straight up value. And if he was shoving the river also, in most cases I was calling. The river wasn't the best card. Let's say मेरे queen 10 counter हो जाते हैं. I might play queen 10 the same way. Thank you, Raghav. Thank you, thank you. And सारांश हैन, ये कौन सा सरनेम है यार? सारांश हैन, जैन लिखना चाह रहे थे क्या? ऐसे ही लग रहा है कुछ हो गया है. ओके, और क्या पूछना है भाई? WSOP में और क्या मजेदार चीजें देखी मैंने? हम लोग इतना बाहर नहीं गए. आई वाज टॉकिंग टू मुस्कान. मुस्कान हेयर आल्सो. मुस्कान एंड हर हस्बैंड. ओह, हैव यू सीन द टिकटॉक? ये है मुस्कान का आशिक. लाइक आई सो वांटेड टू. आई हैव नेवर मेड अ टिकटॉक और अ रील. I think so. I've not made one. Maybe I've made one. वो जो Spartan वाला post किया था. But I was like, Muskan, and her husband does not like to be on social media. Like they're the complete opposite in social media scenario. I was like, एक story बनाने देना बस एक. ये है मुस्कान का आशिक. We were talking the other day. She was, I think, she got the flu or COVID also, but she tested negative, so that's great. अपना, to be honest, I did not test, but like I had straight up A to Z symptoms. I was like, नहीं नहीं, घर से बाहर निकल के होम किट मुझे मिली नहीं. Quite a few people got it. CVS में निशान गया मेरे लिए ढूंढने. He couldn't find it. But अपने को मतलब straight up symptoms थे यार. मतलब कोई सोचने की बात भी नहीं थी अपने को क्या हो रखा है. हाँ, पहले कुछ दिन तो ऐसे खास रहा था. मैंने बोला हाँ, हो ही गया है. एंड that's how I lost my virginity for COVID. This was the first time it's happened to me. एंड पिछले साल भी स्केयर हुआ था. आई थिंक जब मैं मेक्सिको से उस टाइम वापस आ रहा था 2021 में, अराउंड में मार्च आ रहा था क्या? हाँ, मार्च आ रहा था. एंड उस समय थर्ड फेज चल रहा था, थर्ड वेव चल रहा था इंडिया में. सो आई गॉट स्टक इन दुबई. दुबई में 2-3 महीने काटे. उसके बाद यूएस आके फिर मॉडर्ना का वैक्सीन लेके ही आए. सो दैट टाइम ऑल्सो देयर वाज अ बिट स्केयर कि जब मैं वैक्सीन लगाने की सोच रहा था तो आई गॉट लिटिल इल. एंड आई वाज लाइक, क्या ये कोविड ही हो गया है वैक्सीन लगाने से पहले? बट दैट टाइम आई रियली डिड नॉट गेट द विड. बट वर्जिन नो मोर, यू कैन से. ये किंग 4-4 पे आप स्नैप चेक बैक कैसे कर देते हो? चलो, कोविड की वजह से WSC में कोई एंट्री कम नहीं होने वाली है. नो वन केयर्स ब्रो. लिटरली इट्स लाइक, लोग, पीपल आर स्टिल डिबेटिंग ऑन द टेबल कोविड वाज फेक. ब्रो तुम न्यूज़ नहीं देखते हो क्या? फेक न्यूज़ की मतलब फैक्ट्री है यहाँ पर. अलग ही मतलब. दिस इज लाइक, sorry about that, but that's bound to happen. And yeah, there were people debating on my monster stack table ki COVID, it's fake man, it's fake. I was like, पूरी दुनिया ठप हो गई 2 सालों के लिए और तुम्हें अभी फेक चल रहा है. दिस इज रफ. कल इससे अच्छा महसूस कर रहा था. आई वाजंट स्नीजिंग दिस मच. आज स्ट्रीम करनी है तो स्नीज करना शुरू हो गए. मतलब को यहाँ पर कैलिफोर्निया इवन पेड पीपल. मुझे $50 मिले थे क्योंकि जब मैं कैलिफोर्निया में वैक्सीन लगाया था, दे पेड मी $50 टू गेट द वैक्सीन. लेकिन अगर मैं कैलिफोर्निया में बूस्टर भी लगाता था वो भी $50 दे देते. दे गिव मी अ वर्चुअल क्रेडिट कार्ड. बट मैं डीसी में लगाया. डीसी वाले कमीने नहीं दिए. हर स्टेट की अलग पॉलिसी है. होपफुली आई डोंट फील वर्स, वरना स्ट्रीम थोड़ी रोकनी पड़ जाएगी.
विक्स की गोली से अगर कोविड चले जाता ना तो इंडिया सबसे आगे चलता। राम भवन यादव जी। कहाँ से हो? नहीं नहीं नहीं, आई हैव मेक द कमेंट। ऑल इन गुड फन मैन, ऑल इन गुड फन। कुछ लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं? आई डू हैव सम मेडिसिन अलोंग विद मी, वो ले रहा हूँ। And the numbers in WSOP, मतलब field sizes are huge. Monster Stack was probably the biggest Monster Stack ever. अगर तुमने फाइनल टेबल नहीं देखी है, कभी ऐसे करना है क्या? कभी डिस्कॉर्ड में प्राइवेट स्ट्रीम कर सकते हैं। मैं देखते रहता हूँ, सो आई बॉट द ईयरली सब्सक्रिप्शन। मैंने बोला वर्ल्ड सीरीज आ रही है देखने में, एंड पोकर गो की भी अपनी वो जो सीरीज चलती रहती है, वो काफ़ी मज़ेदार टूर्नामेंट्स होते हैं उनके। Hey, we are not promoting piracy. We are promoting community building. Scam. Hashtag scam. Uh, he comes in with a call from the small blind. Okay. Board comes monotone. Jack 6-8. Hmm. Heads up poker में आजकल मैं थोड़ा heads up poker के बारे में भी देख रहा था। मुझे लग रहा है ब्रेसलेट में heads up जाऊंगा, इसलिए थोड़ा heads up poker भी देख रहा था मैं। Okay, I'm gonna bet small into two people. I should at least small blind should be able to play face up क्योंकि उसके पीछे एक बंदा है. He can't go really out of line. Although this is the aggressive guy, right? You said. So he likes to mess things up. यही चीज़ है, इसके लिए दिक्कत ये है, whenever he wants to like go really out of line, there's the big blind who'll do this, and now he's actually like in a tough spot. यहाँ जब cold call आए, I folded a decent hand, but I'll not say what I have right now. क्योंकि especially when I get check raised and cold called, I don't think this is the hand I want to continue. Arindam Nayak says in for the Discord thing. And he goes to third. Interesting. Stack to pot ratio river पे one होने वाला है. And river's the queen. So 9-10 is one hand which gets there. Otherwise flushes which were already there are the best hands. And now he decides to give up. I guess he only had a jack, the way he's played the hand. And all grilled up is, I'm guessing, gonna munch on him and eat him up. And that's what exactly the line is. क्योंकि like it seems very obvious कहाँ पर क्या हो गया, and his hand also top pair king I flush draw, but like that मेरे पास 10-7 था, turn पे double गट्टी भी बन गई थी मेरी, but I'm pretty much dead after the check raise and cold call. And it's him being ambitious over there, like he's hoping his opponent has the ace of diamonds and not re-raise somewhere. And too optimistic, or too rich probably. It's so many titles he has on his name, probably too rich. डिस्कॉर्ड स्ट्रीम आशीष आहूजा करना चाह रहे हैं क्या? हम कर सकते हैं, ठीक है। एंड आजकल कौन कौन सी फाइनल टेबल्स ही देख रहा हूँ मैं। सो आई वॉच द 50K PLO yesterday. बेन लैम फिनिश थर्ड, कोई ब्रिटिशर जीता। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द गाय विनिंग द मॉन्स्टर स्टैक? टेबल पे चढ़ गया ब्रो, टेबल पे चढ़ गया। मतलब दैट वाज एन अमेजिंग शॉट बाय द फोटोग्राफर एज वेल, बट अलग ही सीन। Obviously, a guy spinning 1,500 into like $1 million. And that guy seemed like a grinder, US grinder. And जो बंदा थर्ड फिनिश भी हुआ, he was a super douche. मैं तो सीधे बोलूँगा, like on एक हैंड चल रहा था भाई टेबल पे, मैं बताता हूँ। He opens, uh, gets 3 bet, recreational 4 bets. Hand is not finished. When he's folding, he's telling the 3 better, I was gonna 3 bet you, 4 bet you. Matlab, when you say that, you're obviously saying you had a hand like ace 5 suited, ace 4 suited. He actually had ace 4 suited. So you're giving too much of info out. Matlab, the 3 better was light also. उसके पास ace 9 suited था, and 4 better के पास kings थे. But like, what are you doing, man? And दूसरों को टेबल पे भी थोड़ा बहुत टॉन्ट कर रहा था। जो सेकंड फिनिश हुआ, his name's Mateusz. I have a Polish friend also, he's from Poland. His name's also Mateusz, but he's not the same guy. इनका कोर ग्रुप सेम है, तो उसकी रेल पे काफ़ी लोग थे जिनको मैं जानता था, जिनके साथ मैं खेलता रहता हूँ। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग हैंड हो रहा है।
तो वो चीज थी, बट लाइक आई हेटेड द गाय who came finished. Like his name was Anderson or something. Like seemed like the typical live US pro douche guy. काफी गंदा मतलब. And एंडरसन था शायद उसका नाम, और जो पहला फर्स्ट जीता ही रन गोल्ड. एक हैंड उसके फाइव्स का था ऑन एन एस हाई बोर्ड, ही वाज इनिशियल अग्रेसर. इस एंडरसन ने एस क्वीन फ्लैट करके आया था, एस किंग हाई पे, पे बेट बेट जाता है, टर्न पे गटी लगती है, रिवर डूस से स्ट्रेट बना देता है पंजियों से. सो व्हेन इट्स योर डे, इट्स योर डे. Sanat Mehrotra says Negrano is not enjoy. I've been watching man Negrano के vlogs, लंबे लंबे vlog. पूरे उसके vlogs में देखो उनकी टीम पूरे पार्ट भी बता देते हैं. ये अमांडा का पार्ट है, ये आईवी के साथ है, ये इसके साथ है. And Queens versus Ace 5 on the river, he converted his 5 into a bluff. हाँ ठीक है. Oh, nerd guy is here, Devang Yadav. I remember I played a final two tables of a SHR with him in Goa recently. He didn't last long. He got into a huge cooler. And उसके बाद I remember वो जो हमने daily vlog बनाया था ना, a day grind on all Indian sites. तो उसमें I was obviously doing that video was more for the lols. It was like कि हर एक hand बता रहा हूँ मैं कैसे चल रहा है. And obviously against him that huge hand happened कि जब मेरे पास kings थे and उसके पास aces थे and he 5 bets pre and I just call and I obviously flop quads with kings. इस hand की बात करते हैं. 9-4-3, no one has anything, I have like everything. So ये तो तुम call करोगे ही. And उसके बाद फिर क्या करोगे? This is the 4. So this is not the okay. It's fine if he wants to do this. This board doesn't have many draws to be really honest. So yeah, he can definitely have a 4. And he has to best 13. अब मेरे पास तिगी है. Do I want to defend this? Do I want to over defend this? My kicker is a 5. So it's 3-5 suited. And do I really want to over defend this? Especially with the deuce coming, which completes 5-6, ace 5. So I don't think I want to, especially on a rainbow 9-4-3-4. Thank you, Sanat. Thanks for the good words. Thoda, I think in that video, one of the hands which did not make in the video was जो मेरा daily Sunday grind वाला session था, was me against Sanat itself, and I think that hand was played on Spartan itself, and I flopped quads, and Sanat decided to check raise me in a 3-way pot. I was like, please, Sanat, just go all bet, check raise, bet, shove. But Sanat on the river, I think, gave up. And we just had quads. So we c-bet quads, got check raised, cold called, and like was a good hand, was but not a really great hand to showcase. तो ऐसा था वो वाला hand. 2 मिनट में ब्रेक आ रहा है गाइस. इफ यू वांट टू जंप इन टू द 1D, देयर इज स्टिल लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ चिप्स. अभी लॉर्ड हेंड्रिक्स अभी अभी आया है, 150 बिग ब्लाइंड है उसके पास. एंड यहाँ पर मुझे पता है आज और भी. ओ वेट वेट वेट, सैटेलाइट कहाँ गई? सैटेलाइट, SHR की सैटेलाइट मैं कैसे भूल गया? SHR की सैटेलाइट, SHR की सैटेलाइट जल्दी से खोलता हूँ मैं. ब्रेक आ ही रहा है तो SHR की सैटेलाइट. चलो 20 मिनट हुए थे SHR की सैटेलाइट को शुरू हुए हुए. I'm going to register that as well. चलो SHR की सैटेलाइट के लिए SHR की सैटेलाइट इधर लाते हैं. अच्छा अभी भी SHR की सैटेलाइट में 50 बिग ब्लाइंड मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है. एंड ओके, लेकिन मैं हेड्स अप क्यों खेल रहा हूँ इस बंदे के साथ? अच्छा अभी टेबल्स ज्वाइन होंगी. तो टेबल 1 2 टेबल का लेआउट ले आते हैं. ओह नो,
ओह नो, कार्ड्स दिख रहे हैं। कार्ड्स कैसे छुपाते हैं, कार्ड्स कैसे छुपाते हैं? ऐसे छुपाते हैं एग्जैक्टली देखो। अब नहीं दिख रहे हैं ना, होपफुली नहीं दिख रहे हैं। यस, सी आई फाइनली फिगर्ड आउट हाउ दिस स्टफ वर्क्स। मतलब इतने साल से स्ट्रीम कर रहे हैं, लेकिन अब फाइनली सीख ही लिया है। नो डिले स्ट्रीम्स, कार्ड छुपा सकते हो। तो just gonna 5 सेकंड में ब्रेक है। देखो ब्रेक तो सब जाना चाहते हैं ना, तो इसलिए मैं 3 बेट करना चाहता हूँ क्या। लॉर्ड हेंड्रिक्स के अगेंस्ट ये हैंड। ओके, लेट्स गो एंड रेस। ही स्नैप कॉल्स monotone board. He calls again. I'm gonna 3-bet our new best friend. I'm gonna check this one. He doesn't seem like a folder, right? And we have Jack 5. He has the king, so he wins that one. I'm surprised he did not bet turn or river, Lord Hendricks in the satellite. Okay, this board. What am I supposed to do on this board? याद करना पड़ेगा। अभी कितने हैं? 125। 125 भी ब्लाइंड डीप है, फिर क्या दिक्कत है? Okay, let's go this. साइजिंग मेरी गलत लिखी भी है क्या? मैं ऑटो वहां पर इसलिए बैठ किया क्योंकि मुझे लगा आई एस जैक विद द एस ऑफ क्लब्स। सो अपने नए दोस्त बना रहे हैं टेबल पे, स्पेशली समवन हु वन 3 टाइटल्स एंड एन एफटीएस व्हेन आई हैव 0। देखो थोड़ा ना अपना ऑनलाइन पोकर से थोड़ा ब्रेक भी लिया है, एंड प्रोबेबली नॉट द मोस्ट विनिंग प्लेयर एनीमोर। पर एक चीज बताता हूँ सीधे सीधे, स्पार्टन पे फर्स्ट बैंक रोल चैलेंज मैं जीता था। एक पॉइंट पे मेरे पास साइट में काफी ज्यादा पैसा होता था किसी जमाने में, लेकिन कैश खेलता था मैं उस टाइम पे ज्यादा। रोहित कुमार से हाय, हे वैन व्हाट्सअप। गुरपाल नंदा, थैंक यू बड़ी, थैंक यू। कैसे चल रहा है, हाउस द ग्राइंड गोइंग? कोई बताओ यार, लीडर बोर्ड में तुम लोग अर्जुन को ही जीतने दे रहे हो क्या? ऐसे लग रहा है। मतलब अर्जुन, हाउ इज इट गोइंग फॉर यू? आशीष आशीष तो पीछे नहीं छोड़ेगा। मतलब मैं एक दिन देखा था आशीष ऑल्सो वॉन फीचर इवेंट, एंड सब लौंडे जीत रहे। अर्जुन भी जीता है एक फीचर इवेंट। मुझे अपडेट मिलती है भाई, सीधे सीधे नाम आता है, फोटो आती है, इसकी फोटो दिखानी है, ये अपना हीरो है। तो देख रहा हूँ मैं तुम लोग सब, मतलब मेरा नाम होने का फायदा उठा रहे, इसीलिए अभी आया हूँ मैं। सीधे मेन पैकेज ले जाऊंगा मैं, सीधे 60 लाख रुपए ले जाऊंगा। और उसके बाद हम 100 के बाइन नहीं है इस बार ना, मैं खेले था। ओ पहले दिन हम पहुंचे थे निशांतर में। वी एंटर एंड द 50 के हाई रोलर इज गोइंग ऑन। तो निशांत बोलता है यार सिक्को बैठे हैं, बस एक सिक्को यहीं खड़ा हुआ है अपने लिए। बोला हाँ ब्रो, मतलब तू तू तो खेल ही लेता। निशांत बोला हाँ रामजादे मजे ले ले तू मुझे। बट हम वहाँ सामने देख रहे हैं लाइक डॉनी, वो डॉनी पीटर्स बोल रहा, नहीं दूसरा, नहीं मिकिता इज देयर वहाँ पर। सारे हाई रोलर्स, और मतलब सिकोस जितने लिटरली हैं। एक वो जो बंदा, आई एम फॉरगेटिंग, ही इज इटालियन, ही फिनिश सेकंड इन द मेन इवेंट। तो मतलब काफ़ी सिक फाइनल टेबल थी। उसके बाद ऑब्वियसली, हाउ डू यू फील अबाउट लाइक दीज पीपल हु यूज्ड आरटीए, रियल टाइम असिस्टेंट, जेक शिनलर और ये अलीम नामोविच या क्या नाम है उसका, एंड ये लोग आ रहे हैं जीत रहे हैं। मतलब आई डोंट लाइक इट कि चीटर्स आर बीइंग अलाउड टू प्ले। मतलब मेरा बस चले तो परमा बैन, परमा बैन। गगन जुनेजा इन द हाउस से जिंदा हो। देखो अगर तुम्हारे कोई दोस्त होना, इतना प्यारा दोस्त होना चाहिए जितना गगन है। बेचारा मैसेज करे जाता है मुझे, पूछता रहता है ब्रो कैसे हो, ठीक हो, क्या करना है, दवाई के नाम नूम बेचता रहता है। क्यूट ब्रो जीजे। एवरीवन कंग्रेचुलेट हिम अगेन, द गाय इज मैरिड, लविंग लाइफ। इंस्टा पे रीशेयर करते रहते हैं वीडियोस फोटोस। द गाय हैज अ ब्लिसफुल लाइफ, पूरी मैरिड लाइफ मजे में जी रहे। आई थिंक वी सेलिब्रेटेड हिज 31st और 32nd बर्थडे इन वियतनाम, एंड उस टाइम लॉन्डे ने लाइव फाइनल टेबल मारी थी।
अल्टीमेट लाइफ ही मतलब रन गुड की तो अलग ही जिंदगी है इसकी। आशुतोष कुमार, हे मैन, थैंक यू। 2 टेबल्स खेलेंगे हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक 11 के और एक सैटेलाइट खेलेंगे। आई थिंक देयर इज अ प्राइम आल्सो टुडे, राइट? थर्सडे प्राइम या कुछ वैसा इवेंट है। एक बार शेड्यूल मैं देखूं जरा। आई एम प्रीटी श्योर आई सॉ दैट प्रीवियसली। आई हैव द होल शेड्यूल आल्सो। 9 थर्सडे स्पॉटलाइट तो है ही, पर एक और था 9:30 बजे का। एंड या प्राइम भी है ना आज। 30 मिनट में शुरू हो रहा है, 35 लाख को। ये भी खेलना पड़ेगा क्या? चलो ये भी खेल लेंगे। आई वॉज रियली होपिंग कि ये स्ट्रीम ना 5 घंटे की हो, अपना मज़ेदार बैग मारें 1D में और फिर आराम करने चले। अब क्या होता है, अगर मैं ये प्राइम प्राइम खेलने लग गया और अगर डीप चले गया ना, तो मतलब यहाँ दिन के बच जाएंगे क्या, 2-3, एंड देन माई होल डे विल बी लाइक टोटल रिवर्सल हो जाएगा। पर कोई नहीं, यू कांट क्राई व्हेन यू मेक मनी। अपने को आदत हो गई है क्या पोकर। एंड टॉकिंग अबाउट क्राइंग, रनिंग बैड, लाइव पोकर में समझ में आता है। लाइक व्हेन यू स्टार्ट पीलिंग योर फर्स्ट कार्ड एंड इट्स ऑलवेज अ डूस। जो मेरे साथ मॉन्स्टर टैग के डे 1 के लेट पार्ट में, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन आई रैन अप अ स्टैक इन द फर्स्ट 6 लेवल्स, आई वाज लाइक रनिंग गॉडली। I was turning sets against over pairs. You call a C bet, turn a set. You C bet flop, turn a set. So I was stacking people quite a bit. Like I run good was real. मैं monster में तो ऐसा सोच रहा था मैं आज ही मिलियन चिप्स बना लेता हूँ 50,000 से। But when the run bad happens also, लोग late register किए and then they're pros who know how to play like 50 big blinds, 3 bet strategy. Previously आप उन लोगों के साथ खेल रहे हो जो recreationals आ रखे हैं, they have no 3 bets anywhere and you're like अच्छा चलो कोई नहीं, flop पे नहीं turn पे fold करवा दूंगा। But वो वाली लाइव पोकर में समझ में आता है यार, when you start peeling cards and it's like deuce, 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 deuce. And not even getting spots. It's not like deuce होना दिक्कत है. You don't even get spots, especially 9-handed poker खेल रहे हो. इतना आसान भी नहीं होता है spots लेना वहाँ पर, क्योंकि someone or the other wakes up with the hand itself. Early position से इतनी मस्ती नहीं कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं. 6 max is pretty fun. I तो वो चीज़ है. ब्रेक भी खत्म हो गया अपना 5 मिनट का. वाह, पानी भी नहीं लेने को मिला. पानी है. ओके, just gonna get some water. All right. No, no, no. Ta, 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 ta. सही लग रहा है यार. 2 टेबल खेल रहे हैं आराम से. ओबीएस भी दिख रहा है. ओबीएस में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो सब दिख रहे हैं. कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट. मे बी आई वांट चेंज द चैट. चैट को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्या? देखते हैं, वो कोशिश करने की कोशिश करते हैं. मे बी आई कैन डू. या दिस सीम्स बेटर, राइट? बताना अगर चैट लुक्स बेटर राइट नाउ. आई थिंक इट डज. इट्स मोर रीडेबल फॉर एवरीवन, राइट? जीजे को ना बस एक चीज चाहिए होती है WSOP में. हुडीज ले आना मेरे लिए, हुडीज ले आना. WSOP का ठप्पा होगा, उसके बाद मैं घूमने जाऊंगा और वो WSOP की हुडीज पहनूंगा. हद है. I think 2019 I had a lot of reward points because of playing a decent bit. तो मैं आखिरी आखिरी में क्या होता है, all those hoodies from their जो इनका
क्लोथिंग का सेक्शन होता है व्हेन लाइक डे 5 ऑफ द मेन इज गोइंग, दे आर लाइक 80% ऑफ, 80% ऑफ, ले जाओ बस हमारा माल ले जाओ. दैट आई वाज लाइक ऑल राइट, लेट्स यूज ऑल दोस रिवॉर्ड का रिवॉर्ड पॉइंट्स नाउ. 10 10 3. Hmm. Don't always have to small bet when we are deep. So okay. यार ये वाली साइजिंग मेरे को एक बार पीछे सेटिंग्स में जाके चेंज करनी पड़ेंगी अपनी. ये थोड़ी मेरी पुरानी वाली साइजिंग्स लिखी हुई है यहाँ पर. He decides to continue on 10 10 3 rainbow. Interesting. Okay. Is it check raise coming? Maybe I want it to come. He does check raise. We have an easy fold. Like I don't expect him to check raise a 3 ever, right? Yeah. Unless it's like 4 5 and he turned a flush draw also. Maybe that's one of his bluffs. गौतम रोहिला बात ही कर रहे थे. आई वेक अप डेली एंड सर्च फॉर न्यू ब्लॉग. ये मैसेज रिव्यू में क्यों चले गया शो भाई? मुझे वो बोल रहा है कि तुम्हारा ये मैसेज रिव्यू में डालते हैं, ऐसा क्या है? अरे ब्लॉग ब्लॉग ना छोड़ दिए, अपने ब्लॉग ब्लॉग भी करना छोड़ दिए. अब क्या करें यार, हालत थोड़ी खराब है. आई थिंक दे वर अ गुड 7 days. स्टार्ट एक हफ्ते की भी कमिटमेंट काफ़ी अच्छी थी. एक्चुअली द कमिटमेंट वाज आई थिंक 11 or 12 days. बट क्या कर सकते हैं, मिस्टर कोविड ने थोड़ा मूड खराब कर दिया. अब क्या दिखाऊं, मैं अपने एयरबीएनबी के रूम में बैठा हूँ, निशांत खाना नीचे से फेंक रहा है. हम्म. तो गगन एक और चीज मेरे साथ कर रखा है 2018 से शायद, सिंस आई हैव नोन हिम. ही इज लाइक अगले साल तो डब्ल्यूएसओपी में जाएगा ही जाएगा. अरे शादी होनी उससे पहले तो जाना ही है. अरे अब शादी हो गई तो इस साल हनीमून जाऊंगा, अगले साल डब्ल्यूएसओपी जाएगा. इस बंदे का अगले साल कभी नहीं आने वाला, मैं बता रहा हूँ. नाउ दिस गाय इज ऑन अ whip. थैंक यू गुरपाल, थैंक यू. हाँ यार, थोड़ा बस ऐसा ही सीन हो गया गौतम, वरना अदरवाइज लाइफ इज गुड. वील बी बैक फॉर श्योर. कुछ ना कुछ खेलेंगे. पर मेरा तो मन में एक्चुअली मन भी नहीं हो रहा अब खेलने का. आई रियली डोंट वांट टू गो आउट एंड प्ले. मैं तो ये भी सोच रहा था वंस आई गेट अ नेगेटिव टेस्ट आई एम आउट ऑफ हियर. मे बी मैं मेक्सिको जाऊंगा. द वर्स्ट थिंग इज आई एम रेंटिंग लाइक 2 places राइट नाउ. एक तो यहाँ वेगस में, एक मेक्सिको में, एक अपने, एक और इंडिया में. तो मतलब काफी काफी जगह रेंट करके ही जी रहे हैं. मेरी जगह कहीं ना कहीं कोई और लोगों को रखना पड़ेगा मुझे. सब लेटिंग बिजनेस शुरू करना पड़ेगा मुझे. ऐसे नहीं चल पाएगा. बट आई वाज थिंकिंग वापस ही चले जाता हूँ यार. मे बी मेन इवेंट के टाइम पे सीधे N95 पूरा मास्क वास्क पहन के खेल लेंगे. बट नॉट लविंग दिस. यहाँ पर मेरी टेबल पे वर्स्ट पार्ट व्हाई व्हाई आई फील दिस इज लाइक, मैं ही एक बंदा था जो पूरे टाइम पे हमेशा मास्क पहना हुआ है, और मुझे ही दे दिया. थोड़ा तो मतलब. वेयर इज माई प्लेस इन द नॉर्थ? नॉर्थ यू मीन नॉर्थ इंडिया? मैं देहरादून से हूँ यार. एंड ओपन बाय नर्ड गाय. ओके वील 3 bet दिस. कितना डीप है? ठीक है. हैंकर सब लोग आईओपीसी टाइटल जीत रखे हैं, मैं ही नहीं जीत रखा हूँ. कुछ जीत रखा हूँ क्या? कुछ नहीं. ये पहले वाले टाइटल्स नहीं दिखाते, वरना मैं जीता हूँ यार. सुपर स्टैक जीता हूँ, ये सब चीज़ें जीता. ओके, एस जैक जैक बोर्ड. वी डू गेट टू बेट दिस. यहाँ पर ओपन एंड 3 bet हो गई इनके दो आईओपीसी के. ओके,
We bet 33%. Nerd guy folds. We had ace jack, man. Scam. सीधे यहाँ पर अपना फुल हाउस लगा दिया था मैं. I don't think he folds like pairs also, like eights this deep out of position even. That's my read on him. Like he might, but I don't think so. He does. He's pretty lag, like not lag, but like pretty float heavy out of position also. That's what I've seen. फ्री एडवर्टाइजिंग तो नहीं दे रहा मैं नर्ड गाय को. उसके बाद भाई नट्स पे नट्स दिखाते रहेगा तुम्हें और फिर तुम मुझे आके गाली दोगे. Okay, so I've been 3-bet and regardless of what happened, oh shit, cold call आ गई. मैं fold कर रहा हूँ and यहाँ पर against this guy we'll be 3-bet shoving this and पीछे से cold call आ गई है. ये metamorphosis पे note क्या है? 11_11 is thinking. Metamorphosis probably has, अब 1-1 को सोचने दो तब बता दें. अपने पे तो हमेशा नट्स ही होता है. Thank you Animesh, thank you. COVID loves a challenge. 11_11 सोच रहा है. अच्छा जी. He has jacks obviously. ठीक है. And ace king and अपना ace jack था. So jacks, I think on a satellite इतना tank करने की ज़रूरत नहीं थी. It's a pretty straight up call only. Your beat. Jacks is too big. And 25 big blind के साथ फिर घुस गए हैं. Alright, we're gonna come with a raise. Not feeling the greatest right now also, especially in my nose. Okay, fade और holds के against fold करना पड़ेगा. Had ace turn off. Flame boy burn मार रहा है भाई अपने को. बोल रहा है that Spartan balance looking not great. सही बात है भाई. Spartan balance not looking great. कुछ तो करना पड़ेगा. ऐसे तो नहीं चलेगा. Oh, so we're playing Lord Hendrix and Nerd Guy on both the tables, huh? ये उज्जवल है ना? हाँ. उज्जवल के भी काफी 6 scores रहे यार. Sorry about that. And यहाँ पर FT Beast नाम है बंदे का. अच्छा जी. K2 राहु and ये लिम्फ काहे कर रहे हो? Gonna 3-bet shove this. देखते हैं FT Beast कॉल करते हैं या नहीं. Gonna bet one big. He has sevens. We have King Jack suited, and we do not win. And यहाँ पर King 5 था ऊपर तो 2 पैर लग गए थे. So अपनी ये flip हार गए FT Beast के against. And उज्जवल के against ये hand खेलना पड़ेगा. And we are all in. Probably rebuy once more. And 10 high is not good, which we have. And queen high will take it. Okay, last attempt. घुसने की SHR में. इससे ज़्यादा डिमांड मत करना है. 25 बिग ब्लाइंड मिल रही है इसलिए मैंने ले लिया. So we are already in for like 13k.2k in the SHR satis. Yeah. फ्लेम बॉय देखो आज सबको जलाने के मूड में बोल रहा है नाम FT Beast and 0 titles won.
मतलब क्या क्या खा के आए हो आज फ्लेम बॉय? मतलब सबको ऐसे मार रहे हो। आह, ना, अपनी भी शक्ल ऐसी बिगड़ गई है इतना स्नीज कर करके। थोड़ी देर में लोग बोलेंगे जिंदा हो या जिंदा रहना नहीं चाहते हो। ओह सो आई थिंक आई नीड टू डू दिस। कार्ड्स थोड़े नीचे करने पड़ेंगे because it's hiding them a little bit. ओके नर्ड गाय के अगेंस्ट यहाँ पर 3 बेट करते हैं। And he goes for the 4, which is fine. And we call. I'm hopefully not showing the same tables on them both, right? So King 8-7 Rainbow, he goes for small quarter pot, which is good also. Like there's not much there. So understand his thinking also. Turn is an ace, a good card for his range. Bit surprised that he wants to check this. We're gonna check behind. River's a 3. So nerd guy is essentially saying he has king queen. Hmm. Tricky, tricky, tricky. If I bet right now, what am I representing? So I think I overbluff if I bet this. So I check. Does he have king queen? He has king 10. ठीक है भाई, ठीक है. All good, all good. I don't expect him to fold that hand. That is the reason I don't bluff over there. I had gutty and double gutty at Jack 10 of hearts. And ये बोर्ड आया है यहाँ पर रेस करके फेड और होल्ड्स के अगेंस्ट. Gonna check this. Not the best board. Jack 9-7 obviously. तो भाई ने अपने को 4 bet किया king 10 suited, which is fine. We had Jack 10 suited, we peeled, gutty, top pair. Yep. And Ketan's already previously shown that he likes to limp. We're gonna be isolating that. Against this stack size, I think I will check shove my hand on Jack 9-7. I had black aces. So वहाँ पर जीते. At least we've got some like chips from him. And Ketu decides to limp call. 10 queen deuce, huh? And यहाँ पर I am gonna bet. Ace has to check raise on king 10 jack, which is kind of weird. Turn 10. Decides to check. We check back. Alright. And river completes the flush. I have queens over here. Like I was expecting he'll shove the river. Now I think he has a 10 most of the times. Like what are you check raising over here, man, when I have queens? He has the 10, king 10. बड़े शातिर बन रहे थे हैं, बहुत शातिर बन रहे थे.
So I have too big a hand to convert into a bluff. Maybe I win against a hand which is like 8-9 or something. But our man turned a full house and is like, check! नहीं फंसे नहीं फंसे. रिवर क्वीन वुड हैव बीन फाइन. मैं 10 सोच रहा था, उस पे सीधे पे किंग 10 ही निकल गया. मुझे लगा he might check raise a hand like queen 10 over their turn trips. Flame boy देखो, it's best time to play love poker with COVID. Live poker नहीं, love poker. Okay, action is open, reshove and reshove. Third guy who's reshoving is very loose, so I still call my hand. I have jacks, which is now the best hand, not longer the best hand. So we did flop a set. Our man turned the set. He had the best hand going in pre, so we can't complain over there. थोड़ा अपने को tease कर दिया वहाँ पर. बाकी कोई ऐसा नहीं है. एज जैक के अगेंस्ट अपने ने वन आउटर मार दिया था यार. होली शिट. मतलब किंग्स के अगेंस्ट वन आउटर मार दिया था when he has एज जैक. So that is gone and 8 बजे दूसरी टोर्नी स्टार्ट करनी है ना. ठीक है, वो करते हैं. Okay, now I'm showing both the same tables, right? So table 2 hide कर सकते हैं, table 2 के cards hide कर सकते हैं and transition कर सकते हैं. Okay, so we are getting owned by everyone. Nerd guy ने I think he planned his hand standard. Jack 10 bottom of the range तो था यार वहाँ पर. But when on 8-7 king, अगर वो hand याद करें, when he 4-bet me pre 8-7 king quarter pot we call turn is, are we really going to, like the best hand we have, are we really 3-bet peeling ace 8? I doubt it. Ace 7 never. Ace 8 suited maybe sometimes, but like then I'm not representing much, right? क्या बोल रहा हूँ मैं वहाँ पर. मेरे पास क्या है, अट्ठियाँ और सत्तियाँ, and अट्ठियाँ और सत्तियाँ maybe I don't even 3-bet all the times. So I'm fine with giving up, even though I was bottom of the range with my Jack 10 over there. क्योंकि I don't even expect him to fold enough kings over there. Ace तो भूल ही जाओ. Turn पे ace जो था, जो है उसकी range में obviously. तो ठीक है. The give up, I'm fine with the give up. Hemant Malu, how are you man? Congrats on the new automobile. देखा मैं Facebook पे. Living the baller life as always. Coming back to Flameboy's comment, no, we do not want to inflict or inflict biological damage on our opponents. Opportunity and problems दोनों ही दिख रही है मुझे सामने. Heyman, this is the reason we are not putting out the vlogs. We have Mr. Vid. The COVID is here. Mr. COVID is here. Ashwin Sharma, hey, welcome man, welcome, welcome. बाकी काफ़ी लोग इधर फेसबुक एंड स्पार्टन के चैनल्स में अगर देख रहे हैं, welcome to all of them as well. I can see the whole restream chat, so you guys can comment there as well. मुझे लग रहा है स्पार्टन ने आदत थोड़ी खराब कर रखी है सब लोगों की. स्पार्टन की चैट से सारे मैसेजेस आ रहे हैं आईडीज अपनी. भाई यहाँ पर गिव अवे नहीं, यहाँ पर एंटरटेनमेंट दिया जा रहा है. Heman's like not playing poker, so that's why he could buy a car. Hey, maybe you could have bought a bigger one had you been playing poker. I like his dedication to health. Like we chatting a long time ago, and I was turning 30 around that time, and I was talking about what my health plans are. Obviously, those plans did not materialize, but करेंगे कभी ना कभी करेंगे. But he's like dedicated to like his routines for his body. I guess his eating habits as well, and then gym and all that stuff. That's pretty commendable. And and funny enough, I thought we were close to the same age group,
because he looks much younger than, like, let's say, he is. Like, we have a 10-year age gap, and I thought we were the same age group, and then I randomly put out a number. I'm like, I don't want to be this year, these many years old, and then say this. And then he's like, I'm already that. I'm like, you're lying, right? And I'm like, holy shit. How is that possible? Hate to ask, but शर्मा जी is okay. मैंने अपने को देखो, अपने को isolate बिल्कुल ढंग से कर लिया था. शर्मा जी is definitely been helping me out. Sharma ji is good. Sharma ji had a big boy stack in the monster stack, but no longer. Then he played the PLO also 1500. एक दिन में ITM भी हो गया था वो, but then he busted like in the last round or something. तो वो सब हुआ. I saw on Instagram Sushi played the horse. Horse means Hold'em, Omaha, Raz, Stud. I think E is limit, uh, high low. So Sushi bagged in the horse tournament. 1500. Too rich, right? So he'll play any tournament. He's like, this is a punt, but I want to. Even I like mixed games a little bit. Sanish has won a millionaire. Gonna flat him. Three betters. Hey. Oh, E is stud high low. I'm surprised. I thought E was like Omaha high low. Stud high low हो सकता है. सही बात है. Ace 4 6. देखते हैं सनीश क्या करना चाहता है यहाँ पर. He decides to check. Okay, I'm gonna bet. Turn is a 7. Double flush draw. I'm gonna overbet this turn. क्या लेके आए हो भैया? Thank you, Rajesh. Thank you, thank you, thank you. Reverse of force, so every draw breaks. And Sanish के पास कितना है? And we will go for value. We are gonna bet this. He can have hands like is 10 probably. So we bet 24 bigs, and let's see what he wants to do. Thank you, thank you, thank you, thank you. Yes, the crown day 1D is going on. यहाँ पर क्या है इसके बाद? दसियाँ वसियाँ भी हैं क्या? I don't think he calls turn over bet with tens. We had Jack 9 of diamonds, so we bluffed over there. मतलब अपनी देख रहे हो ना, कमेंट्री में बोलना पड़ रहा है. सो आई वैल्यू बेट. कभी कभी लोग सोचे यार ये गलती से बोल दिया है. सो अपने लेवल चल रहे हैं यहाँ पर भी. हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैन. बहुत ही नाजुक सूरत हाल है. Actually, before the stream started, I was playing. I was feeling great. Right now, दिख ही रहा है. I've been sneezing a bit. So let's see कितनी देर तक ये stream चल पाएगी. Oh shit! मैं कुछ दूसरी टेबल शुरू क्यों नहीं कर रहा हूँ? So let's see. थोड़े बहुत अपने bluffs काम कर गए हैं. SHR में हम घुसने नहीं वाले हैं. Unless Arjun Chadda just puts me into the 1 lakh buy-in. Okay. ये भी बंद. एंड प्राइम शुरू हो रही है ना 8 बजे, या प्राइम थोड़ी लेट में है? प्राइम शुरू हो रही है, प्राइम शुरू हो रही है 1 मिनट में. इट्स 4400. सेम प्राइस एज सैटेलाइट फॉर द SHR. तो इसको रजिस्टर करते हैं. सुपर वैल्यू मैन. कितने? वाओ. They're guaranteeing close to like 700 people showing up in this, right? Even more, 800, 900. बढ़िया है. 4000 की बाइन में 35 लाख गारंटी.
सपने देखना बुरी बात नहीं है. Exactly, Arjun. Maybe some days Arjun might become the biggest donator to fishes and might be like, ये रहा है मेरे credit card के number and लिखो और आ जाओ. And see, that's what I wish, Arjun. You're so rich that putting a fish in a 1 lakh buy-in tournament is like, ah, man, for the lols. I know one person in chat who's done that. In one of the SHRs in Goa, one of my friends put me in because he's like, I don't care. Let's play. वो कहानी मैंने बताई थी पिछली स्ट्रीम में. So, yeah. I hope the exactly the same for you as well, Arjun. कि पैसे संभल नहीं रहे हैं तुम्हारे लिए. And then you're like, yeah, man, कोई नहीं, खेल लो तुम. अच्छा, 8 बज गए हैं, अपनी एक और टेबल शुरू हो गई है. Alright, so gonna configure this. Table 2, table 2, table 2. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Okay. Card hiders here and table 2 is here. And I think this is not visible. Yep, transition कर देते हैं. दूसरी टेबल भी आ गई है अपनी सामने. Oh no, wait. I'll have to hide this because I have to minimize this first. क्योंकि फिक्स करना है. देखो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है. लाइक कंटेंट भी मुझे ना पहले बहुत आसान लगता था. मैं मतलब लोग क्या ही करते हैं कंटेंट में, इतनी मेहनत का काम थोड़ी है. When you start doing it yourself, you're like, holy shit. And let's see if I'm good over here. बता देना है अगर कार्ड्स वार्ड दिख रहे हैं. इतने मजे मत लेना मेरे साथ. I think it's not visible now. Yep, all good. अरे सुपर चैट का ऑप्शन है यार. यू गाइज वर द वंस हु आर द ओनली वंस हु सुपर चैटेड इन माय चैट. 100 रुपए दिए थे अर्जुन और आशीष ने. अभी तक याद है. अभी तक मैं वो विड्रॉ नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरा आज तक का यूट्यूब रेवेन्यू $100 नहीं पहुंचा है. बट इट स्टिल शोज मी लाइक द टू पीपल हु सुपर चैटेड 100 रुपीस आर अर्जुन एंड आशीष आहूजा. Maybe I'll open like the members exclusive. यहाँ पर we'll be defending. Oh damn! Where can you see my cards? Okay. Oh no. Maybe now you cannot see. There was a mistake for sure. Do let me know. अपना delay इतना ज़्यादा नहीं है तो you can let me know if my cards are visible. मतलब understand it's so easy beating me without seeing my cards. तो with seeing my cards it's like taking candy from a baby. Please don't do that for me. Acha, Queen Jack was visible. All right. Yeah, I wasn't able to transition it as quickly, so Queen Jack दिख रहा होगा. Thank you everyone. मुझे तो ये वाला स्ट्रीम सबसे सही लगता है. Like, firstly, if you're streaming, you're doing it for the content. If someone's actually like, if like Swelled House की तरह कोई इंडिया में दिखाना चाहता है खेलते हुए जीतते हुए, I'm like more power to you. But once when I'm streaming, like my intentions of winning are not the priority. If I really want to win, I'll probably fully focus and play. But I'm not saying winning is bad once you're streaming, but it's like an additional bonus. अगर हो गया तो हो गया, but priority अपनी streaming है. नर्ड गाय फिर यहाँ पर रेस करने वाला है. हम फिर से 3 bet करने वाले हैं. अपनी तो पुरानी यारी शुरू हो गई है. बहुत जल्दी 3 bet कर दिया क्या मैंने यहाँ पर? अबे यार पता चल जाएगा. हैंड है मेरे पास. कार्ड्स भी दिखा दो और अच्छा कंटेंट होगा. Let's see if nerd wants to 4 bet. He does not, and the board comes deuce 6 7 2 hearts. Okay, we're going big.
and he folds. We had ace deuce off, so we were bluffing pre, and then we were trying to protect our hand. We had no hearts in our hand. He probably did not fold a better hand, that's for sure. And Keta Rahu is wait a second, we have to put a note on him, and then we have to 3-bet him. And he's recreational, so we probably can 3-bet him bigger, and he doesn't care. He just thinks 3-bet or 3-bet. Like he's like choti 3-bet, badi 3-bet doesn't change things for him. Like if he's calling 6 big blinds, he's calling 7 big blinds also. It's commendable. Like इंडिया में हैं कुछ लोग जो मतलब दिखाते हैं अपनी grind, and I think one of the guys, I actually played with him in Goa also. Like huge respect to him. He showed his IOPC grind during February's edition, and I think he ended up cashing for like 17, 18 lakhs also. So made a decent bit of profit also. But utna effort. Mm, I think if I want to dedicate like straight up playing and actually trying to make money, I'll focus on playing poker. And I want to make content. I make content. वो वाला वीडियो याद है ना जिसमें मैंने पूरा संडे ग्राइंड दिखाए थे. The intention was not to make profit. Like profit accidentally बन गया, but was to showcase what all tournaments one can play on Indian sites. यहाँ पर ये 3 बिग ब्लाइंड रेस करते हैं क्योंकि 300 बिग ब्लाइंड इफेक्टिव है. Yeah, Amit Kaushik. Yeah, that's his name. I played with him in Goa. I coolered him pretty bad in the main, I think. Yeah. And I actually remember like one of the tournaments. यहाँ पर ये रेस है क्या? यहाँ पर ये बेट जरूर है. So in one of the tournaments, he I think bluffed me with final 2 tables remaining, and I think Kanchan won that tournament. And I had like 4th pair, and I was like, I tanked on the river. I'm like, I don't know the guy. Is he ever bluffing? His line didn't make a lot of sense. Maybe I'll show that hand sometimes. But yeah, huge respect, man. 11-12 घंटे खेलते हुए stream कर रहे हो. Not my cup of tea. And especially once you're going after the leaderboard, though it's pretty commendable. But yeah, I just एक दो जगह मच्छी कूलर करते ही जीत सकती है. किसको कूलर किया मैंने? I did flop top set, middle set against angry pitball. I had queens on that king 10 queen. इस टेबल पे भी अच्छा ही चल रहा है ना. अपने टेबल पे 84 बिग्स हैं, 20,000 चिप्स हैं 15 के स्टार्टिंग से. Not the best having these two guys on my left and right. ये भी अग्रेसिव बंदा है, पूरी जनता ने बताया. और कोई पता है क्या मेरी टेबल पे कौन है? लाइक आई हैव नो क्लू अगेंस्ट हु दीस गाइस आर. मिलियनेयर जीता है लौंडा. MR राडू कानू. एंग्री पिटबुल पता होगा कुछ लोगों को. मिलियनेयर जीता है. ऑटो पायलट जॉन अंडरस्कोर नो टॉप डेक. I think my priority in the future would be content. And देखो, we're all experimenting, right? Content के साथ क्या कर सकते हैं. Spartan's also experimenting on me कि देखते हैं इसके WSOP vlog में IOPC का integration करके. So everyone's trying new things. That's great. And we're essentially trying to widen the funnel, right? मतलब मैं अपने ट्रैवल का पार्ट इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि ट्रैवल से ज़्यादा लोग आ सकते हैं. बट देन माई कोर ऑडियंस ऑफ माई ओन चैनल इज़ लाइक पोकर, एंड देर लाइक ट्रैवलिंग काहे दिखा रहे हो. सो ये सब चीज़ हैं. अजिन आई 3-bet it on the button, bro. क्या यार, कभी बोलते हो टाइट खेलते हो, कभी बोलते हो क्या. रेस फर्स्ट इन भाई ने कट ऑफ भी किया. तुझे लग रहा है एस आई वहाँ गुड नहीं है उसके अगेंस्ट, नर्ड गाय के अगेंस्ट? कैसे 3-bet करो, लगाओ पैर. एंड यहाँ पर कितने बिग ब्लाइंड डीप हैं हम? ओके.
अर्जुन तुम किताबी कीड़े बन गए हो यार। कभी मजा आता था तुम्हारे साथ खेल के, तुम लगता था तुम फील्ड प्लेयर हो थोड़े। अब लग रहा है तुम किताबी कीड़े बन चुके हो। मेरे पास एसेस आए थे गौतम, कब आए मेरे पास एसेस? मेरे पास एसेस आते हैं क्या? वाह। किंग डिस 4, स्मॉल ब्लाइंड एंड लेट पोजीशन की कॉल्स के अगेंस्ट। थैंक यू विदुर, हे व्हाट्स अप मैन, हाउ इज इट गोइंग? Oh, the one with Nishant getting Indian food, huh? Andrew Nemi vibes. Andrew Nemi is actually, he's been inspired by who? Casey Neistat, right? And I also am a huge Casey fan. Like the times Casey started the vlog genre on YouTube, right? And अब कितनी बार promote कर चुका हूँ मैं केसी को, but if someone likes watching vlogs and wants to see where it all started, just Google Casey Neistat, and yeah, probably 3 days of your life are gone if you just watch all of his vlogs. I think he posted like 500 vlogs, maybe less. He's done daily vlogging like twice in his life. Whenever he starts a business, he starts daily vlogging to advertise it, pretty much. And then another guy who used to do it was David Dobrik. तो उन दोनों को मैं काफ़ी देखा हूँ। डेविड ओब्रेट को इन recent times, during COVID I discovered him, but and through Casey only because Casey is a friend of his. But हाँ, कोशिश करने की कोशिश रहती है। Have you been playing much with her? We did talk about a particular game, right? How are things going over there? एंड कोई बता ही नहीं रहा है मेरी टेबल पे कौन कौन है, मतलब सब अच्छे प्लेयर हैं, कुछ तो इन्फॉर्मेशन दो मुझे, कौन किसके साथ खेलते हो, कौन अच्छा है, कौन मुझे गंदी तरह मारेगा जिसके अगेंस्ट मुझे नहीं खेलना चाहिए। कम ऑन, हेल्प द फिश आउट अ लिटिल। Okay, let's do this. Discord. I've not made my Discord channel really like पूरा categories करी नहीं है, but I think I'll post the link of that on my own socials only. Spartan के socials में नहीं डालते हैं उसको, but maybe we can have like a hangout किसी दिन when everyone can talk on chat and maybe rail some final tables. कोई Indian deep चले जाए तो मज़ा आएगा। And I'll just post the link to that in like give me 1 second. यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं fold करना चाहता हूँ। I created my channel like ages ago, but I have one person in that, and that is Anmol Srivatsa. Anmol, the legend Anmol, if you remember, the guy who fired 8 bullets into the SHR and we streamed it. कैसे कैसे करते हैं लोगों को ऐड? Create invite. Okay. Or send an invite link to friend. Okay. So on my chat, I'm just going to post this link. You guys can join that. Yes, he is there, and you are not Juggernaut. I'm gonna 3-bet Devang again, and yeah, Juggernaut. Things happened, man. I thought Apna Anmol was the baller, but you're the real baller, man. And यहाँ पर I folded a big hand in the other table against the 3-bet, and we had jacks this time, and Devang did not go out of line. We had black jacks. I see, Vidar, I see. I guess this is privy information, right? Do I want to say it? What Anmol's
has happened to Anmol. Anmol's, let's just say, he's got bored out of poker. That is and he's moved on to greener pastures, which might not be greener in recent times. So you can understand the things I'm trying to say. Yeah, and Jagannath might be right. Anmol left because no one liked it. This is the mod on mod rivalry that goes on in my chat. मेरी चैट में जो सब लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ मजे लेते रहते हैं. ऐसी चीजें चल रही हैं. ओके, कैन वी गेट सम कार्ड्स हियर? जल्दी से कुछ बनेगा अपना. Yeah, Anmol didn't give any F, man. Anmol, he still doesn't probably. In any field he goes, he. Uh, and a- actually, actually, Jagannath only told me that his father's like a journalist or columnist, not columnist, writes columns and has a like a very popular Twitter handle. ओके, इससे वैल्यू ले लिए. वाह यार. Sanish 21 raises. But I'm sure Anmol, when he was in the UK, he used to grind MTTs. And यहाँ पर मैं क्या जाना चाहता हूँ? Okay, I want to go a bit smaller. He used to grind MTTs. Then he moved to PLO cash. मैं निशान से बात कर रहा था the other day. Nishant was like, yeah, he was tough to play against because he never had fair. And he played some strategies. He played short stack strategy in PLO, which when other people were not doing was pretty effective. And he called and overcalled. Hmm. Mm-hmm. Tough spot over here on 10.75. I think with the stack to pot ratio, I have only one bet sizing. Especially with his range. He has queen 10, I have queens. So that's not a problem. But like on this board, he has a lot of calls and I just want all of the money. I'm greedy. I had queens, guys. I had queens. He had 10 pair and that is why we wanted all of it. Yeah, Anmol's definitely given some great content. अगर तुम लोग भूल रहे हो ना, I have given him lot more. If you guys don't remember, he was on a final table of a World Series and I had reverse action. And guys, I paid him unit tens, 100,000, 10,000, like mid six figures because yeah, things happened. So he's been great for my channel, but I can rest assured, guys, he got his money where he wanted. 10 for 4. Okay, I'm gonna go this size. For people who definitely watched that stream, he made good money out of me. And on this turn card, actually, let's go this. Oh, the only good thing he did was because that happened, I think, during July 2020. He gave me a whole year to pay it off. So I paid it in 12 installments, so it did not hurt as much. But I was pretty much paying like a metropolitan rent every month to him. दर्द, बहुत दर्द हो रहा था. पर क्या करें, एक बार वचन दे दिया, प्राण जाए पर वचन न जाए. Holy shit, how do these things come to my mouth, man? Yeah, that was painful, but I'm really thankful he wasn't like, आज ही दो, अभी ही दो. Prop bets की अगर बात करें, yeah, it was a limit event, man, like so tilting. Prop bets की बात करूं, so even with pool, like this was I think 2018 WSOP, and उसके बाद मैं अपने दो दोस्तों के साथ, like काफी अच्छे दोस्त हैं वो मेरे, and I think the whole community knows them also, but I really don't want to name them. So we went on like road trips, and हमने LA
सैन डिएगो गए थे, सैन डिएगो से सैन फ्रांसिस्को गए थे, एंड वी एंडेड अप रेंटिंग लाइक अ किक एस हाउस इन सैन होजे. एंड कॉलेज के टाइम में पूल थोड़ा बहुत खेलता था. लाइक आई स्टार्टेड इन कॉलेज ओनली, सो यू कैन अंडरस्टैंड आई वाजंट द ग्रेटेस्ट, बट लाइक the biggest I had probably played was 500 a frame, like college bets. And I think the next time I played pool, I was playing 100 times bigger. And I was a sucker in the game. So वो भी बहुत दर्द हुआ था. सब दोस्तों ने बहुत गलत इस्तेमाल किया है मेरा. uh, Fun times. Okay, Devang's raised 3.5x. We played pretty aggressive against him. It's not like we have any personal rivalry against him, but it's just the hand that have played out that way. Okay, we're gonna three bet him. I don't think he has the time to watch my stream, that's for sure. He probably has like 18, 20 tables. And he decides to call, and holy shit, 3-3-3. Mm. So I want to get max value against a pair, right? So don't necessarily have to bet small. I had ace queen of hearts, but I want to put his like small pairs in tough spots. I don't think he's open 3 bet, 4 bet shoving 60 bigs like 7s, 8s. Maybe he is. That's just the easier way to play, maybe 40 big blinds deep, but 60 big blinds is too much, right? अब आते हैं उज्जवल के साथ खेलने. ये देखो गौतम को. भाई मैंने आज तक फीफा माल में कब खेला होगा. आई रिमेम्बर प्रॉब्ली प्लेइंग 1999 फीफा द पीसी वर्जन. दैट इज लाइक you have to give me probably 1:300. I've never my PS lifetime amount I've played on a PS is probably less than 24 hours. जब मैं पोकर खेलना प्रोफेशनली शुरू किया था, आई वाज लाइक आई कैन नेवर बाय अ PS और Xbox बिकॉज आई विल गेट एडिक्टेड टू इट एज वेल. एंड फिर मैं पोकर नहीं खेल पाऊंगा और पैसे नहीं बना पाऊंगा. तो दैट इज़ द रीज़न आई डिड नॉट बाय. अभी मैं ट्राई तो कर रहा हूँ यहाँ PS5 खरीदने की. अ फ्रेंड ऑफ माइन इज आस्किंग फॉर इट. उसकी शादी में मैंने गया था, गिफ्ट तक नहीं दिया, तो मैंने बोला PS5 दे. और ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज, तो वो मांग तो रहा है. एंड यहाँ भी नहीं मिल रहे हैं यार PS चिप. शॉर्टेज, अलग ही दुनिया चल रही है. Oh yes, Venkata, you're right. Arjun Chadda should be brought in and showcase his game. इतना रन गुड करता है ना चड्डा. मतलब आई रिमेम्बर अ फ्यू फाइनल 2 tables with him. Like coolers me like it's no big deal. Hey, give me 1000:1 and give me 2 months. Things can happen. Yeah. और बोलो कोई मुझे दे रहा है 1000:1. It's all about मतलब yeah. You guys have probably played like 2 years of your life FIFA, right? Gaming में यही है. काफी लोग they dedicate their life to it. Oh, Arjun, same offer for you as well. Gautam's, I think, this is called Big D energy. Gautam's like, I will take on anyone and everyone. This is great. पर देखो स्पार्टन का अपना 4 करोड़ गारंटी में टेबल पे चिप लीडर पहुंच चुके हैं अपने. कोई दिक्कत ही नहीं है. And the prime tourney is also going great. So we're having fun. We're having a good time chatting with friends as well. There's some rivalries going on, some matches being decided. देखते हैं मेरे Discord पे कोई आया है अभी तक या नहीं आया. I think some people have joined. Oh wow, nice. We've got few people coming up in the Discord also. Created एक और बार मैं इधर चैनल पे डाल देता हूँ.
एंड इफ यू वांट टू जॉइन वी कैन हैंग आउट समटाइम्स. फाइनल टेबल देखेंगे, कोई इंडियन ब्रेसलेट तो ले जाएगा ही ले जाएगा. वी कैन इवन वॉच क्राउन में मैं किस तरह जीतूंगा. तो फायदा है अगर वहाँ ज्वाइन करो. So I posted the Discord link if you want to join. Yeah. तो इतना अच्छा चल रहा है यार, मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है. we're coming to the second break and we're not on like third bullet. ऐसा कैसे चल रहा है यहाँ पर. I will be raising. And free ticket to IOPC 33 crore. Deposit offers from 2000 onwards. चेक करें क्या. अरे यार चले गया वो. मैं चेक करना चाह रहा था क्या ऑफर्स हैं 2000 रुपए के लिए. सब लोग बोल ही रहे स्पार्टन बैलेंस अच्छा दिख नहीं रहा है तो अपने को डिपॉजिट करना ही पड़ जाएगा शायद. आह, विदुर आई एक्चुअली डेल का VR I bought in. So if you watch one of my oldest vlog, which is the New York vlog, I think that is 2018 or 2017. And that time मैं Black Friday के दिन न्यूयॉर्क में था. And I ended up buying the Dell का VR headset just because if you bought like a PC over there, just the CPU, you were getting the $300 VR headset for free. And I had it at a time where there were not so many applications for that, but it was pretty amazing. Yeah, I definitely used it for a while. थोड़े बहुत गेम्स खेल सकते थे, ये सब कैसे. दे आर द रिमोट कंट्रोल्स इज वेल. एंड मेरे लैपटॉप पे भी वो चलता था, पीसी पे भी चलता था. इट्स प्रीटी सिक. तो वीआर हेडसेट के साथ या. एंड एक बार मुझे याद है वी वर काउच सर्फिंग इन वाशिंगटन डीसी. तो वहाँ भी हमारा पूरा ग्रुप 5-6 लोगों का एक वीआर आर्केड गया था. उसमें भी बहुत मज़ा आया था. Yep, $300 thing. डेल का था. आई एम फॉरगेटिंग द नेम. बट यूज़ किया है मैंने, घर पे पड़ा हुआ है. आई डोंट गेट टू यूज़ इट मच एनी मोर. बट काफ़ी अच्छा था. मुझे काफ़ी आई लाइक द एक्सपीरियंस. 111 bigs in the 11K and 200 bigs. Who's gonna stop me? No one. I'm actually planning on buying a new laptop. I have the Dell XPS, which is this one. This is, I think, Dell XPS 17 or 15. This is i7 9 gen. But I'm planning on buying a new laptop. It's gonna be 3 years of this laptop in January. The reason I remember is I took a warranty for it for 3 years and this time around I'm going to pitch it in. एक महीने में वो रिपेयर सब चीज़ें ठीक करके देंगे फिर से. आई थॉट 3 साल की वारंटी ली है, इतना पैसा दिया है तो एक बार करवा ही लेते हैं. Oh, it's pure wireless now. Yeah, must be more fun. Definitely. Uh, Wireless. उस समय लगता था there's some weight hanging around your neck. Yeah, the cable was like an audio cable, and then you'd have to put headphones on, and then there was obviously the HDMI cable of sorts. Yep. यार उस समय के भी it seemed pretty realistic. Like when you go inside the VR and you're opening programs and applications, it seemed pretty real. Like Dell वाला में क्या था, it shows you like your house is on top of a cliff. तो वहाँ ऊपर जाके देखो, नीचे देख रहे हो तो डर भी लग रहा है गिरने वाला हूँ. And there were like experiences climbing Mount Everest. So I put it on my mom's face and mom को बोला कि यार आप हेडफोन्स लगा के देखो. मम्मी तो ऐसे कहा हटाओ इसे हटाओ. So it's pretty realistic. काफ़ी मज़ेदार रहा. There was like a safari in Kenya. माउंट एवरेस्ट था. आई थिंक इंडिया का भी थोड़ा बहुत चीज़ें थी. तो वो सब चीज़ें मैंने करी थी एक एक बार. बट उसके बाद ज़्यादा नहीं करे. VR ऑब्वियसली VR इज़ द फ्यूचर. VR में शायद वी आर गोइंग इनटू द सिम.
पोकर पोकर के सिम की बात की जगह लाइफ इज गोना बिकम अ सिम। यप। और कोई टेक्नोलॉजी बताओ यार। लाइक मुझे कैमरा गियर में कुछ नया खरीदना। लाइक माय बेस्ट परचेज आई थिंक टिल नाउ इन कैमरा गियर हैज बीन DJI Osmo Pocket 2, जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ एंड जिससे लोग बोलते हैं यार इतनी मस्त फुटेज आती है, स्टेबिलिटी एंड ऑल दैट स्टफ। इट्स प्रीटी स्मॉल आल्सो, हैंडी एंड इतनी दूर पड़ा है, वरना मैं दिखा देता, पर पहले भी मैंने दिखाया ही है। दे आर ब्रिंगिंग आउट द थर्ड एडिशन इन दिस दिसंबर। सैडली आई डोंट थिंक आई विल बी हेयर उस टाइम अराउंड। पर ड्रोन मुझे खरीदना है, पर वही दिक्कत है, इंडिया ले जाते हुए कहीं मुझे ले जाने ना दें अंदर, बिकॉज जो मेरा ड्रोन था वो उड़ गया, उड़ गया। मुझे देमला मिला था गोवा में जब मैं टूर्नामेंट खेल रहा था, उसमें याद दिला रहा था। सो ही वाज द वन हु हेल्प मी विद द ड्रोन। मेरा दोस्त हांगकांग से लाया था देमला को, दिल्ली में दिया था देमला, फिर गोवा में लाके मुझे दिया था। उस समय कोई लाइव सीरीज चल रही थी और मैं गोवा के थ्रू रोड ट्रिप कर रहा था, तो देमला मुझे वो ड्रोन लाके दिया, फिर मैं वो ड्रोन लाके कूर की मैं रोड ट्रिप कर रहा था। तो ड्रोन तो जा चुका है, बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू बाय एंड टेक इट बैक टू इंडिया। अगर किसी को और इन्फॉर्मेशन है ड्रोन ले जाने की तो बताओ यार। मैं यहाँ खरीदना तो फायदेमंद है ही, ऑब्वियसली आई विल गेट इट मच चीपर ओवर हियर, पर ये नहीं चाहता हूँ कि मैं वहाँ वो एयरपोर्ट कन्फेस्टिगेट कर दे। उसमें एक चीज़ होती है, अगर जब एयरपोर्ट रख लेता है तो यू कैन बी लाइक या व्हेन आई एम लीविंग दिस एयरपोर्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रिप आई कैन टेक इट विद मी। दैट्स हैपेंड विद अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही वाज एक्चुअली एबल टू टेक इट बैक। बट कितनी उम्मीद करते हो कितनी बार मिल जाएगा, कितनी बार नहीं मिलेगा। एंड आई थिंक ही स्पेशली प्लान दैट ट्रिप लाइक 3 days लेटर। ही लाइक मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ से जाने के लिए, पूरा एक ड्रोन ले जाने के लिए, क्योंकि ड्रोन इतना सस्ता नहीं था। इट्स लाइक 1 लाख रुपए का तो ड्रोन पड़ा था मुझे। मेरे पास कौन सा था, DJI का मैविक प्रो था मेरा, राइट। एंड वो भी काफ़ी सही था मेरे को। मेक्सिको में मुझे याद है मैंने लाइव स्ट्रीम भी करी थी उससे। काफ़ी सही चीज़ थी, प्रीटी लाइट ऑल्सो। तो टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग मैन, इट्स अमेजिंग। मेरा लैपटॉप भी एक टाइम पे मुझे बहुत हाईटेक लगता था, बट वन थिंग आई रिकमेंड एनी वन एंड एवरी वन, if you buy a laptop, never buy a touchscreen laptop. Like I bought a touchscreen laptop, like this was the additional feature, $300 दे के मिल रहा था, and lightly fun, but मुझे लगा ही नहीं मैंने कभी touchscreen का इस्तेमाल किया। I'm gonna be opening this to 3x 200 big blind deep, unless it converts into a tablet, total foldable, and yeah, I don't think my laptop's the greatest touchscreen में कभी मतलब इस्तेमाल करा ही नहीं हो। अच्छा चलो बताओ बाकी सबके क्या स्टैक्स स्टैक्स चल रहे हैं। मैं तो चल रहा हूँ 15 out of 179, किंग 8 9 बोर्ड अगेंस्ट द बिग ब्लाइंड। 59 out of 190 and turn is an ace. I think I still want to bet, and we bet this. Let's see how big fish. I had a king jack, but I still betting for value. He still has open enders, he still has flush draws, which he sometimes calls. He does have sometimes an ace, which was the flush draw, but okay. यहाँ पर ये फोल्ड करते हैं। We've got new people jumping in. सही है। और 8 लोग 9 लोग 11 लोग पहुंच चुके हैं हमारे डिस्कॉर्ड के सर्वर में। At least we'll hang out, watch some final tables of Spartan, watch some WSOP final tables. Entertainment. Let me see that hand again. रिवर पे ट्रिप्स थे क्या इसके, देवांग के पिछले हैंड में? Yep. And he did not get value. चेक चेक चले गया। अच्छा, ट्रैपी ट्रैपी। क्या स्टैक्स चल रहे हैं सबके? मतलब जब मैं सबसे आगे चल रहा होता ना कोई कुछ बोलता नहीं है, और अगर मैं यहाँ होता लास्ट तो अर्जुन बोलता हाँ मेरे पास देखो 3 times स्टार्टिंग स्टैक है, देखो ये देखो वो देखो। अब okay, I'm just going to defend this. Maybe I could 3-bet this sometimes.
King Queen 5, Bowl Auntie. Oh, this is Zarvan. Nice. I've been watching. Oh, okay, I'll tell you a fun incident with Zarvan. So Zarvan and I are playing. Which is this event? This is a high roller in Goa, right? I think in March or April. April, I think. So um, I post a story and I asked Zarvan what's his Insta. I'm gonna call this, and I tag him and I post the story. Ab Zarvan reshares the story and then he clicks the follow button. I'm like, Zarvan, I'll be honest, you put me in a social conundrum over here. Like, I don't like following poker players, man. Poker इतनी जिंदगी में अपने आप खेलते ही हो कि अब पोकर प्लेयर्स को फॉलो करके पोकर पोकर देखना. He's like नहीं bro, like I do all kind of content. मैंने बोला देखो, I love seeing like if you have pets content, and if you have kids, that is also fine. Like I he's like yeah definitely. I was like okay, Zarvan, you're gonna give me good content, right? And Zarvan की अगले हफ्ते से stream, मतलब इंस्टाग्राम पोस्ट, मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ. And it's been like a 1 month of him just beasting everything, winning the high roller, and then running deep in other events. Right now he's in Southeast Asia, and he does post a decent bit of content. Abhi, I think him and his wife are meeting up in Vietnam and they're traveling. And I'm like, when he won the event, I messaged him. Okay, this was worth all those poker posts also. Congrats. Oh, Arjun Chadda has 130 big blinds. ये कैसे होता है? मैं verify करने जा रहा हूँ. So Zarvan's an awesome guy. Much fun. मस्त लौंडा है Zarvan. ओके, क्या आइडिया है इसकी? बोल रहा है वन कितने 100 में कितनी बिग ब्लाइंड्स बोल रहा है? 130 बिग ब्लाइंड्स एट दिस स्टैक साइज विल बी, अच्छा, लाइक 40 के चिप्स. ओ, बजिंगा हैज 41 के चिप्स. झूठ नहीं बोलता ये आदमी, मुझे लग रहा झूठ बोल रहा था, मैं पकड़ने वाला था. दिस हैंड आई वांट टू फोल्ड. ओह शिट, जाफर won an APT today. Awesome man. इंस्टा पे दिख क्यों नहीं रहा है अपने? देखते हैं. बंदा देखो एपीटी जीता है और उसके अगले सेकंड द ग्राइंड इज रियल. he's back grinding. Oh, just seeing this Arsh's post. Arsh is leaving for Vegas in 4 days. Has a little bit of action if you guys want. All right. Oh, sick. Chigi ने post किया है. I'm going to raise this and look at this, guys. Zarvan's won an APT. Wow, congrats. Great, man. Hanoi, Vietnam. We ain't done yet. And I think his wife is there also, so that's even... Oh, shit. मतलब इंडियंस पूरे जाके खा गए हैं वहां पर. आलोक बेहरवार wins an event as well. Gonna bet this. Alok won a high roller in Alok won the IPC high roller, right? पूरा crush कर दिया था. Gonna defend this. यार यहाँ पर King 7 suited था मेरे पास, 2 पैर लग गए थे. That's great. Either Shardul also won an event recently, right? Main event, and Shardul के बारे में. So you guys know I commentated for the Poker Sports League, right? तो उस समय commentate करते हुए we're watching the game, and जब वो दो टीम्स के बीच में जाता है तो तीन लोग एक टीम के खेल रहे होते हैं. So Shardul was the captain for his team, but one of the decisions he made was I think calling off, and that was pretty light. And जब मैं commentate भी कर रहा था तब मैंने बोला I don't think this is the correct one. I think आशीष की टीम थी ना, हाँ, कलकत्ता. And then I meet
meet him afterwards, and he's like, "Yeah, bro, I helped them out with one decision, and that was wrong, and rest I was just chilling." मैंने बोला ये होती है कैप्टन की जिंदगी. अंकित was runner up with आलोक in APD. Awesome. सब अपने इंडिया के लौंडे पूरे छाए हुए हैं एशिया में. Asian circuit is definitely softer, I'd say. The big fields. Okay, there's two reasons to that. Firstly, एशिया जाना ज़्यादा फायदेमंद इसलिए रहता है. फर्स्टली इट्स वेरी वेरी चीप. लाइक व्हाट्स कॉस्टिंग मी हियर माय एयरबीएनबी एंड ऑल, अगर जो 10 दिन का चार्ज हो रहा होगा वो प्रॉब्ली वियतनाम में उसमें तो 2 महीने रह लोगे. बट स्टिल लाइक मनीला एंड ऑल दैट दोज प्लेसेस विल स्टिल बी 1/3 चीपर देन इट्स इन यूएस. और दूसरी ये भी चीज़ है कि वेगस WSOP यार पूरी दुनिया के प्रोज भी खेलने आते हैं वहाँ. एशियन सर्किट स्टिल ईजियर, एंड इंडियंस आज से नहीं काफ़ी टाइम से ही क्रश कर रहे हैं. मेरा प्लान भी यही था, लाइक 2020 2021 का, अगर कोविड नहीं होता तो एशियन सर्किट ग्राइंड करने का. थोड़ा बहुत शुरू भी किया था मैं, बट या थिंग्स हैपन. I think Arjun, you're talking about the one Shardul one, and Ramesh is talking about the one Zarwan one. No, the one Alok one. अरे इतना जीतते हैं इंडिया वाले, किसको पता ही नहीं चलता है. इंडियंस डू प्रीटी वेल, या काफी अच्छा रहता है इन लोगों का. ओके, सो किंग हाई फ्लश वर्सेस द नट स्ट्रेट ऑन द फ्लॉप, एंड प्रीटी अग्रेसिव गाय वर्सेस नॉट सो अग्रेसिव. नोट्स ही नहीं है तो नॉट सो अग्रेसिव बोल ही सकते हैं. India doing great, and obviously Indians will do great in Spartan because हम ही लोग खेल रहे हैं. But Vegas maybe. Neil has, I think, put in the most amount of volume. नील स्टार्टिंग से ही बज रहा है काफ़ी. मैं उसके बाद बैठ के हम लोग मॉन्स्टर स्टैक के डिनर ब्रेक में हम एक्चुअली लेट भी हो गए थे. वी वेंट फॉर ऑल यू कैन ईट सुशी, एंड आई मिस्ड माई स्मॉल ब्लाइंड, बिग ब्लाइंड एंड एंटी. 3-4 हैंड्स मिस हो गए थे मेरे. दैट वाज टिल्टिंग, बट ठीक है, कोई नहीं. एंड और कौन कौन आ गए? आई सॉ पावन्स हियर, निकिता इज हियर, स्पार्टन प्रो. So probably in Spartan socials you'll see somewhat Nikita grinding WSOP, and Kunal's here, or Muskan and her husband's here. गोविंदी is here. गोविंदी का मैं देख रहा था MIT में घूम रहे थे भाई. वो Amphibians, the team, the Blackjack, infamous team of Blackjack from MIT, उनका रूम ढूंढ रहे थे कहाँ है. इवन आई विजिटेड, मैंने भी जब मैं बॉस्टन में था, मैं वहाँ पर ऑनकोर था या विन था, मतलब दोनों ही सिस्टर प्रॉपर्टीज है, तो दोनों में से एक जो था, आई प्लेड ओवर देयर फॉर अ मंथ. माई फ्रेंड लिव्ड ओवर देयर एज वेल. तो मेरे को थोड़ा कॉलेजेस कैंपसेस घूमने का भी ज़्यादा मज़े आते हैं एक तरह से. मैं स्टैनफोर्ड भी घूमा था जब मैं इधर कैलिफोर्निया एरिया में खेल रहा था. तो जब मैं बॉस्टन में था तो मैं हार्वर्ड वावर्ड और फिर MIT में भी अंदर किसी बंदे ने अपना कार्ड स्वाइप किया, उसके पीछे पीछे भाग के अंदर चले गए. तो या वहाँ पर देखा मैं थोड़ी बहुत चीज़ें. आई फाइंड इट लाइक फन टूरिंग कैंपसेस. कभी जा तो नहीं पाए पर देख ही लेते हैं अंदर जाके. एंड यहाँ एक्शन ओपन 3 bet टिंग 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 एंड स्ट्रेट. इसने किंग 5 स्टैक ऑफ मार दिया वहाँ पर. वाओ, प्रीटी इंटरेस्टिंग. फ्रेंजी ने इसके अगेंस्ट किंग 5 स्टैक ऑफ मार लिया. टॉप पेयर. Why am I playing Spartan today? Firstly, it's a huge value day. Thursday चल रहा है. And secondly, I have COVID, so I cannot leave my room. So, opportune moment to stream as well. 5. Okay, we go big.
Sanish and oh, Zavan's coming from the small, and this guy calls. Mm-hmm. And Zarvan with the check raise. Sizing, like at worst case scenario, this is what, Jack 10 of diamonds? And my exact hand doesn't do great against it, especially three-way, so thank you, thank you. And there's an all-in and a call. Ace deuce of diamonds versus top set and straight and flush, no good. Like, Zarvan sizing over there is like always nutted, right? Like मैंने 6 bet किया, बंदे ने call किया, he's making it 16. Like he definitely gets action from my opponent's hand, but I don't think he gets anything from my hand more. I had an overpair over there. I folded an overpair. It's just too strong. Like especially after one guy calling whose range. Hmm. देखो good fold भी करने आते हैं अपने को. And now is the guy tilting? WSOP के वीडियोस तब आएंगे जब थोड़ा कोविड का सीन कम हो, अपने N95 मास्क आए. एंड मैं तो ये भी देख रहा था सेकंड बूस्टर मैं कब लगा सकता हूँ. आई थिंक आई कैन हैव इट डन इन लाइक 15 days, क्योंकि मैंने फर्स्ट बूस्टर अपना पिछले महीने 10th को लगाया था. सो यू गॉट टू गिव लाइक 45 days. दैट्स व्हाट आई रेड. आई विल ट्राई रिसर्चिंग इट अगेन. It's gonna be a hot day in Vegas. मुझे बता रहे हैं 42 degrees is gonna be the high point. At least feeling much better than what I was feeling 1 hour ago. मुझे तो स्ट्रीम शुरू करने के बाद भी ऐसा लग रहा था, अरे यार ये नहीं हो पाएगा क्या अपने से. एंड एस 8 वर्सेस क्वीन 10, ये हैंड मुझे रिप्ले में देखना है. सो एस 8 बटन ओपन करता है, नॉट गाय goes call, flop goes check check, turn goes check check, river Lord Hendrix bluffs with queen high and easy call but not guy. ठीक है. और जो कंटिजेंट स्पार्टन के आईओपीसी के बाद खेलने के बाद आ रहे हैं, शायद जेडी भैया आ रहे हैं. ही इज कमिंग अलोंग विद हिज वाइफ. एंड फर्स्ट गाय आई मेट ओवर हियर वाज बंसी राघव. और कौन कौन है यार. इंटर ऑब्वियसली हियर. Inter's been here since 2002. I don't think he's missed any WSOP. And I don't even think he's gonna miss any WSOP ever. The guy just loves WSOP. It's a legend of poker, obviously. And he's run deep twice already, yaar. एक में 10th, एक में 18, Monster Stack में 18. I'll honestly say, I think Inter runs the worst in big spots. Like his mentored players have done great, but like Inter runs the worst in the biggest spots. Like I remember there were tournaments where he was like $1 million for first, and he was like 1 out of 17, busting 13th. And like Prahlad Friedman posting on Twitter like interventions always railed me and wished me luck, so this is my one time for him. And yes, I've been seeing this for like the past 10 years since I've been like playing somewhat professionally, right? Do we want to mess with our friend again? No. Devang बोल रहा होगा, bro, this is me respecting you. If I'm 3 betting you a lot, it's more of respect. Nerd probably doesn't care, has like 20 tables. But yeah, Inter's deepest run has I think been second, right? He lost heads up for a bracelet. But इस साल आ रहा है, इस साल घर आ रहा है. Yep.
Ayer is here. Ayer ने भी deep run मारी यार. Ayer FT'd. Wow, how am I forgetting this? ये वाला I busted the monster stack, and then I ended up playing PLO and recovering my buy-in. And as I'm going back, I see a line and I'm like, Ayer, यहाँ क्यों खड़ा है? He's like 880 deep stack WSOP event. And I look at my schedule. I was like, oh shit, ये भी था मेरा. And then I go and stand in the line, and I'm like already not feeling great. So I'm like, do I really want to? And मैं literally line में 20 मिनट खड़ा हो चुका हूँ, and my numbers about to come. There are like 20 people in front of me, and that moment I was like, I don't think I'm feeling great. I need to go home. And Ayer ended up registering, and I think finishing like seventh, if I'm not wrong, in the $800 WSOP. Yes, for like $40,000. Whereas Anmol has moved away from these lowly pastures of grass. अनमोल अब बॉलर वाली चीजें करता है यार, यहाँ नहीं. We had nines, we raised nines and took it down. What's up, Bhargav? यार WSOP winner कहाँ मैं? I think I'm losing like $10,000. हर दिन ATM से जाके मैं $700 विड्रॉ मारता रहता हूँ. यही जिंदगी चल रही है अभी. Oh no, I'm gonna sneeze. I'm gonna apologize already, guys. Limp क्यों कर रहे हो भाई? Excuse me. I'm gonna isolate. I've not run the greatest at sit and goes also, because sit and goes का मैं इतना दिखाया नहीं हूँ, but there's some spots like three-way. If I win the pot with the best hand, obviously, which I had, pretty easy stab over here on this board. He decides call. Turn is a 9. Improves his hands, obviously, but still I have to bet my hand. Sexy Mohan is thinking. He folds at ace queen. तो WSOP में तो डाउन ही चल रहा है, उसकी तो कोई मतलब, there's no shame in saying it, and what is the truth is the truth. WSOP में मतलब अपनी बाइन स्विंग क्या हो रही है? 6 बाइन की स्विंग, which is nothing. Oh, mic नीचे लो. Yep, thank you for letting me know. And this is the part which I like. अगर ये डिले में होता तो 5 मिनट बाद मुझे पता चलता है कि माइक ऊपर है. राइट नाउ आई नो माइक में गड़बड़ अभी हो गई है. थोड़ा डेस्कटॉप ऑडियो कम करते हैं. एंड और कौन अच्छा कर रहा है? पहले स्पार्टन की अगर बात करें तो वहाँ पर अनिकेत को मैं देखा हूँ जीतते हुए. ओके, यहाँ पर तो ओके, दिस सीट बिकम्स अ डिफरेंट. किंग हाई बोर्ड, सनीश 21 के अगेंस्ट. सब लोग ही जीत गए हैं, सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स. ही इज बैटिंग बिग ऑन दिस बोर्ड. इंटरेस्टिंग स्टैक साइज के हिसाब से. ओके, आई स्टिल कॉल आई गेस. टर्न इज अ क्लब. He's still betting. Like, what is he trying to represent over here? Like, seems पता नहीं, there's the money left behind. Let's go in. He has ace jack, like the hand which I was targeting. Also, I have king 5 of clubs, so obviously I turned the nuts, pretty much the nuts, and I coolered him as well. I did not want one more club to peel and then him not stacking off, especially when he bets so small on the turn when the club completes. That's just saying he has a hand. The people don't like
स्पेशली ऑन द क्लब कंप्लीटिंग आई डोंट थिंक शॉर्ट स्टैक्स इतना ज़्यादा वहाँ पर इन लोगों की ब्लफिंग रेंजेस है. तो आई केप्ट हिम ऑन हैंड विच इज़ वैल्यू इटसेल्फ कुड बी क्वीन 10 किंग 10 एंड मेरे पास तो नट्स ही हैं, सेकंड नट फ्लश है तो क्या दिक्कत है. कोई नहीं होगा एक एंड 2 साल की बाइन सॉर्टेड. आई डोंट थिंक आई एम एवर कमिंग लाइक दिस. आई सेड दिस इन 2019 ऑल्सो कि मैं कभी नहीं आऊँगा पूरी सीरीज करने ये वो. सो फर्स्टली आई डोंट थिंक इट्स प्रॉफिटेबल, लाइक ऑनेस्ट टू गॉड आई डोंट थिंक इट्स प्रॉफिटेबल. वाई? बिकॉज ऑफ द टैक्स. अगर टैक्स नहीं होता या वी वुड हैव क्रश्ड, बट सैडली वी हैव टैक्स एंड वो भी नेट बाइंस पे नहीं है. आप जितना मतलब जीतते हो 5,000 से ऊपर. लाइक द अदर डे ओके यहाँ पर क्या चल रहा है. Okay, gonna make a tight fold. Just say Nishant cashed for like misclick. No. Oh damn. Actually is a misclick, I think. So Nishant cashed for like 6,700 of a 1,500 buy-in. So net profit was 5,200. So he got charged 30%. तो वो सब चीज़ें हैं. एंड 2019 में भी आई रियलाइज कि द गेम्स don't run the greatest, the ones like cash and all which like 10 days before the main. So I think I'll be a customer, let's just say, to WSOP, but just for the main event. Come here 10 days, enjoy Vegas, play the main event, play some other side event as well. But puri series karna, especially with taxes, is so tough, man. ये देखो सौरभ को क्या बोल रहा है. अनुज यादव भी अच्छा खेलता है. अनुज यादव ही खेलता है, हम तो पत्ते खेलते हैं, वो ही खेलता है. Yeah, though the set and goes have not been running, to be really honest. Like the low buy-ins have been running 275s, like 1 500, 2 500 runs in a day, and not the best ones also. तो वही चीज़ है कि अगर 10 दिन पहले आओ तो 1Ks will also be running and they'll be super profitable. Like you'll already be in profit even before the main starts. You'll probably free roll the main event. तो दैट्स व्हाट इज कि आ जाओ 10 दिनों के लिए आ जाओ और वो सब कर लो. बट या आई वॉजंट इवन सीइंग माई सेल्फ कमिंग दिस ईयर लाइक अर्ली. मेरा प्लान तो फिर यही बना कि सेकेंड से लेके 14 तक खेलना है, लाइक वेगस आना है. एंड विद कोविड हैपनिंग टू मी आई जस्ट एक्सटेंडेड माई स्टे. थैंकफुली आई ऑलरेडी हैड अ प्लेस. निशांत ने बोला था थोड़े दिन के लिए एक्सटेंड कर दो इस प्लेस को, एंड देन वी हैव अनदर प्लेस. वी आर मूविंग देयर ऑन द 17th. तो ऑप्शंस अभी थे, कोविड हो ही गया तो फिर कहीं जा नहीं सकता था. सो ऑल थिंग्स हैपन फॉर गुड ओनली. अपनी कार ले ली उन्होंने, मुझे एलए लौटाने जाना नहीं पड़ा. इतना बैंक रोल मैंने कैसे बनाया? आई डोंट नो मैन, आई ग्राइंडेड अ लॉट. मतलब 50 रुपए की बाइन टूर्नामेंट सिट एंड गोस खेलता था मैं 2012 में. इन 2014 आई हैड मूव टू, क्या एवरेज बाइन रही होगी मेरी उस टाइम. I think 2015 I was playing $30 ABI tournaments. फिर 2015, 16, 17 I primarily focused on online and live cash जब मैं बैंगलोर में रह रहा था. So yeah, थोड़ा हल्का हल्का करके मूविंग अप इन स्टेक्स. काफ़ी साल लग गए यार, 10 साल लग गए. एंड प्राइमरली इंडिया के बाहर कब रहा हूँ मैं ज़्यादा? 2018 के बाद. या so it's not like really really long time. 4 ही साल तो हुए. Although I do see myself getting into the like business side, content side, ये सब चीज़ें. 100 big blinds and 100 big blinds, मतलब कब होती है मेरे पास 100 big blinds? आज हैं. Okay, I'm looking at my hand. I'm not understanding why I folded. So probably there was a raise before me. That is the reason this hand got folded. Unfortunately, that's not true. I was never
Danish's student. I wish I was, but I never got coached by Danish. He's part of IPP, right? Probably one of the founders, or maybe the early joiners. Not the founder, क्योंकि found तो अपने घर पे हुआ था, and I don't remember. Hmm. I was never Danish's student. Like if I had been, I'd probably be like 3 times the player right now. Danish is also one guy who's like driven into the sunset, the good life. Leave on a high. Content का ही वही मानता हूँ मैं. Like when the content's going great, you just don't try to elongate it. Just shut it down. वहीं पर खत्म करो. Let people feel like they want to get back to this. Like next time you post something, they feel, yeah, I want to check this out. इसलिए मुझे like I'm streaming right now, but I find streaming like laziest form of poker content. क्योंकि क्या करना है मैंने? I just have to show up and then have a conversation if I want. And it's not like I'll be teaching something. I don't even think I'll be okay. Lord Hendrix shoves, then Sanish is thinking, and I had the deuce. That is why I was so seriously looking at that board. I obviously live tell. I don't even think I'm like a good enough player even in the Indian circuit anymore. And isolate कर दिया है Zarwan ने probably with ace 10. Oh, banker सीधे queens ही उठा ली. And brick for Lord Hendrix and the rebuy coming in soon, है ना? Yep. Yeah, I know IPP is no more. Uh, ये मूवी फैशन फिटनेस कहाँ कहाँ क्या क्या चैनल्स बन रहे हैं? Gonna raise Ujjwal. He folds, man. Like I want to know this hand. Like Jack 3 offsuit. Na 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 na. Okay, so this will be opened. Guys, let's hit the 50 likes mark. मैं अभी देखा 34 likes are already there. So if you're watching and if you like it, like it. Simple. King Jack 10 against an aggressive guy. Okay, over pot हुआ दूसरी table पे. Okay, we will be betting this. And he folds. We had queen 3 suited, diamonds. We had an open ender essentially. And you turn over bet and reverse shove. When one front door completes, Mogo has one title. Like someone who doesn't have any credentials, I really don't expect him to be bluffing over here much. देखते हैं मोगो किससे कॉल करने की सोचता है यहाँ पर. मैं तो बोलता हूँ अर्जुन ऐसा करो, तुम चैट में तो हो ही, हाई रोलर भी खेल ही रहे होगे, मैं अपनी एक टेबल छुपाता हूँ. ओह ही वाज ब्लफिंग, ही हैड द एस टू डायमंड्स. एंड तुम्हारी एसएचआर की टेबल दिखाते हैं और तुम्हारा जब मन करे तो बता देना हैंड खत्म होते ही क्या था. वील ट्राई टू गेस आल्सो. विल ओपन दिस. आशीष भी होगा. कितने लोग, 3-4 लोग तो खेल रहे हैं इस चैट में एसएचआर, ये तो पक्की बात है. और 2-3 लोग तो बुलेट राजा भी बनने में कोई डर नहीं. क्वीन 8-5. Pretty disconnected. हाँ मतलब 8-5 suited is connected, but like yeah, this looks more connected than it is. I'd say so. He decides to call. Turn is a 10. We will go and part this part.
He's in the tank. अरे बालों की हालत तो देखो. What the hell, man? He decides to call. Rivers another 10. Stack to pot ratio is almost 1. All the draws brick. Can we put the main event video in stream rather than the main banner? We can. And we go all in. I somehow had a 10. I had ace 10 of diamonds. I was value betting on the turn as well. And sexy Mohan को ISO मारते हैं. And यहाँ पर क्या हुआ? Oh, isolated him. 3-way गया है क्या? Oh shit. I didn't expect 3-way. Okay. Top deck folds. Turns a jack. And I think on a jack I have to check. River's a queen. Sexy Mohan limp करके आया. So I probably, like, I don't expect to get called by a verse. Like, he probably has like 6-7 of clubs, which he's never going to call anyway. I hit my queen on the river. I have queen 10 of hearts. Like, but he probably has 6-7 of clubs. Oh, he has a king, huh? King 10 off. Lucky. So I was definitely getting called, but I did not expect him to have this hand. And यहाँ open and a 3-bet shove. Arjun gonna register a little late in the SHR. All right. Let us know. जब भी करो. The friend I was talking about, जिसके लिए PS5 खरीदने की सोच रहे हैं यूएस में, हमारा एक कॉलेज का ग्रुप है, वो मेरे वीडियो वहाँ प्रमोट कर रहा है. See, that's a true friend. वो भी क्लिकबेट हो गया शायद, क्योंकि उसे भी पोकर पर्सनालिटीज तो पता ही है ना, उसे भी लगा होगा भयंकर डैनियल लेग्रानो के साथ फोटो, डैनियल लेग्रानो से बात किया. I'll tell you the story. I think I've told this story before. मैं अपने दोस्त को रेल करने गया था एंड देयर पीपल जस्ट लाइंड अप डैनियल नेग्रानो की के साथ फोटो खिंचाने के लिए, बिकॉज ही वाज प्लेइंग सिमिलर टेबल क्लोज टू आवर टेबल एज वेल. एंड एट द एंड ऑफ डैनियल नेग्रानो इज कमिंग डाउन द लाइन एंड ही टेल्स मी इज लाइक फोटो, एंड आई एम लाइक व्हाई इज ही आस्किंग मी फॉर अ फोटो? एंड देन इट क्लिक्स. आई एम लाइक होली शिट, ही इज थिंकिंग आई एम हियर फॉर अ फोटो विद हिम. आई एम लाइक आई एम नॉट, बट yes I am. So I take out my camera and I got that clip photo. That's probably 2017 though. It's a long time ago. डैनियल नेग्रानो के सिर पे बाल नहीं थे, हमारे बाल काले थे. अपने पास, उसके पास चश्मे नहीं थे, उसने भी लेजिक करवा दिया था, मैंने भी अब लेजिक करवा लिया था. that's a long time ago. Lord Hendrix opens under the gun. यहाँ 66 बिग ब्लाइंड कैसे हो गया मैं? राइट, आई लॉस्ट द क्वीन 10 सूटेड हैंड. Okay, this is a fold, big blind में against another gun open and a 3-bet. हैंड के बाद बता दूँ मेरे पास यहाँ पर क्या था. I'm gonna call Ace King 8. Obviously big blind के लिए इतना अच्छा होता नहीं है यहाँ पर. फ्रेंजी थोड़े बहुत हैंड खेल रहा है ना, यहाँ पर चेक शव हो गया सीधे. Ace 10 वर्सेस एसेस. मैंने पॉकेट 8s फोल्ड किए थे एंड यहाँ पर भी फोल्ड. उज्जवल रीबाइज अगेन.
I'm 10 out of 187. कब होगा ये बैग? सपने देख रहे हैं बैग के। एक फिर लाइव स्ट्रीम करेंगे अगर संडे संडे तक। क्या हफ्ता हो जाएगा मुझे? नहीं, संडे तक हफ्ता तो नहीं हो पाएगा मेरे क्वारंटीन का। सिर्फ 6 दिन होंगे। सो मिनिमम आई एट डे 6 आई विल टेस्ट एंड सी इफ आई कम नेगेटिव। नाइन था यार मेरे पास यहाँ पर। 50K इन चिप्स हो गए हैं अपने पास मेन इवेंट में। इट्स गॉन स्मूथ टिल नाउ, स्पेशली विद द टेबल। ये जो 3 लोग मेरे आसपास हैं वो थोड़े अग्रेसिव हैं। ओ, जारवाद से मुझे एक और बंदा याद आया। सो आई एम श्योर आई ऑलवेज से हिज नेम रॉन्ग, सो दिस टाइम आई एम गोना एक्चुअली। हाँ, मैं मितुल मितुल करते रहता हूँ बट हिज नेम इज़ मिथुन महेश। या मैं हमेशा कंफ्यूज होता रहता हूँ। सो मिथुन के साथ मैं गोवा में खेला था रिसेंट टाइम्स में। सो दिस वाज द हाई रोलर इन अप्रैल एंड ही opens एंड Ritvik Khanna 3 bets in the small blind and Zarwan 4 bets cold force। यहाँ पर लगाने वाले हैं फ्लश 4 of spades से and Zarwan 4 bets and Mithun 5 bet shoves like jacks and, and for like 45 bigs or something like that. And when Mithun shoves and I'm looking at when it comes to Zarwan and Zarwan calls and I'm like Zarwan kings, you know. Um, oh, second. Why am I opening so big? So Zarwan, I think, is pretty nutted over there, and Mithun is like, नहीं नहीं ये all in जाता है। मैंने बोला ऑनलाइन मछली है, लाइव पोकर चल रहा है यहाँ पर। काफी okay, this is an interesting spot. Uh, I wish he had little less and I had a little better hand. Okay, this is a spot. Oh, perfect. अपना सही फोल्ड कर दिया। I had a smaller pair than eights, but Lord Hendricks ने वहाँ पर कॉल करके he shoved ace, like that's why I said like थोड़ा अच्छा hand। I had sixes. He shoved the ace 9 off, which is expected of him. He's pretty aggro, huh? Nice. Hendricks comes with another call. As in sixes भी वहाँ 30 के लिए जाना पड़ेगा क्या? Against an aggressive guy. But then I just don't understand what I'm doing great against. Like there are not many under pairs. Like I understand deuces, threes, fours, fives, and that's pretty much it. So 6 combos, 6 4s or 24 combos, and then some ace 5 suited, ace 4 suited. But then there's so many other things. Gold run ने अभी तक कुछ किया नहीं है, so we're just gonna continue and call. Okay, what am I seeing over here? Okay, मेरी कोई और टेबल शुरू हो गई कहीं पर। He bets 5.5 on this board. Okay, we call. Turn is an 8. This is table 1 or table 2? This is table 2. So मुझे उसको okay, he's betting again. Okay, I call and completes a flush as well as that. Okay, if he has ace king, does he still shove for value is one question. I think he should still, like,
Um, do I really expect him to be bluffing this long? I have ace queen with the ace of diamonds here. I probably should have just gone with it on the turn. Like, do I see any bluffs over here? 15 big blind बचानी है ना यहाँ पर. I was just playing my hand face up. Double gutty on the turn. Call. I have ace of diamonds, queen of spades. Yeah, I just don't expect bluffs over here. अब दिखा मत देना भाई ने. देखो, he was like, he clicked, he could show a bluff as well. Wow. I don't expect him, right? But ace queen is just too big to fold pre and then on the flop and on the turn. I was just playing it for face value. Straight up. Don't expect to be good over there, right? Even when the diamonds complete. King high diamonds, queen high diamonds. Pata nahi. That was kind of a weird hand. And table 2. Oh, it's working. Is it working? Oh, दोनों सेम ही टेबल आ गई हैं. इसलिए अब टेबल 2 को फिर से. Yeah, he's showing ace king everywhere, so ठीक है. It's not different tables yet. Okay, table 2. देखते हैं एक बार इसको फिर सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करता हूँ. Stream problems. Gotta be folding this. God run and that. दोनों टेबलों पे सेम ही टेबल दिख रही है. तो टेबल 2 विल ट्राई टू ब्रिंग द प्राइम. मैं वो ढूंढ रहा था. You know, like Jake Paul and KSI, they launched a drink called Prime. मैंने लगा देखते हैं ये यूट्यूबर्स क्या क्या लॉन्च कर रहे हैं. उनके वो चीज़ें भी ढूंढने के लिए. Let me see and figure. You can okay, we're gonna be raising. कितना defective है? Deep enough. Hey, 569 poker. कहाँ हो भाई? देख ही नहीं रहे हो. इतनी देर में पहुंचे हो यहाँ पर. ऐसे कैसे चलेगा? एंड ये देखो, तुम आए हो उसी समय मुझे लोग 3 बेट करने लगे हैं. लोगों को भी लगा टेबल पे मछली है, सीधे 3 बेट कर दो. स्पॉइल्ड पिला. आई विल नॉट बी कंटिन्यूइंग दिस हैंड अगेंस्ट दिस साइजिंग, स्पेशली 2.3. क्यों कोल्ड कॉल क्यों कर दिया यार? So now it called 7 bigs, so essentially 30 bigs जीतने के लिए 7. मतलब अपने हैंड भी मैं बता ही रहा हूँ, पर ठीक है. गेम्बल. It's live, bro. It's straight up live. There's a delay of barely like some seconds. Live call के पास. Okay, what do I go here? I have to go with this. कभी कभी मछली लकी हो जाता है. Lack chance. Okay. All right. You also have a queen. I also have a queen. Everyone has a queen. All right, let's do. Okay. Apparently straight flushes are out there. देखो मैं सही बात बताऊँ, लास्ट चांस की तो मर चुकी है. मैं फोल्ड करने वाला हूँ. स्पॉइल्ड पिला इज गोइंग टू शो एस किंग ऑफ हार्ट्स. Right? Yeah, Jack 5 of hearts. Obviously. Like, firstly, he's 3 bet Jack 5 of hearts. Just remember that. याद रखेंगे हम ये. And last chance on that river is like dead. Firstly, turn पे check raise with jacks. भगवान जाने. Do you believe I folded a queen over there? Do you believe?
I folded a queen over there. क्या यार ये बंदे ने जैक 5 सूटेड 3 बेट मार दिया है. Notes. कितने big blind affected them? 60. Probably he's doing this just because it's me, but ठीक है. Queen तो मैं turn पे घुसा देता. अब Queen 9 suited होता तो क्या? मेरे पास Queen 9 suited नहीं था sadly. पर अगर Queen fold किया होता तो मैं कितना सिको player हूँ ना कि because I know the guy behind always has a flush. And this guy obviously supposed to have a queen, which is beat now because the flush comes. मतलब मैं दिखाऊं अगर रिप्ले में तो क्या वहां पर मेरे पास भी क्वीन दिखेगी? किसी के पास क्वीन नहीं थी क्या? ऐसे थोड़ी होता है यार. इतनी बैटिंग री रेजिंग हो गई यार, किसी के पास क्वीन नहीं थी. इतने हीरो हीरो फोल्ड करता हूं मैं. मतलब डोंक लिम्प क्वीन क्वीन डोंक लिम्प क्या नाम है भाई इसका? ये प्लेयर ऑफ द वीक क्या होता है? अच्छा ऐसी चीजें भी हैं. ये पर्पल कैप क्या क्या नई चीजें ला रहा है भाई स्पार्टन. ये तो आईपीएल वाईपीएल के चीजें ला रहे हैं. 569 देखो पकड़ लिया मुझे. मेरे पास पेयर फ्लश ड्रॉ था यार. बट इफ आई थिंक I okay, the hands they play the same because I'll have to probably call queen 9 suited also pre because जो cold call आ गई है. So I think I have queen 9 suited. I have nines. I have the जो smaller card. यहाँ पर Let's go. Okay, हर्षी तो मुझे पता नहीं है कौन. But we've shoved and he's folded. Spoiled Pilar doesn't like to fold and he's reshoved. So guys, we have deuces. We flop a set. We turn quads. Thank you. Quads. बदले की भावना से आए थे हम बिल्कुल. There was so much of dead money over there and I just have to go through Harsito and I don't expect spoiled player to ever have ace king. But apparently the guy likes to 3-bet jack 5 suited but not ace king offsuit. तो क्या कर सकते हैं? वैल्यू है ना, मान के यही खेल सकते हैं. और man, these fields are such a huge minefield. क्या चल रहा है, कब चल रहा है, पता ही नहीं चलता है. All right, we haven't reached the 50 mark. Likes कैसे नहीं है 50 likes? मतलब रीशेयर थोड़ी करने को बोल रहा हूँ. मैं तो बोल रहा हूँ 50 लाइक दे दो. YouTube शायद खुद ही रेकमेंड कर देगा किसी को. And fold. So deuces work for us. Quads. That is Simran? Spoiled Pilla is Simran? I don't know. The Greek freak, Gokul Raj. Man, this nose starting to blow again. अच्छा अच्छा, जिसके भी क्वाड्स लगते हैं वो सिमरन को टीपीजी पे टैग मारता है. दिस इज न्यू थिंग दैट हैज हैपेंड ना बिहाइंड द सीन्स. मुझे पता नहीं चला. ऐसा है. चलो ये भी सही है. We've reached 47. I think the number we are going for today is 69 or 420. I'll like 420 is obviously legal in Vegas, in Nevada and California where I've been.
And it's so irritating because I don't do it, but walking in like Vegas streets, walking even inside the casino, walking in like Indian contingent पूरा smoking section में ही होता है, तो मुझे भी जाना ही पड़ जाता है मिलने के लिए. And like you end up getting like passively high and you're like this doesn't feel right. And पंचियों का सेट लगा लिए हैं. Spoiled पिला टिल्ट कर रहे हैं भैया. थैंक यू स्वैग स्वैग स्वैग. मजेदार. Hope everyone watching on Spartan socials is also liking it. हम अपनी चैट के लिए ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ अपने रीस्ट्रीम चैट में भी. अगर कोई कमेंट आ रहा है, I'm definitely watching that as well. And let's go over there. एंड देखो बिना अपना सेटअप के आई एम स्ट्रीमिंग दिस ऑफ अ लैपटॉप एंड ओबीएस भी चल रहा है, अपना चैट भी दिख रही है, अपने क्लाइंट भी चल रहा है, अपना डिस्कॉर्ड भी चल रहा है. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. तो मल्टीटास्किंग तो डेफिनेटली चल रही है. ओके ब्रेक आ गया क्या? ब्रेक आ गया लग रहा है. ओके वी हाउ डू हैव ओनली 54 बिग ब्लाइंड्स? कहाँ हारे हम यहाँ पर? अच्छा वो एस क्वीन हारे ना गॉड रन के अगेंस्ट. या आई विश आई had ace queen of diamonds. रिवर पे नॉट सोता. Okay, Jack 7 has become a mandatory open, huh? Jack 7. सही बात. मंदिर यहीं बनेगा, घर यहीं बसेगा. Okay, guys, I am just going to figure out some things in the background. 5 मिनट का ब्रेक है. You guys also take a break. And यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ चीज़ लाने की. So let's see if I'm able to figure that out. Thank you for coming though. सब लोग आके देख रहे हैं. It's nice. No, 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 no. Oh, music, music. We could definitely. Oh, all right. I have. अरे यार कहाँ है मेरे पास? किस चीज़ का सब्सक्रिप्शन था मेरे पास? कौन सी है वो लाइब्रेरी? Epidemic Music. I have a subscription for Epidemic Music. So why not play it? ऑडियो भी सुनाएंगे लोगों को. Epidemic Sounds royalty free music. बताओ भाई कौन से जॉनर सुननी है, क्या सुनना है? All right. Royalty free music. Sign in. और बताना कितनी आवाज़ आ रही है, कितनी आवाज़ नहीं आ रही है. Based on my channels, believe me when I say it. नाम है Dreamy Laid Back Beats. Okay, प्ले करके देखते हैं. बता देना अगर पसंद नहीं आया, चेंज कर लेंगे. बहुत है, पूरी अपने पास पूरी की पूरी लिस्ट है.
गाना तो खत्म हो गया और जो मैं कर रहा था वो हो नहीं पा रहा है. एक सेकेंड. ओके. यहाँ देखो लोगों को पता चल गया मैं यूएस में हूँ. सारे दोस्त लोग मैसेज कर रहे हैं क्या क्या ला सकता है हमारे लिए यूएस से. कमीने इंसान. वे बैक. म्यूजिक तेज लग रहा है ना तो म्यूजिक कम करते हैं. Okay, tables are up as well. All right. देखते हैं चैट का रिस्पॉन्स क्या है. हाँ. Yeah, I remember me saying Jack 7. This was against Gunjalmal, right? Mandir yahi basega, Jack 7. Like, they made a full house, I think. Yeah. Yep, good luck to the Indian contingent. Nit to donk से बच के. कौन है भाई Nit to donk? एक बार बताना ऑडियो ज़्यादा तेज तो नहीं सुनाई दे रहा है. मैं अपने लिए ही कम कर देता हूँ यहाँ पर. वॉल्यूम मिक्सर में जाके कोई तो कुछ बोलो. सही बात है. I was playing against you in one of the tournaments. You had queen 10 suited. I had queen on the first hand of the tourney. First hand of the tourney मैंने मजे ले लिए क्या. I re-raised you and then against you re-raised me. Then I just called and the flop was, oh shit man, sorry, king jack 3 8 9 and you made a straight on river. यार पहले हैंड लोग एसेस किंग्स के अलावा ऑनलाइन नहीं जाते ना, तो उससे थोड़े मजे कर सकते हैं हम स्पेकुलेटिव हैंड्स के साथ. मुझे लग रहा है मैंने मजे ले लिए प्रेम प्रकाश के साथ. And what the hell is this? Oh, he's 3-bet. I thought 50 big blind रख दी. So he did not put 50 big blind. So we'll 3-bet. 16. He folds. We have ace queen. He puts his king jack to good use. ये डालने लग रहने वाला गाना है क्या? नहीं नहीं. अरे वही तो है, वही है ब्रो. कहाँ से ये गाना ढूंढ लिया? वही है ब्रो. देखो डैनियल लेग्रानो भी यही इस्तेमाल करता है. If you watch Daniel Negreanu vlogs, this is one of the major songs, right? ओ मुझे बोला गया था निट टू डॉन्ग के साथ नहीं खेलना है और मैं उसी साथ खेलने में लगा हुआ हूँ. और क्या करें जब नट्स अपने पास है तो डर किस बात का. Nah, we did not have the nuts. We had bottom pair straight draw.
done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. ये तो बिल्कुल गाना इसको सेव कैसे करते हैं? All right, Lord Hendricks is up to 20 bigs. That is not great for us. That's great for him. एक सेकेंड पहले टेबल थोड़ी सेट करी जाए. Okay, this I will have to raise. I don't expect spoiled pillar to fold much. This will be too excessive. Against Sunish, we call. I had king 10 off. तो spoiled pillar के against तो सभी कुछ value हुआ. King high is probably value. सनीश के साथ हमने एक hand अभी खेला है. Now king 7-4, 2 spade board. Initial aggressor वो है, so like this board doesn't really hit me much. It's a good board for him for sure. यहाँ पर मैं कितना जा रहा हूँ? Yeah, I'm going this. He goes small, which is fine. I just call. Turn is the flush completing card. Queen. He decides to check. I'm gonna decide and bet. I don't have to bet big. यहाँ पर हमने 3 bet किया था, इसने call किया था. I wanna check this board. I had set of 7s by the way. Unfortunate. He bets quarter pot. Initial flat करके. Okay. I continue 1. Turn is a 5. Check. I do think I have enough traps over here. Like I'd still check call with like every overpair with the spade sometimes. So I don't have to over defend my ace king. Even though one spade is पता नहीं. म्यूजिक के बारे में क्या हाल चाल है ये बताओ. म्यूजिक कैसे रखना है? How many days have I quarantined? ये मॉन्स्टर स्टैक का डे 2 मंडे को था. तो मंडे के बाद आज हो चुका है यहाँ वेगस में थर्सडे. सो अभी 1 2 3 ही दिन हुए हैं. होली शिट, ओनली 3 days. मुझे कैसे लग रहा है पूरी दुनिया आर पार हो चुकी है. मुझे तो लग रहा है फंड रेजर स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि सस्ते कलर तो मैं लगाऊंगा नहीं. I'm like a bit skeptic about putting like artificial color. That is why I've never like had my hair colored or something. I just have a mental block probably. So अगर होगा तो सीधे ये स्पॉइल्ड पिला को अपने साथ खेलना है. खेलना है तो खेलते हैं ब्रो. Okay, he wants to play, he wins. Had king 7 suited. भाई ने सोचा भी नहीं इतना ज़्यादा, so I think king high was not good anymore. कहाँ है मेरा म्यूजिक? बजाओ.
Okay, there were only 5 songs which were playing over here. Refresh करें. Okay, let's play. Drizzle in the Hizzle नाम है इस गाने का. So let me just तेजस सालवी जब ये बोल ही रहे हो कॉपी वीडियो पर okay, so probably Tejas it's going to cost you like probably $1,200. मैं बाल कटाने गया था, that was like 120, so color would be probably 10 times expensive, right? So $1,200 भेज दो यार, मैं अपना पेटीएम दूं, क्या दूं? उससे सस्ते में तो नहीं हो पाएगा यार, या तो तुम इंतजार करो फिर वियतनाम घूमने का, वही हो पाएगा सस्ते में. ये भी सही बात है, स्पॉइल बिला खुद दे के जाएगा. We've already been streaming for a good 3.5 hours, and इतना थका भी नहीं मैं. Which is surprising. Who's gonna be the one who's gonna be liking it 50th? Who's gonna be the 50th one liking the video? 48 पहुंच चुके हैं. Great. Let's go 50. No, no. यार 60 बिग ब्लाइंड्स ही बची है अपने पास इसमें. सनीश का क्या हुआ? अच्छा, एस क्वीन वर्सेस एस किंग. Zarvan had ace king, right? Yeah. नहीं, मैं मजाक भी नहीं कर रहा ब्रो. इट्स प्रॉब्ली 1200. लाइक स्ट्रेट अप मेरे बगल में एक लड़का कुछ करवा रहा था, एंड वाज लाइक बेसिक थिंग ओनली, एंड दे आस्क्ड हिम फॉर लाइक $680 और समथिंग. तो यार यूएस में करवाना चाहते हो कि मैं अपने बाल हेयर कलर कराऊं, तो मतलब पैसे जब ऑफर कर दिए हो तो ऑल फंड्स अब देने पड़ेंगे ब्रो. माय नंबर इज 9035651486. प्लीज गूगल पे. ऑफिस का मतलब कॉर्पोरेट नंबर बताना चाहिए था उसको. कंपनी एक्सपेंसेस में मैं राइट ऑफ भी कर देता. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. एक आईओपीसी शिप करो, उसके बाद $1200 भेज देना. ठीक ठीक लगा लो ना. 1,00,000 तो हो गया यार. 80 के रेट से लगाओगे तो $1200 लाइक 96. तो 1,00,000 तो देने हैं यार. क्या है, कोई भी आईओपीसी है 2 लाख से नीचे तो कहीं देता ही नहीं होगा. लाइक जब 1100 के इवेंट में हमारे साथ जो फ्री टिकट जीता बंदा और 1,25,000 जीता, वो भी 4th आके, तो मतलब 1,00,000 तो मजाक में मिलता है आईओपीसी में फर्स्ट प्राइज. Okay, let's guess. What is the smallest first prize in IOPC? I'll have to say like कुछ 500 रुपए की टोर्नी होगी, सिंगल डे होगी, एंड उसमें मिल रहा होगा 1.6 lakhs. That has to be my guess. स्पार्टन वाले से पूछूंगा मैं एक बार, बताते हैं अगर वो. अच्छा, ग्रीक फ्रीक के अगेंस्ट. ओके, वी कॉल. ठीक ही बोर्ड है उसके लिए तो नहीं, अपने लिए. अच्छा, ये गोकुल राज है. I read a hand somewhere which was like him against Mohammad Azhar, and Mohammad Azhar had called like a 4 big blind shove, and our man goes into like a 7-minute tank and then shoves, and Mohammad Azhar is like folded 8 minutes ago when he shoved 7 minutes after 7 minutes tank, and he shows queens. I'm like,
What were you thinking 7 minutes, man? Like you were trying to meta game him कि bro मैं बहुत tough decision है, मैंने दुग्गियां शव कर दी हैं. Okay, whatever, Rockstar, whatever. I wasn't a fan of that hand. Like, I saw that hand somewhere or someone told me that hand. It's just weird. अच्छा पीएलओ में छोटा है अप टॉप. अच्छा पीएलओ में लाख ही मिलता है. जीत लो तेजस, वही जीत लो यार. 500 रुपए का मेरा करवा दो यार. अपने इंडिया में पेड़ के नीचे जितने में होता है हेयर कलर, उसका तुम स्पिन अप करके मुझे यूएस में हेयर कलर करवा दो. पीएलओ स्मॉलर फील्ड तो होती ही है, कम लोग खेलते हैं ना पीएलओ. Okay, we get 3 bets shoved and please someone reshove. ये बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं. So now I have to call 8 bigs. अबे यार, I don't even know what I'm supposed to do over here. I have 10-7 of clubs. Chat क्या करे? उज्जवल को तबाह कर दे. It has to be कितना? 15 big blind पड़ी हैं. 8. I don't know. I guess I call. He has 9s and we hit a 10 obviously. Thank you Ujjwal. Bye bye. 10-7 of clubs. We went clubbing. कितना रिवाई करता है ये आदमी, कितना अमीर है ये आदमी. मतलब honestly when I'm playing like Indian fields also, I prefer कभी कभी table change कर लो. Like is this like he doesn't care how the good or bad this table is it? Like I would probably want to change tables. Like bust हुए हो तो ठीक है, दूसरी टेबल में शुरू करते हैं, लक बदलने के लिए मे बी. But it's like I don't care, rebuy right now, right here, right now. देखो अर्जुन ने 3 सेकंड बाद कॉल बोला, इसीलिए 10 आया. ये कौन है? डोंक लिम शप. एक बार लीडर बोर्ड भी देखूं मैं जरा स्पार्टन का. आईओपीसी के लीडर बोर्ड में क्या मचल चल रही है. कहाँ है कहाँ है कहाँ है? सो लीडर बोर्ड डेली लीडर बोर्ड और सीरीज लीडर बोर्ड. सीरीज लीडर बोर्ड में टॉप 10 चल रहा है माफिया गेमिंग. आई हैव नो क्लू हु दिस. अरे देखो बजेंगा यहाँ 4th में, क्या बात है. बीबी पाए में जीप नाम सुना हुआ है, खेला हुआ हूँ. पिछले लीडर बोर्ड में भी इसने अच्छा किया था. माफिया गेमिंग पता नहीं कौन है. लकी गाय डॉलर, ये लक्ष्य नहीं. Oh, भानु इज माफिया. अरे भानु के साथ भानु इज लीडर बोर्ड टॉप अगेन. सिक्को ना. मैं भानु के साथ गोवा में बैठा हुआ था तो आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम बिकॉज मोस्टली यू रीड द नेम राइट, भानु प्रकाश वॉन एंड ये सब. तो मैं ऐसे ही अपने साथ टेबल पे बैठा हुआ है आदमी, तो मैं बात करने लग गया. कैसे उठाते हैं ये के, वो भी किंग्स के अगेंस्ट. लॉर्ड हेंड्रिक्स ट्रिपल्स अप. And I'm talking to him and he's like, yeah, I play leaderboards. And I'm like, हाँ कौन leaderboard? एक ही तो आदमी है जो leaderboard खेलता है, तुम कौन हो? And then he's like, वो एक ही आदमी तो मैं ही हूँ ना. And wow, just the 40 bigs, huh? What a hero. यार अर्जुन यहाँ बताओ, यहाँ रेंज क्या होती है 40 बिग ब्लाइंड की? मतलब दुग्गियां, तिग्गियां, चौगियां, पंजियां, छग्गियां, एंड देन ब्रॉडवेज के कॉम्बोज बताओ, एसेक्स के कॉम्बोज बताओ. इतना ज्यादा रिस्की फॉर द बिस्किट किस हैंड से कर रहे हैं?
यस प्रणव वेयर हियर 40 विलाइन कब से रखने लग गए यादव जी. मैं भी यार ये क्या सीन चल रहा है. ओके वी 4 bet. So if I make it this and he 14, he can shove for 9 bigs. Yeah. So I can make it this and then action reopens if this guy shoves. But he decides to fold. Okay, I would have been in a tough spot. Like my 4 bet was pretty much like in that scenario, under the gun versus under the gun +1. The only thing which was working for me was probably this, that he was just playing against this guy. I had jacks, but it's a tough spot, right? And in my opinion, I had 3 bet to 3 bet fold. Sorry, pseudo 4 bet to 4 bet fold, 60 big blinds effective. Because when he would open 3 bet 4 bet, when he 5 bet rips under the gun +1, like how good are my jacks doing? And I'm losing only quarter of my chips. अच्छा 10 टेबल खेल रहा है, रेंज वेंज मत पूछो अभी. सही बात है भाई, ये भी सही है. ये आया बोर्ड 956. पर तुम तो 25 टेबल खेलने वाले आदमी हो यार, क्या ये. विनय राजपाल नाम सुना है. बीप बीप. That's what I said. I've definitely. Okay man, we gotta go. Do we अपने ठीक है, अगर ऐसा करना ही है ना तो फिर लो 1/6. मैं तो शव करने ही सोच रहा था, पर तिग्गियां डाल दी भाई ने. हमने इंड्यूस करा दिया उसे. अपने पास क्वींस है. क्या इंड्यूस हो गया लौंडा. नहीं, to be really honest, when we started playing, see the small stakes games are easier and वहाँ standard spots आते हैं. मतलब लोग इतना आउट ऑफ लाइन नहीं जा रहे हैं, तो यू एंड अप मल्टी टेबलिंग अ लॉट. हम लोग जब स्टार्ट किए होंगे तो हम लोग सब लोग मतलब प्रोग्रेस करके 12 टेबल तो पहुंच ही गए थे. एंड नॉट इवन इन अ लॉट ऑफ टाइम. एक साल में सब लोग 12 टेबल खेल रहे थे, क्योंकि द गेम्स वी वर प्लेइंग वर यूज्ड टू प्ले प्रीटी स्टैंडर्ड फेस अप. सिडनगोस खेलते थे हम लोग. क्वीन एट 5 या प्रीटी डिस्कनेक्टेड बोर्ड. क्वार्टर कितना होता है? 6.7, 3.3, 1.7. ओ निट्टू डोंग के साथ नहीं खेलना था. कौन है निट्टू डोंग भाई? मतलब why would you raise over here? Like what are you raising over here? Okay, a queen, great. लो भैया, अब क्वीन का क्या करोगे? अब तो इक्के मेरी रेंज में है. अब तुम चेक करोगे यहाँ पर. कर लो फिर चेक. यहाँ पर अगर मैं बेट करता हूँ तो फिर मेक ही साइज है. Alright, we're all in. 19.2 into 17.5, essentially representing ace 5, ace 8. Probably not ace queen. Maybe ace queen also. Yes, queen 10. We have ace 5. That's what he said. मतलब मैं अपना हैंड बता दिया, तब भी मुझे मतलब फोल्ड नहीं कर रहे हो. तुम्हारा हैंड मुझे पता है, तब भी मतलब कैसे आदमी लोग हैं. मतलब मैं स्ट्रीम में बता रहा हूँ भैया मेरे पास वहां पर 2 पेयर हैं. लोग यकीन ही नहीं करते. आदमी बता रहा है वहां पर सीधा सीधा. ओ मेरे पास 95 बिग ब्लाइंड्स हो गए, मुझे पता भी नहीं चला. मैंने क्या किया यहाँ पर जादू. क्राउन में अपने पास 95 बिग ब्लाइंड्स है, मैंने क्या किया.
वे क्रूजिंग लाइक 6 out of 179 ब्रो, स्ट्रीम करते हुए अपना आराम से अंग्रेजी एक्सेंट मार मार के। क्या किया मैंने यहाँ पर जादू? अच्छा, क्वींस के साथ मैंने बंदे को इंड्यूस करवा दिया था ना। फोल्डेड अ प्रीटी डिसेंट हैंड आल्सो राइट नाउ इन द प्राइम। एंड निट टू डोंग को क्या मैंने टिल्ट करवा दिया है क्या? पावर स्वेल इससे ओह फक, ही फोल्डेड। मतलब पूरा हैंड ही वो मेरे कहने पे खेला। अच्छा, फ्लॉप रेस किया, वो क्वीन है, टर्न एस आ गया, आप चेक बैक करोगे और रिवर ये अब कॉल ऑफ कर दोगे मेरे दो पेयर के अगेंस्ट। ओके, थैंक यू। Our next like counter is 69. We've already reached 52. It's going great. अपना मेन इवेंट में चिप लीड बैक करेंगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। King Queen versus sixes. अच्छा, मैं एक और चीज बताता हूँ निशांत के साथ यहाँ वेगस में रहने में। बेचारा शाकाहारी आदमी, तुमने व्लॉग में देखा ही था कितना बैग भर के प्यार भेजा है घर वालों ने। इतने दिनों से ना मैं उसी का सामान खाए जा रहा हूँ, स्नैक्स, नमकीन, बिस्किट्स। यहाँ पर बेचारे ने एक पैकेट खोल रखा था, वो पैकेट मैंने बोला ब्रो देखते हैं, शेयर तो मैं कर नहीं सकता, कोविड हो रहा है, तो मैं पूरा ही रख लेता हूँ। तो उसकी कुकीज वुकीज सब मैं ही खाए जा रहा हूँ। ओके, अगर लॉन्ड हेंड्रिक्स से अगेंस्ट कॉल चेक, सोचना भी नहीं लॉन्ड ने, सीधे बेट कॉल, टर्न पंजी चेक। अब देख रहा हूँ आएगा 6 बिग ब्लाइंड बेट। 6 बिग ब्लाइंड नहीं आया यहाँ पर। ब्लफ्स क्या है मेरे पास? बहुत ही कम है एक्चुअली। मैं एक्चुअली जैक 10 यहाँ ब्लफ भी करूंगा क्या? मुझे नहीं लगता। तो एसी बेट करना है और क्या। दो भैया अपनी क्वीन से वैल्यू था मेरे पास यार, एस 10 स्पेड्स था। Zarvan opens, we 3 bet. Zarvan the millionaire, we had king queen off. क्रूज कंट्रोल 4 out of 174। इतना क्रूज कंट्रोल तो कभी नहीं चला मेरा इसमें। टच वुड, पूरी टेबल ही वुड की है। कितना टाइम हो रहा है यहाँ? सुबह का लोकल टाइम 9:30। निशान तो नहीं उठने वाला अभी, कल रात आया था लेट। पीएलओ खेल के आया था, अगर आएगा पूछूंगा मैं उसे क्या चल रहा है। मैं एक और चीज बताता हूँ मालूम है। सो वन ऑफ इंटर्स फ्रेंड was playing the Venetian event, and he must have met Donka Sushi, Aditya Sushant, during one of the breaks. So then he tested for COVID and he found himself COVID positive. So he messaged and must have DM'd Inter कि सुशी को बता देना भाई मेरे को कोविड है, मेरे साथ वो हैंग आउट कर रहा था। एंड सुशी इज लाइक डजंट गिव अ फक। अगले दिन लौंडा मेरे पास है, मतलब दूर जा साले। एंड 2 दिन बाद मुझे कोविड हो गया, मतलब घपला।
एंड देन ही इज लाइक नहीं नहीं अब तो फिस्ट बम्प करेंगे ही मैंने बोला, आराम से। म्यूजिक कहाँ चले जाता है इतनी जल्दी जल्दी? अच्छा 5 ही सॉन्ग्स है, मैंने फीचर म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ मैं। ऐसा हो रहा है क्या? ब्राउज पे चलते हैं। ओके गाइस, 5 बोल आंटी बोल हैज रेज्ड। ओके, आई गिव यू 5 ऑप्शंस। ओल्ड स्कूल हाई, ओल्ड स्कूल हिप हॉप, बीट्स, सॉफ्ट हाउस, इलेक्ट्रिक और बीट्स। अच्छा बीट्स तो 2 बार आ गया। तो 4 ऑप्शन है, ओल्ड स्कूल, बीट्स, सॉफ्ट हाउस या इलेक्ट्रिक। इन 4 में से क्या बजना चाहिए? उस जॉनर में हम घुसने वाले हैं। ओल्ड स्कूल, बीट्स, सॉफ्ट हाउस और इलेक्ट्रिक। मुझे खुद नहीं पता सॉफ्ट हाउस होता क्या है। 944 अगेंस्ट अंडर द गन। ओके जारू। Yeah, turn is a good card for him. Although I do also have some ace X's. Mm. Hmm. The double check. Yeah, he bet flop small, so I actually think he only has like king high or something. इतना strong hand लग नहीं रहा मुझे. He calls. I have ace queen. Let's see what he has. Tens. देखते हैं. He had king 9 suited. I think we got max value in my opinion. I don't think he's calling more. बताओ फिर क्या म्यूजिक हम सुन रहे हैं? गगन जुनेजा, हाउ गुड डू यू रन? स्किल तो दिखा, इतनी स्किल तो दिखाई। वर्स्ट हैंड से मैक्स वैल्यू ने नहीं, ऐसे ऐसे दिखाना होता है। ये देखो ज्योति रंजन नायक देशद्रोही क्या बोल रहे हैं। नेग्रानो का व्लॉग पहले देखेंगे फिर वापस आएंगे। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। देखो यार देखो, कंटेंट देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके वी आर गोइंग रॉक। रॉक का है? अच्छा रॉक का जॉनर ही ढूंढना पड़ेगा तुम्हारे लिए अलग से। तुमने चॉइसेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुमने एक्स्ट्रा मार्कशीट लेके अलग से लिख दिया आंसर। रॉक की प्लेलिस्ट। यार ये 70s रॉक प्ले करते हैं। मुझे शायद ज़्यादा पसंद नहीं है रॉक। आज फिर और पता चल जाएगा। थैंक यू साइंट्स, थैंक यू थैंक यू। देखो म्यूजिक भी रॉक कर रहा है तो। कौन जानता था कोविड में इतने मजे ले सकते हो। और ये निशांत की कुकीज तो और अच्छी हैं। ओ एस क्वीन वर्सेस एस क्वीन हार गया जारवान।
क्या बोल रहे हो सेंट जेडी भाई? वेगस स्ट्रीम जा रगे आप अभी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। वेगस स्ट्रीम इसलिए हो रही है क्योंकि अपने को कोविड हो रखा है, घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, घर पे इंटरनेट है अच्छा, तो सोचा कर लेते हैं एक स्ट्रीम। मोस्टली आई विल बी स्ट्रीमिंग अ फ्यू डेज। अब कुछ करने को है नहीं तो घर में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, स्ट्रीम करेंगे, आईओपीसी जीतेंगे। कम से कम दर्द थोड़ा कम तो होगा। $100,000 यहाँ आईओपीसी में 70 लाख रुपए जीत जाएंगे मेन इवेंट जीत के, तो दर्द कम तो होगा वेगस आके भी, मतलब। बताना है अगर म्यूजिक काफी लाउड हो रहा है तो आई विल रिड्यूस इट, मुझे तो थोड़ा बढ़ाना पड़ा। और जॉनर चेंज करना है तो वो भी बता देना। कब है भाई बैग एंड टैग? अपने पास 87 के चिप्स हो गई है मुझे लगता है, जब रनिंग फॉर 3 hours 7 minutes. Raid registration ends in 1 hour, so probably day ends in 22 levels. 22 is 800 1600. अभी क्या चल रहा है? 800 1600 इतना दूर भी नहीं है। 501 के तो चल ही रहा है। यहाँ पर यही चलते हैं। He calls, huh? Interesting. Queen 7 overcall. Wow. Like he should never convert a 7 into a bluff also. Showdown value है, क्या डर है? बोल आंटी बोल के लिए अच्छा रन आउट आया. He can have tens, he can have jacks, he can have ace king. Does he ever have? I don't think so. So he's supposed to have a queen only here. मैं अपना हैंड सीधे ही सोच रहा हूँ, but like it's one of them can be watching, so I should not. Yeah, like Sarwan, do you straight up have quads over here? I have nines. I fold. You can never have ace king, in my opinion. Small bet के against है क्या? But when a bet and a call has happened and you're drawing dead against a queen, do you overcall? Maybe you do. Day end on 27 level. 19 तो चल ही रहा है. 27 नहीं यार, 22nd बोल रहे थे यहाँ पर. अच्छा, रीबाय पीरियड एंड्स ऑन 22nd. You're right. तो अभी तो बहुत बचा है, अभी तो बहुत खेलना पड़ेगा. I think maybe I should bet turn also, but like this guy, turn 10, how does it help someone? Turn 10 doesn't help someone. Either he has a queen or he has a 7. Both of them don't raise, in my opinion. Like raising tendency is lesser than calling tendency on the turn, right? Even when he has a queen, when he has a 7, when he even wants to raise a queen. Maybe I could have stabbed turn again. पता नहीं क्या हो रहा है. ये रॉक जॉनर चेंज करने का मन कर रहा है मुझे. ये क्या म्यूजिक है? अगला गाना मुझे ये नहीं पसंद आया.
मैं रॉक म्यूजिक वाला ही बंदा कभी रहा नहीं हूँ, आज बज रहा है, बस बज रहा है। अरे भाई हम इतनी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स अपने को होती ही नहीं है कि देखना पड़े कि लेट रेज कब खत्म हो रहा है या डे 2 कब हो रहा है। ओके, गॉट अ स्नीज। एक बार ना पहले देख लेता हूँ चड्डा के बाद ज्यादा चिप्स तो नहीं है ना, उसके बाद थोड़ी लेने आता हूँ। क्या बोल रहे थे चड्डा है? तुम बस देखो रिवाइव पीरियड कितना बचा हुआ है, तुम्हें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिप्स चिप्स कहाँ होगी तुम्हारे पास? ओके, अपने ने किंग क्वीन सूटेड रेस किया था, कुछ एक्शन नहीं मिला था। टा 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 ना 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 ना। And he calls, and the flop is 10-9-3. सिक्स आया था तो बच गए। Check. तुम लोग बोल रहे हो बात क्यों नहीं कर रहा हो, क्योंकि मैं कुछ चीज कर रहा था साइड में। होपफुली यू गाइस गेट टू सी इट ड्यूरिंग नेक्स्ट ब्रेक। एक ब्रेक तो लेना पड़ेगा, पिछले 2 ब्रेक में मैं यहीं बैठा हुआ था। भाग मत जाना यहाँ से, है इसीलिए मुझे बेकार लगता है ब्रेक लेना, बिकॉज एज सून एज यू लीव। लिखा तो है इन्फो में यूएस में ऑनलाइन पोकर अलाउड है। सो देयर आर सो मेनी लेट्स से साइट्स इन द
essentially I'm not playing in the US jurisdiction. ऐसा तो नहीं है कि मैं US के players के साथ खेल रहा हूँ. I'm playing a close jurisdiction of India. I'm playing it from somewhere else. I pay my taxes in India. I'm an Indian resident. So I don't think it's me breaking laws. अगर मैं US player pool के साथ खेलता तो probably yes. एटी बिग ब्लाइंड्स हो गई. अब गंदा लग रहा है मुझे. कितने कितने हैं लोगों के पास? मुंह पे तो अब नींद भी बोल रहे हैं. Strangler spoiled pillar has called Greek freak is folded. ऐसे कैसे हो गया? On this board I think I get to bet. क्या sizing bet कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ, डर भी किससे रहा हूँ मैं. अपने यहाँ से इस queen था. And to be honest, I wasn't expecting any calls over there. And Strangler 3 bets, small sizing also. Donk limp probably looks like a snap call, probably like ace queen or something. I am gonna go all in. Strangler calls, he has ace 3 off obviously and turns an ace. I have jacks, which obviously are a shit hand, so have to lose. कैसे कैसे करते हैं लोग भाई इतना कॉन्फिडेंस अंडर द गन को 3 bet करके. Well played sir, well played. Your money, your rules. Yeah, you can't play on a lot of sites from the US. सही बात. That was pretty sick, huh? He 3 bet and another gun opened small. Then another gun flattered. Probably had like a hand like ace queen, ace 10, something like that. And then he called off a shove because, well, it's only money. And we will be going in all over and over here. And he has kings and we have eights. And he flops turn squads. So he will decide to win the pot. देखता हूँ मैं कितनी देर में ब्रेक अभी आने ही वाला है ना. So maybe I'll rejoin this after the break. Yep. So let's go back. Let's show that card to hide and table to hide. So let's go and transition into this. Close that shit. Open music. अगला गाना बजाओ यार. अब इसके लिए भी नहीं, जॉनर चेंज करेंगे. Discover and relaxing soft house music. All right. ना ये तो ज़्यादा ही सॉफ्ट हाउस म्यूजिक हो रहा है. ओह SHR ऑन हो गई है. तो SHR की मुझे एक टेबल तो देखनी है यार. अपने पास तो बैलेंस ही नहीं है SHR खेलने के लायक.
50,000 पड़ा हुआ है, 1,05,000 की तो buyin है. चलो, या तो you guys can tell me the SHR table which you want to see और I'll find one out. 82,000 वाली है, लेकिन उसके साथ सिर्फ लगोटिया एक जो प्लूरियस भी है. प्लूरिबस ये वाली टेबल मजेदार हो सकती है. वॉच टेबल, लेट्स गो. मतलब आई थिंक आई एम मोर ऑफ अ पोकर फैन देन अ पोकर प्लेयर. मुझे पोकर देखना भी ज़्यादा पसंद आता है. लाइक आई कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड मे बी दैट्स व्हाई आई एम नॉट अ गुड प्लेयर. देखते हैं ये वाली टेबल, देखते हैं टेबल 2. Like in all intentions, I never wanted to become the best player in poker. I just wanted to make a lot of money. You don't have to be the best player to make the most money. Like it's more likely if you're the best player, you make more money. But there are aces versus nines. अपने ने threes fold करे थे. Good fold threes. And बजिंगा आ गया अपनी टेबल पे. हराम ज़्यादा. कितने ये पट्टे कितने बांध रखे हैं. बाप रे बाप. IOPC FTS ऐसी की तैसी इनकी. मुझे ही देने आए हैं. नहीं अभी बोला तो मैं इग्नोर ही क्या कर दिया. कहाँ चैट में क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है क्या. इग्नोर ही कर दिया. I open 10-9 winning that. बजिंगा आ गया है. बजिंगा को ही खा जाएंगे. Table 2 Arjun the Beast. This is the table I want to show. So show and transition. Exactly. So ये वाली टेबल देखो. टिट्टू ताऊजी बैठा है. ये किड he's tight solid, right Manish? I think so. For the most part, maybe deep in the tourney, like final 3 tables he opens up more. Join high stakes cash tables. Insane action in the lobby. ये देखो आग लगाने आ गए हो. देखते हैं क्या चल रहा है आज. अभी मैं ऐसे उठाता हूँ निशांत को. 1K 2K वो स्टार्ट करेगा तुम्हारे लिए. वहां चल रहा है क्या कुछ. देखते हैं. निशांत को कल भी तो जब वो 1K 2K खेल रहा था, मैंने बोला ब्रो मेरी वजह से कुछ अंदर बाहर मत कर देना. अच्छा नासा खेल रहा है. हाँ सॉडी KRD 10 शरद ही है क्या यहाँ पर. स्पार्टन पे भी PLO में बैठा है. 2K 4K. होली शिट सिक. ही प्लेज हाई स्टिक्स PLO ना. गुड फॉर हिम. चिंपू बैठा है 1K 2K में. नाइस. हाई स्टेक्स PLO टेबल देखनी है या हाई स्टेक्स ये देखना है टूर्नामेंट. बता दो भाई जनता. अब देखो अर्जुन को कैसे बस्ट करते हैं अभी बता दूं मैं. बिल्कुल बिल्कुल. ये देखो ऐसे करते हैं कॉल. उसके बाद अर्जुन ट्रैप हो गए. अब अर्जुन जब ट्रैप हो गए तो वो तो सोचता है ना बेट करके जीत जाएगा. तो कैसे जीतेगा बेट करके ब्रो. मतलब यहाँ काहे लो आ जाओ. हाँ ऐसी की तैसी बोल रहा था तुम ट्रैप हो गए हो. आखिरी हैंड बस्ट होते हुए जाओगे अर्जुन. की शर्म करो यार. लेवलिंग होने वाली है. चौकी तो मेरे पास ही है ब्रो. तो मतलब क्या डर है. बोर्ड गंदे से गंदा हो जा रहा है. आखिरी में कितना थोड़ा बड़ा बेट करते हैं यार. आखिरी में सभी तो लेना है तुमसे. आ जाओ चढ़ा जी. छुट्टी करते हैं तुम्हारे यार. चढ़ा जी मानेंगे बात नहीं मानेंगे. चढ़ा जी का कॉल देखो. कॉल पे कॉल चले जा रहे हैं यहां पर. अच्छा चढ़ा जी अब पता नहीं यार. देख लेते हैं यार क्या होगा. चड्डा जी के साथ ऑल इन.
चोड़ा जी चैट में हो ना? क्या एस ऑफ हार्ट्स है क्या? ओ सिक ब्रो। एस 5 है क्या? ओ सिकर ब्रो। मैंने बोला ही था, मतलब क्या क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर? ओ मैन, लाइव टेल्स दे रहा हूँ क्या मैं? बसिंगा। ये स्लो रोल कर रहा होगा 8-9 के साथ तो बहुत दर्द होगा मुझे। जब ब्रेक हो गया है, कितना टाइम है? इतना टाइम कैसे मिलता है मछलियों को सोचने के लिए? एंड ही इज टैंकिंग, पूरा फोकस कर रहा है स्ट्रीम पे देखने के लिए, लाइव टेल्स उठाने के लिए। एंड ही इज टैंकिंग। इतना टैंक काहे कर रहे हो? एस 5 ही है क्या? ऐसे ही लग रहा है एस 5 है। एस 5 टर्न पे क्यों कॉल करेगा अनलेस इट्स हार्ट्स? सोच रहे हो फोल्ड कर दिया। चड्डा जी चौगी नहीं थी अपने पास, इतना बता देंगे चड्डा जी, चौगी नहीं थी। सो गाइस व्हाट डू यू थिंक आई हैड? डू थिंक अबाउट इट ड्यूरिंग द ब्रेक एंड आई विल शो इट आफ्टर द ब्रेक। तब तक थोड़े ये एड रील्स देख लो यार, मजेदार एड रील्स बनाई है। शो द हैंड, स्ट्रीम पे आ जाओ भाई, स्ट्रीम पे देखो, स्ट्रीम पे देखो ब्रेक के बाद। गेस भी कर लेना। ओके सो आई एम जस्ट गोना गो टेक अ ब्रेक एक्चुअली। एंड म्यूजिक कैसे रोकते थे? म्यूजिक मैं रोक दूंगा। एंड ओह ये क्या हो गया? ओह ये तो गड़बड़ हो रही है। I see what's happening. एक सेकेंड बॉयज। No. Need my break. Just give me 1 second. Na. Whoa. This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly.
we've got to show the hand, right? मैं बता दूंगा तो मानोगे नहीं क्या? मतलब मुझे दिखाना ही पड़ेगा. वैल्यू था, but was not a straight. Yeah. वैल्यू था, एक्चुअली वैल्यू था. ओके, कैसे दिखाते हैं? रिप्ले कैसे खोलते हैं? मे बी आई कैन शो इट ओवर हियर एज वेल, राइट? यहाँ पर हैंड्स दिखते थे पहले, नहीं दिखते थे क्या? सो आई हैड 6-7. आई फ्लॉप्ड top pair gutter, turn 2 pair. I think the only hand which beats me somehow is like either a 4, which is like ace 4 suited or something of that sorts, or ace 5 suited, which is only one combo, which is ace 5 of hearts, because he does not. So maybe I got too greedy on the river. Blocker मारना चाहिए था क्या river पे? पेड हो जाता. I had 6-7 offsuit. 6-6 नहीं आया, 6-7. कहाँ से दिखाते हैं? चलो रिप्ले खोलते हैं पहले. मैं ग्रीडी हो गया शायद रिवर पे. ब्लॉक मार देने चाहिए थी. ब्लॉक भी क्यों मारूंगा? लाइक मेरे को वहाँ पर ब्लॉक मारने की क्यों जरूरत है? आई डोंट थिंक सो. मतलब पूरा ही मेरे पास ब्लफ्स क्या है? मिस हार्ट्स, मिस हार्ट्स लाइक 8-10 ऑफ हार्ट्स, मे बी 5-8 ऑफ हार्ट्स. हाँ ठीक ही है फिर. तो कैसे दिखता है ये रिप्ले? टेबल टू रिप्ले पे जाके दिखाते हैं. हैंड हिस्ट्री होगा ना? ओके, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया. And the hand we were talking about is Arjun says ace 9 HH. क्यों रिवर पे मेरे पे टॉप पेयर को भी मैं तेरे टेंस के अगेंस्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ क्या? तू पे ऑफ कहाँ करता है यार मुझे अर्जुन? मैं तो यहाँ पर सोच रहा था तेरे पास सिक्का निकल जाए. कहाँ है मेरा रिप्ले? या सो या दिस इज द हैंड. 6-7 ऑफ. दिख गया ना अब? ओ माय फकिंग गुडनेस, सीरियसली. अबे यार, हाउ डज दिस थिंग हैपन टू मी? सो टिल्टिंग. अबे this is just ridiculous. I don't even want to say anything. Probably the board even helps me in this way. But you guys know what happened, right? I closed the replayer, and because of that, my main window became the secondary window as well, and my hand got displayed. So I have black queens. I'm going to be folding, but yeah. Arjun ने ये extra edge ले लिया क्या? चलो यहाँ हाई रोलर में क्या चल रहा है? टीटू ताऊजी, द किड, जिला स्टार कौन है? नाम सुना लग रखा है. ओह एक्चुअली इट डिड नॉट कन्वर्ट. मैं ट्रांजिशन में कन्वर्ट हो चुका था वो, बट मे बी ओवर देयर इट डिड नॉट. पता नहीं. बट आई फोल्डेड क्वींस ओवर देयर when the flush completed, the straight completed, and the ace was on the turn. Black queens. He donked on the flop and ले गए वहां से. नहीं देखा तुमने? चलो ये भी सही है. Don't stop the music. कहाँ है? Browse. Let's go moods. Let's go dreamy mood. या laid back mood ज़्यादा सही रहेगा. और quirky is better. Let's play. And Arjun loses one hand. Open 3-bet shove. High 1-2-3.
lot of effort was taken in making this ID, man. 5 1 2 3 8 versus 9s and 8 is bye bye. अच्छा हाँ, अपना भी तो लेट रजिस्टर कर रहे थे, प्राइम में वापस घुस रहे हैं ना. प्राइम में घुस रहे हैं तो SHR बंद करना पड़ेगा ना. SHR बैकग्राउंड में रख देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, कुछ अच्छा हैंड हुआ तो पता चलेगा. कम ऑन द बॉयज. मतलब ये टेबल टफ से टफ हो ही जा रही है ना. सभी रेक्स बैठे हैं इस टेबल पे, मजाक चल रहा है यहाँ पर. मैं भी चॉप कर लेता अपने S5 के साथ यहाँ पर. तो कहाँ गया अपना प्राइम 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 प्राइम. SHR बंद. थर्सडे प्राइम खेलना है क्या मुझे प्राइम. लेट रजिस्ट्रेशन अभी 1.5 घंटा है. नहीं, अब हम बैग एंड टैग करेंगे. थकान लग रही है यार, सिंपल एज दैट. एंड नर्ड गाय शव्स, वी ऑब्वियसली कॉल. कर दो यार शव, कर दो. आई हैव 10 6 of clubs. He has 10 jack off, but we skill game, man, skill game. I run good against this guy. To be honest, I run good against this guy. But this guy is too rich. He's too good. He makes a lot of money, so he rebuys. ऐसा गुड रन मेरा किसी मतलब WSOP मेन में भी आ जाए. लाइक आई डोंट थिंक आई हैव एवर बीन एट रिस्क. एंड जस्ट चिप बिल्डिंग चिप बिल्डिंग चिप बिल्डिंग. 100 बिग ब्लाइंड वापस. दिस इज कॉल्ड द स्ट्रीम रन गुड. मेरा म्यूजिक कहाँ भाग जाता है, मुझे ये समझाओ. कैसे ऑटो प्ले नहीं हो रहा है, हो रहा है. पर अब ये क्वर्की म्यूजिक भी नहीं पसंद आ रहा है. लेट्स गो यूफोरिक. ऑल राइट, Santa Claus is coming to town. ये 50-50 बिग ब्लाइंड रख देते हैं यार ये लौंडे लोग एस किंग के साथ, और होल्ड भी कर जाते हैं, पता नहीं कैसे. ओ कर दे क्या वो विशाल ओझा, कर दे. मुझे लग रहा है कर देना चाहिए. लेट्स डू इट ब्रो. कहाँ है यूट्यूब. यूट्यूब wait once. शुरू हो गया है. कैसे झेलता है यार ये पैड्स. एक्चुअली पैड्स ने परसों दिखा था. मैं उसके साथ परसों नहीं मतलब संडे को प्रोबेबली मैं उसके सामने गया. मैं बोला कम ऑन द बॉयज, ऐसे देखा. उसके बाद चले गया. मैंने बोला अच्छा बिजी है भाई, स्ट्रीम प्रीम लौंडे की. 10 घंटे के लिए नहीं झेल पाएंगे ना इसे. थोड़ी देर झेल लेते हैं. ये कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है नहीं है. ओके, ऑन किंग जैक 10 वी विल बी फोल्डिंग. नहीं हो पाएगा अपने से. चलो
Okay, this table's become pretty rough, right? यहाँ पर ज़ारवान, नर्ड गाय, उज्जवल, this guy, अर्जुन, पता नहीं ये कौन है. Zarwan has more chips. Do you want to open bigger? ठीक है. मैं वाली पोजीशन इतना ओपन करता नहीं हूँ तो ठीक है, बड़ा ही करते हैं Zarwan पे. बजींगा. रेंज मर्ज कौन है? मनोज पेंटाकोटा. ये पीएल प्लेयर था ना? ठीक है. देखो अर्जुन सीखता नहीं है एक बारी में सीख जाए तो फोल्ड वोल्ड करना सीख जाए. यहाँ 3 बेट करके आ रहा है. ठीक है ब्रो, आई कॉल और मे बी एंड एस क्वीन 3 which is obviously better for you man. Go ahead. तुम्हारा कचरा सा एस लग गया क्या? And 5.34 fair price. We fold. हरामज़ादा. मुझे स्ट्रेट अप वैल्यू हैंड को ब्लफ में कन्वर्ट नहीं करना था. वहां पर कॉल करके वन ऑफ द वर्स्ट बोर्ड्स व्हिच आई कैन हिट सो यू कैन किस माय हैंड्स. Still doing decent. Okay. कहाँ पर है? यार इनके बीच में कोई बड़ा हैंड नहीं हो गया ये हाई रोलर टूर्नी में. अभी यहाँ पर तो कोई और बैठा हुआ था. ओके, 28 के हैंड क्वीन जैक वर्सेस टेंस 3 बेट पॉट. समझ गए. जिला स्टार ने एक बड़ा हैंड खेला है विद जैक 9 ऑब्वियसली द नट्स. Oh, sick. So Zilla Star versus Lagotia यहाँ पर hand हुआ था. He opened from this position and Zilla Star defended. Flop came Queen 8x. Goes check. Turn is a 10. Zilla Star bets. Lagotia raises, Zilla Star calls out of position, river's a brick, doesn't change anything. Goes check, bet, check, shove. Turn पे check call, river check, shove when nothing changes. And Lagotia भी capped third, top of the range with king, queen 10, top 2. And Zilla Star had just the jack 9, the nutty. No. एक बार अपने इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं. I need the link though. Okay, this table is even getting worse. क्या हो रहा है मेरे साथ यहाँ पर? एक अच्छा सा बैग भी नहीं करने देते हैं ये. अर्जुन यहाँ आके मतलब मेरे से चिप छीन रहा है. ओके, दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉट लुक्स लाइक.
सो स्मॉल ब्लाइंड से 3 बेट पॉट होगा क्या ये? एंड 6-7 was trips which value owned itself. देखते हैं. It ran into a straight, but offsuit small blind से खेलोगे तो क्या होगा? अरे बाप रे. Okay. This is value. The guy played his hand so weird. बेचारे नट स्ट्रेट को भी कंफ्यूज करा दिया. ऑल राइट, तो इधर कहाँ गए? फेसबुक में चैट. एंड यहाँ पर शॉर्ट स्टैक के ऊपर रेज हो रहा है. वैभी 18 नाम क्यों सुना हुआ लग रहा है? ये किसका नाम क्या था? जेंटल मॉन्स्टर. अरे कितना जीते हो भैया? ओके ब्रो, आई कॉल. आई हैव किंग 10 ऑफ डायमंड्स. Doesn't look good, king 10 of diamonds, right? Ace 8 wins. एक इंस्टा स्टोरी डालने दो है. Hey, what's up? In WSOP COVID news, I'm streaming, so connect the dots. Link over here. Okay, I fold this shit and यहाँ पर क्या 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 डलता है? कैसे मैं 100 बिग ब्लाइंड से नीचे कैसे आ गया यार? मतलब ये स्कैम. अर्जुन मतलब आके मुझे 3 बेट करके पॉट शॉट जीत गया. अच्छा नहीं गया इसने, मतलब चीटिंग कर रहा है आदमी. Okay, so the post is up. Small FT if you want to show. अर्जुन चड्डा, कौन सी स्मॉल FT चल रही है भाई? सुबह का 2 बजे का टूर्नामेंट चल रहा है क्या कुछ? दिखाओ. बता कौन सा IOPC कौन सा वाला है, मैं खोल दूंगा. 3 बिग ब्लाइंड बैट फोल्ड. पता नहीं यार, इस बंदे के प्ले के बाद मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मुझे हाई रोलर खेलना चाहिए. नहीं. Wow, look at those badges on T2000. IOPC Legends, Micro Million, नहीं, Millionaire. IOPC नंबर 104 में पहुंच रखे हैं अर्जुन चड्डा. देखते हैं IOPC 104 कहां पर है. IOPC 104 में 8 लोग बचे हैं. 4.5 लाख गारंटी है. लीडर बोर्ड के लिए अर्जुन चड्डा कुछ भी करेगा.
ओ यही है सबसे छोटा क्या? 90 के अप टॉप इन 800 रुपी फ्रीज आउट नहीं, री एंट्री। आईडीज हैं मामा सीता, बजिंगा, 2-3 लोग मार्क्ड है, अच्छे मार्क्स तो नहीं है उन पे। ऑलराइट, लेट्स ओपन अप दैट टेबल। एक सेकंड दो। टेबल 2 इज गोना बी चेंज्ड। ऑलराइट, सो बजिंगा के पास है 20 बिग ब्लाइंड। ये क्षितिज है क्या? हाँ, शक्ल तो क्षितिज की दिख रही है। किंग SB 30, थॉमस शेल्बी पे इतना अच्छा नोट तो नहीं है मेरे पास। टेंस वर्सेस एस क्वीन, लेट्स सी हु रन्स बेटर। एंड किंग SB हैज बस्टेड। देखते हैं मास्टर क्लास देते हैं अर्जुन या नहीं देते हैं। मेरे अगेंस्ट ही रन गुड करते हैं या क्या? ऑल्सो अर्जुन, यू डिडंट से व्हाट यू हैड मैन दैट हैंड, जब मेरे पास 6-7 था। मतलब मेरे से राज सारे निकाल लेते हो और अपने आप खुद नहीं बताते हो, ये बहुत गलत बात है। So the guys, the table on the left is the one I am playing, and the table on the right is Arjun's final table. So hopefully we get to learn or unlearn some things. Most important is probably unlearning. पहले जो चीजें सीखी हैं उस टाइम कभी काम करती होंगी, but maybe they don't work right now. So forgetting things is also good. फर्स्ट प्राइज 90,000। यहाँ पर म्यूजिक ऑन। ये तो काउबॉय म्यूजिक आ गया। And maybe Arjun will let us know some of the hands he plays also. कहीं पर कुछ भी। मामा सीता 2 IOPC जीते हुए हैं। Has the pads Galfond। मतलब बताई क्यों नहीं देते आप अच्छे रह को? अच्छा, एस 9 हार्ट। अरे कैसे नहीं पे ऑफ किया मुझे एस के साथ? मतलब I was just hoping you don't have ace 5 of hearts. ace 9 दिया नहीं यार पैसा। गंदे आदमी, बहुत गंदे आदमी। या मैन, एग्जैक्टली मतलब वैसे हैंड्स को टारगेट करने के लिए मुझे छोटा जाना पड़ेगा कि रो धो के दे दे अर्जन पैसा। आई थिंक करना भी चाहिए। तुम लोग साले जीटीओ पे ऑफ कर दो, इतनी प्राइस मिल रही है, ये है वो है। Where is the 7 of hearts when you need it? रिवर पे 7 of hearts and अंदर बाहर हो जाता। ये थोड़ा अमेरिकन म्यूजिक हो रहा है, अपने बस की नहीं है। Okay, the next genre we are going to go to is, अभी तो डिस्कवरी मोड में ही जाना पड़ेगा। Am I missing a hand? Am I missing a hand somewhere? Okay, let's play what is trendy music right now. Okay, let's race.
Zarwan flats with 18 bigs. Okay, interesting. Cool. Jack 3-5. Don't expect him to have much. At King 10. 9-6 of heart 6. लगाने की स्किल ही नहीं है इनमें. अच्छा शॉर्ट स्टैक था क्या वो? देखो सबको 69 करने की कोशिश है अर्जुन की. 6-9 सूटेड Ace-9 सूटेड. कब जीतोगे तुम? And tens versus King Jack. River पे King लग गया Rage Monster का. अरे यार why Zarwan why? Open man, at least I can 3-bet shove. I had Jack 10 of spades. Short deck तो है नहीं कि call off कर दूं. Ace Jack versus 6s and 6s ने क्या backdoor लगाया? And Arjun gains more points. Thomas Shelby calls. अच्छा तुम लोगों ने Maverick देख ली क्या Top Gun? I really liked it man. Pretty sick. मुझे तो काफ़ी मज़ेदार आया. मैंने ईशांत को पूछा बाद में, मैंने बोला तू देखने गया है क्या अभी तक? बोला नहीं. मैंने बोला कि है क्या? मैंने बोला तूने टॉप गन नहीं देखी ब्रो? बोलता है नहीं मैंने टॉप गन पार्ट 1 नहीं देखी. मैंने बोला कोविड ख़त्म होने दे, उसके बाद साथ में बैठ के देखेंगे एक बार. निशांत को ना वीडियो कॉल में लाना चाहिए, बगल वाले रूम में ही है बेचारा, पर कोविड की वजह से इधर तो नहीं आ पाएगा. And then there were 6 apparently. 600 पहुंच गई है फाइनल टेबल अर्जुन की. The nerd guy decides to fold. We will raise. अर्जुन फाइनल टेबल देखो अपनी, क्या डिफेंड करोगे? डिफेंड कर दिए तुम है. इतनी जरूरत तुम्हारी, इतनी हिम्मत. ठीक है ब्रो, अपना लग गया, फोल्ड करा और क्या. देखते हैं ये क्या करते हैं यहाँ पर हीरो. एस जैक था वैसे मेरे पास, एस ऑफ क्लब्स भी था मेरे पास. बेट शव करता मैं सीधे मुंह पे. अर्जुन के पास अब 10.5 बिग ब्लाइंड है. मामा सीता वर्सेस उमेश के हैंड चल रहा है. Okay, Mr. Misik decides to flat instead of 3-betting. Unlike his style is more of let's 3-bet. Okay, quarter pot on this board. King deuce. I think both of us have enough king access. Turn check. I mean, he calls bet. So double flush draw board. Gotta go big or go home. And he's thinking. He calls rivers a deuce. And let's go this.
अब इंड्यूस हो गया या तुम्हारे पास किंग होगा ये सोचना पड़ेगा. He calls. He has sixes full. At ace queen high. Mm, okay. ये भी सही है. He turned full house. Yeah, he's only supposed to call turn. Unlucky for him, no flush completes. Like because he's mostly keeping me on flush draws. Yeah, a king है तब तो super cooler हो ही चुका है. He has a full house. He doesn't need protection from flushes. थकान लग रही है यार यहाँ पर. कितना टाइम बचा है अपने को? Late registration closes right now, and we have 43 bigs and 3 more levels. Next level is 24, right? And 27 की बात करी थी ना हमने. Okay, half an hour more. 24 मतलब 40 मिनट और. Will we survive 40 minutes? 24, 25, 26, 27. Oh no, 5 more levels. अभी शुरू हुआ. 50 मिनट और. 50 मिनट और. लालच आ रहा है मुझे. 100-200 PLO में बैठ जाएं क्या? 50 मिनट स्पिन करते रहे. देखते हैं कुछ PLO वेलो चल रहा है क्या? $501K में सीट है. ओह मैन, दैट इज 6 कार्ड. खेलना ही नहीं आता. एक्शन तो है यार. 6 कार्ड में भरा हुआ है एक्शन. बाप रे. 5 कार्ड में भी 100-200 पे 2 टेबलें फुल चल रहे हैं. कुछ करना है सर्जन ने? नहीं करना है. 10 बिग ब्लाइंड से 17 बिग ब्लाइंड हो गया. कैसे हुआ? So Bazinga obviously had kings against the lowly 4-3 off. लिम करा स्मॉल ब्लाइंड शायद. ट्रैप किया बंदे को. चौकी पैर लगाने दिया. चेक रेज किया. टर्न. ओ बेचारे को क्या फंसा दिया. गंदा आदमी. क्या चल रहा है यहाँ पर? 4.5 and 11. Flush completes. A 10 is there. And Bazinga goes all in most likelihood. ICM उमेश पे इतना कुछ है नहीं. Okay, we need to get back to 80 big blinds in this crown. मजाक हो गया है. अर्जुन जब से आया है बदनसीबी. अब ये स्पेड भी नहीं लगा पाता एक टर्न पे. टर्न पे स्पेड लगाता फ्लश बन जाता. इतना तो सीख लो, समझ लो फ्लश बनता कैसे है. अर्जुन बंदे ने क्या स्लो रोल मारा अर्जुन को एस क्वीन के साथ. मच डिजर्व्ड. And Arjun is down to 5 big blinds, shortest of the bunch. 6 लोग बचे. ये स्पेनिश सॉन्ग चल रहा है क्या थोड़ा?
और नहीं तो क्या, अहोरा बोला है भाई उसने. It's not English. Ahora, it means right now. Ahora means right now. Please understand. Digame means tell me. Libre means free. Loco means crazy. क्या है इसके पास? ओ बैंकर, इन लोगों के पास यहाँ 12-12 बिग ब्लाइंड में रेस फोल्ड है अगेंस्ट बजिंगास बिग ब्लाइंड. सही है यार. मेरे पास एस क्वीन था. आधी अधूरी स्पेनिश समझ में आती है अपने को. थैंक यू योगेश, थैंक यू. या आई एम फीलिंग प्रीटी वेल. स्ट्रीम के स्टार्ट में भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था, अब ठीक लग रहा है. Probably need a little bit of water. I'll be streaming for 50 minutes more. Bag and tag and then gonna sleep. रात भर भी पूरा ढंग से सो नहीं पाया. ये देखो, एस आई होल्ड नहीं हो पाता इनसे, अर्जुन से. शाला हबीबी से फन चैंपियन. What's up hero? What's up? What's up? Arjun, where is the skill, man? Like, you can't win with Queen 8 suited against Ace Queen. Like, I win that every day. And then you can't win with Ace 5 suited against like Jack Rag. कैसे हो सकता है? मतलब, you've lost it, Arjun. I think it's time, Arjun. It's time you and I. यहाँ पर क्या हुआ? 6-5 वर्सेस एस जैक. मतलब इस टेबल पे यहाँ 40-40 बिग ब्लाइंड के पॉट खेले जा रहे हैं. Okay, my hand is not visible, right? Because I want to change the table. Table 2, I want to bring back Titu Tauji's table, high roller की. अरे हाई रोलर की टेबल ही गायब हो गई. चलो ढूंढ के लाते हैं एक और हाई रोलर की टेबल. है तो यार यहाँ पर. ये रहा सुपर हाई रोलर. एंड यहाँ पर वी गेट टू डिफेंड किंग क्वीन 7. चलो फाइनल टेबल जो हम देख रहे थे वो अब नॉट इंटरेस्टिंग फॉर अस बिकॉज आवर फिश हैज बस्टेड. What are you raising over here? मैं भी पीछे हूँ. So King Queen 7 Rainbow. सारवान क्या कर रहे हो? समझ में नहीं आया. यहाँ पर HR में क्या चल रहा है? बटन ओपन and Titu Tauji calls and we go all in. Sarvan. He's tanking, so he probably has a hand. And he's thinking. He's thinking a bit more. I had ace 9 of diamonds. पीछे हेंड्रिक्स के पास भी 20 बिग ब्लाइंड है, तो इतना कुछ सोचने का स्पॉट है ही नहीं वहां पर. या चैंपियन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन. लेट्स ओपन. अमोद कौन है? Anyone wants to help me out and tell me who Amod is? आते ही 3 bet. मेरे पास ace of diamond है, I'm folding. I have ace 7 off. I have no history with the guy, so I have no clue.
तुम लोग बताओगे, बता देते वो चड्डा है तो मैं 4 bet शॉप कर देता वो इस 7 ऑफ। T2 Tauji versus KSR. Definitely feeling tired now. The young days are gone. I'm not even sure about this fold, especially against Devang. Okay guys, यहाँ पर तुम कौन से इस बंदे को फोल्ड करने दो फिर बताता हूँ, because he is definitely watching stream and don't want to give me information. He's like patiently watching for me to say some information. नहीं नहीं नहीं, कौन से king axis fold करोगे? Oh my god, I say king axis and I make trips. He obviously had the better hand, but what king x is the worst king x you call? उसने शव किया था 8 big blind के लिए and you were hijack? Yeah, I was hijack. We would have made trips. We would have made trips. Lord Hendrix के stack के लिए था डरने रहे, अमोद के लिए we'll obviously fold. Buzzing, I think it was a much easier call than I thought it to be, because either it's really small stack size or it's really big. Yeah. When I've called 8, I have to call 10 more, so that doesn't become too big. शायद bad fold था, lucky हो भी जाता मैं. Pentacoda versus Zilla Star. Welcome everyone. Oh, we've reached peak on amount of people. We're 37 people watching. The glory days are gone. We love the 37 itself. इतने सारे शॉर्ट स्टैक हैं बटन स्मॉल ब्लाइंड पे कि ये छोड़ना पड़ रहा है. देखते हैं, पूछते हैं. और देखिए 5-9-3 पे एक्शन. Oh my goodness, what the hell? What? अच्छा, इस बंदे के अगेंस्ट पेंटाकोटा just values over one top pair much higher. Yeah, makes sense. Give him a bad beat. 9 high like 8 high like a boss से जीत गए. This guy is definitely not loving it. Deep Patel, what's up? What's up? What's up? You've come at the correct time. We're trying to bag and tag in this 4 crore guarantee crown 1D. काफी अच्छा smooth sailing चल रहा था हमेशा से on a single bullet, but now we're down to 40 big blinds. Oh, let's see SHR of Bazinga. All right, James Dean, that is a good idea, and that's exactly what I'm gonna do. Where is the SHR? He did say he's registered late, so I'm guessing he's in by now. बजिंगा की चिप्स कितनी है ये बताओ, ऐसे ढूंढने में तो बहुत टाइम लग जाएगा. And if Zarwan wouldn't have done it and I would have done it and I would have rivered 10. Oh, buzzing has 66k chips. Starting chips कहती थी इसमें 50,000. बजिंगा की टेबल नंबर क्या है? अब टेबल नंबर ऐसे ढूंढते ढूंढते तो थकान लग जाएगी. Folded 10 deuce in the small, 10 deuce off.
यार मैं सारी टेबल्स देख लिया, बजिंगा का है ही नहीं, लास्ट नाम है क्या? स्पीशी पे 26,000 है, ये दिख गया। सबके सब चंडीगढ़ की मछली। 11 बिग्स फोल्ड। किंग 10 सूटेड छोड़ना पड़ा उस 11 बिग ब्लाइंड के शॉप के अगेंस्ट। करो डिफेंड अर्जुन, करो डिफेंड, आ जाओ। डिबेट शॉप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक माय डिसीजन इज लेवलिंग कर रहा हूं ज्यादा। कितने कमीने लोग हैं? Just tell me the table number, man. I can't find the table number. I have a question. Blind versus blind. हाँ, मतलब that has to be the case. यार, I think by late stage ना, you could deviate from theory decent bit because you've made history with a lot of people. You know, some people are they just don't have it within them. So you can deviate over there, but starting early part of the tournament before ITM, ठीक है bro. Like 10 से 25 big blind. Table number 5. Table number 5 is Arjun. तो मुझे पहले क्यों नहीं खुल रही थी ये? अभी भी नहीं खुल रही वैसे तो। वॉच टेबल। Gaisha, we can't call off. We have, yeah. And oh, pretty nice table actually. डायरेक्टली आ गई क्या? मुझे लग रहा है डायरेक्टली आ गई वो टेबल सामने। बहुत सही। I'll try readjusting it. Okay, so blue chip. Oh man, I have history with this ID. Not a good history also. Do I want to say it? Not on a sponsored stream. Midge is Kanchan. Bazinga is Bazinga. Ivy is, I think, Sriharsha, right? Yep. And हरीश तो पता नहीं कौन है। माइक माइक फॉर बाइक। बोल आंटी बोल ओवर ऑन द 3। टेबल चेंज हो गई क्या मेरी? नहीं, बीस्ट ये कहां से आ गया? सब लोग मुझ पे 3 बेट शव कैसे कर रहे हैं? दिस इज नॉट फेयर। माय बैक इज किलिंग मी। Okay, so my king 4 would have made a full house, but his 8-4 made trips. That's unfortunate. King 4 off. Ivy versus blue chip. These big blind, I don't think I need to start limping here yet. Raise. Yeah, blind versus blind, 10 to 25 big blinds even becomes easier in one sense where
लाइक लिम शव रेंजेस में भी 10 से 25 बिग ब्लाइंड्स डिफाइन हो जाती हैं, देन लिम कॉल रेंजेस में भी डिफाइन हो जाती है, तो मतलब स्टैक टू पॉट रेशियो इतना छोटा हो जाएगा कि मतलब decisions are so easy, like one pair, yay, let's go, top pair. So yeah, blind versus blind, देना ही है, लेना ही है. Late stage tournaments, risk premium on going broke ranges. वही बोला ना, late stage में I don't think so. Late stage में the best part about late stage or the worst part about late stage is the discrepancy in stack sizes. There'll be one guy who'll be like outright chip leader. There'll be a guy who's short stack. There'll be a guy who's second in chips and he thinks that he can just hold on to second in chips and finish the tournament in second. So there's like so much extra information that you've gained already in the past 2-3 tables. Ki I think you can play much better. I don't know, man. Like I exactly don't know what you're looking for. But blind versus blind, broke होने में, bluff करने में, bluff पकड़े जाने में भी इतनी शर्म नहीं है. Like your ranges are pretty wide, so yeah, I was bluffing, bro. I was bluffing. What the hell? शर्माने का नहीं. Hey, we've got Ash joining us. Gotta split the profits with the ones that came with your other homies, share the vision, yeah, we got the same picture. You won't catch me in the club, I like to meditate. I be higher than a bird, I like to levitate. When I ask them how they doing, it ain't never great. So I be focused on the money, need a better rate. Baby girl eating veggies, doing yoga at the crib. Swimming in the wind. ये तो अर्श वाला म्यूजिक चल रहा है, हिप हॉप. पता नहीं गलती से आ गया है. And IV opens, तो देखते हैं. Bazinga flats the button. 75 effective. Ace Queen 9. Haristo भी big blind defend किया. Nothing out of the ordinary till now. Now this is something out of the ordinary. Betting one big blind into 7 into the initial aggressor on Ace Queen 9. So Haristo पे कुछ तो लिखना ही पड़ेगा. Shri Harsha calls, Arjun calls as well. Turn ace. एंड अपनी भी टेबल पे बजिंगा ने बुला लिया है दूसरे को. Rivers is 7, so Jack 10 definitely doesn't get there, which was the main draw which people could have. I don't think Bazinga ever checks an ace on the turn. So, and now what does Ivy want to define? He can still have some big hands, but I don't think Bazinga has a lot of big hands over here. Like his biggest hand is like what, Queen Jack? Queen Jack of Spades. सही में. Interesting. He goes for pretty big bet, which I wouldn't have expected, especially after he checks back turn 3-way. Ace 7 of Spades. अरे कहना क्या चाहते हो बजिंगा, या क्या है तुम्हारे पास 80% के लिए? Shriasha, show it to him. Check raise 72 big blinds. ब्रेक आ गया. Ace King versus Ace King, दोनों ने घर बसा लिया. Definitely feeling tired, but hopefully you guys liked the stream till now. Stream अभी भी चलेगी, आधे घंटे और तो चलेगी. अपने को बैग करना है यार, अपने को बड़ा बैग मारना है. बड़ा बैग मारने से क्या होगा कि सीधे मिलेंगे हम संडे को खेलते हुए. अभी यहाँ पर वर्ल्ड सीरीज की आई थिंक मिलियनेयर मेकर है वीकेंड पे.
I won't be playing it because unlikely I'll test negative. And to be honest, I don't even feel like playing WSOP right now because of the COVID scene. मैं देख रहा हूँ हर एक बंदे को हो रहा है, अपने को भी हो गया है. So I don't know how I feel about it. Like people have asked me the other day, Sapra messaged me, Ashish messaged me, and I was recommending them also. यार छोड़ो ना वर्ल्ड सीरीज क्यों आ रहे हो, अगले साल मेन इवेंट आता रहेगा हर साल, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. But maybe when the main event's closer, I'm like, fuck it, man, just play the main. पूरा N95 mask, hazmat suit, सब कुछ पहन के पहुंच जाएं क्या? That might happen. I'm not saying that might not happen, but still a little off flavored in the mouth because of the whole scenario. जैसे मुझे याद है 2021 में mask mandate was still on, where they were like, yeah, खेल सकते हो publicly, but still have masks on. But अभी तो ऐसा है खुल्लम खुल्ला, people are coughing on each other's faces and they're like, yeah, if we have COVID, I don't care, it's fake. ऐसे वाले discussions चल रहे हैं यहाँ पर. Hey, I'm just seeing on Facebook Zarvan's picture with a trophy. Congrats, man, congrats. The Rafael Nadal of India poker biting yet another trophy. Oh, that's his wife who's done that. Awesome, awesome. It's good to have a support system. Like, it's great. Like Zarvan's life. It's one to be envious from, but I don't feel envious. I feel like this is something which you should be like aspire to have, like pura support system. He had his plans. He is coaching one of the female players, I'll say, about how marriage is done. You date for 2 years and then you get married and then you get kids. I was like, and our discussion was, I actually used to think Zarwan's much older than me. क्यों? क्योंकि he studied in Dubai and that's where he started playing poker. And he's been in the circuit so long, मुझे लगा मुझसे कम से कम 5-6 साल बड़ा होगा. And Zarwan's actually like a month or two younger than me. And I'm like, holy shit, ये कैसे है? Did I test for Vokid? I know I have COVID, bro. I know I have COVID, so that's why I'm self-isolating. That's why I'm streaming also. क्योंकि that's what we can do living alone. अच्छा, guess your hand क्या? सत्तियां वत्तियां थोड़ी दिखाओगे यार, अर्जुन ऐसे कैसे यार? So Arjun's telling us to guess the hand. I'll again repeat the hand for you guys. So Ivy raised 2 big blinds. ये Bazinga calls. Haristo calls with like such a short stack. Ace flop comes Ace Queen 9 Rainbow. Haristo bets 1. Ivy calls 1. Big blind by Bazinga calls 1. Turn is the Ace of Diamonds. Brings the backdoor flush draw. Goes check check check. River is a 7. Brick 7. Goes check check in 10 big blind pots. Arjun bets 8 big blinds, which is like, ये कहाँ से आ गया भैया इतनी बड़ी bet, like. And Haristo obviously fold and Ivy also folds. And I'm like, what do you have over here? Yeah, I guess you can have 7s, but what else are you representing here? It's like so bluffy when you take this line because you're supposed to bet an ace on the turn. तो ace x के तो combos भूल ही जाओ. Do you really have ace queen? Would you call just on the flop? Interesting. Ace queen of spades. ये कैसा माया जाल बिछाया जा रहा है? No man, I still think you even bet ace queen of spades on the turn, even if it's the nuts, it's a full house. इतना confuse करता है ये अर्जुन बंदा मुझे. So what do you guys think? I explained the hand to you. What do you think? Bazinga had 70 big blinds effective over there. It's like, क्या था bro? Oh, thank you, champion. Vlogs had a lot to do with the team also, man. Everyone was involved. So a lot goes to the people who are not visible.
So guess guys, what do you think Bazinga had in the super high roller 1.25 crore guarantee, in which we donated like 13.2k trying to get in, and 7 dues के साथ अच्छा, he had the best hand, man. What can I say? He had the best hand. And Arsh does not raise. Wow, that was surprising. And ये भैया raise किए, and friend of the stream I'll say 7-6 के साथ कौन खेलेगा? I'm such an idiot. I just set out my hand. Oh man, this stream thing. Okay, बता भी दो बजिंगा, अब है क्या तुम्हारे पास उस हैंड में? I don't know. He said he was on the. He was watching the stream, so I just marked him friend of the stream. As simple as that. And I just told him my hand also, which was pretty foolish of me. Oh, look at this beast. IOPC, FTS. Millionaire, FTS. Arjun, कैसे मतलब? Where is that skill you used to have where you can never lose with sevens? Now you get like the guy beach 7-7 ही थे, मतलब मछली ही हो ना, मैं कह रहा हूँ वहाँ पर मतलब ब्लफ्स हैं या फिर सत्या ही पहुँच गए हो. पोलर जा रहे हो रिवर पे, क्या उम्मीद कर रहे हो? क्या कॉल करेगा तुम्हें वहाँ पर, हैं? ये देखो, किस्मत इनकी 10 आती हैं, उसके बाद ट्रिपल अप मिल जाता है इन्हें. एस क्वीन 9 पे देखो, सेवंस का फ्लोट एक बिग ब्लाइंड के लगाएंगे टर्न पे सेट. उम्मीद टर्न पे भी लगाए, सीधे रिवर पे ही लगा लिया. Man, things have really gone down street. We had 100 big blinds at one point, pretty deep in this one. Now we only have 25. Level चल रहा है, level number 26 चलेगा 2 मिनट में. So essentially 22 minutes more. 9s versus 10 jack. Haristo is out. Na. Oh, we've got a lot of new people also coming in the Discord channel. देखो अपना Discord channel अभी ऐसा है जैसे it's building, guys. It's building, but with Spartan FTs and WSOP FT live streams happening, and maybe like hustlers, cash games, and all those things happening, discussion time pass करने के लिए group चाहिए तो it's a good place to hang out. I'll definitely do something, especially when I have COVID over here. Okay, so an open by Arjun, a flat by Mike, and Ivy 3 bets. 986 board. देखते हैं what sizing Ivy wants to go over here. 27 bigs. कितना stack size है? 72 effective up. So they started essentially क्या? 82, 83 effective. No. Okay, did I miss something? Check.
Turn is double flush draw. Okay, here's the Discord link if you want to join. And he goes pretty big, 80% से थोड़ा कम. And यहाँ पर भी बजिंगा के लिए टफ स्पॉट और मेरे अगेंस्ट तो टफ स्पॉट होगा ही. So we defend. Board is ace deuce 3. Bazinga calls in the SHR. Backdoor flush completes. And यहाँ पर तो ace 3 4 2 पे फोल्ड करना पड़ेगा. देखते हैं इधर वाली सिचुएशन में क्या होता है. Like IV definitely converts one heart like an ace heart, king heart into bluffs. अब मैं उसका decision making change नहीं करना चाहता बजिंगा का यहाँ पर, so मैं explain नहीं करने वाला. भाई को करने दो, लाख की बाइन है. And over here against Arsh, 13 big blind effective. We go in. Arsh is thinking. We had ace king. Pretty tough spot for Bazinga for sure. Like this is straight up. Okay, I have my thought process in my head. As soon as he folds or calls, I'll say those things out. Tens versus ace queen idhar. He wins the small one, but what's gonna happen in the big one is what everyone's waiting for, right? क्या चल रहा है अर्जुन के दिमाग में? No. Pretty tough spot, right? But I don't think like Ivy has too many suited. I understand they're deep, so he even has like 9-8 suited और ये सब बकचोदियाँ. But I think a guy of his caliber has a lot of ace hearts, king hearts also. So can't be folding all of your queen x's. Pretty tough spot. पूछते हैं क्या था भाई अर्जुन वहाँ पर? So board was so 10-7 was straight, right? So 9-8-6 was it? 9-8-6 2 diamonds. एक बार मैं board पर ढंग से देख के बताता हूँ. Yeah, 9-8-6 2 diamonds, turn queen of hearts, double flush draw, and river 3 of hearts. And essentially it was 3-bet squeezed. Initial aggressor Arjun called. Flop went check. Turn went 20 big blinds into 26. And river effectively 51 shove, I think. क्या था अर्जुन? तुम सीधे एस क्वीन ही फोल्ड कर दिया क्या क्वीन एक्सेस है तुम्हारे पास वहां पर? You don't have king queen of diamonds. You don't have. Do you have king queen of diamonds ever? पता नहीं. पूछते हैं बताएगा क्या ये. पहले हैंड इसका कंप्लीट हो जाए. फिर से आईवी के साथ लड़ने पहुंच गया है. नोड लॉकर. कौन है ये? मिथुन महेश. यहाँ पर भी गलत लिख रखा है मैंने इसीलिए. मिथुन मस्त जगह रहता है यार, रत्नागिरी. तो मैं जब गोवा की रोड ट्रिप किया था उसके बाद उससे काफ़ी चीज़ें पूछा था वहाँ की. एंड आई एंडेड अप विजिटिंग वहाँ के उनके हापुस के आम खाए. एंड वी एंडेड अप स्टेइंग इन अ होटल. आई वोंट इवन से अ होटल. इट वाज लाइक प्रीटी बजट प्लेस नेक्स्ट टू द बीच. काफ़ी अच्छी जगह थी. इट वाज लाइक 1000 रुपीज़ अ डे आई थिंक. काफ़ी चीप था. एस क्वीन ही छोड़ दिए तुम. मैं सोच ही रहा था तुम एस क्वीन में भी यार. एस क्वीन था. बाप रे. एस क्वीन ही था. पता नहीं यार आईवी के अगेंस्ट छोड़ पाऊंगा मैं.
I understand he has one pairs also for value, kings and aces, but you know, it's Ivy. You give it to him. मेरा सबसे फनी हैंड आईवी के साथ उसमें एक टूर्नामेंट में पीकियो में एंड we're playing heads up for like a 2 lakh bounty and I merge shove river. I'm like, he can call with worse and I'm never folding against his top pair, so I just go like check call, and when the open ender completes where I had the blockers to, I just shoved and he tanks and tanks and tanks and tanks and tanks and calls with third pair and I'm good. I'm like, yes! Obviously I was wrong doing that, but it worked out. Queen Jack better to call than Ace Queen. So you're saying, but do you really expect him not to bet Jack 10 on 8-9-6? Funny, I don't expect him to not bet. Especially out of... Pata nahi. When Arjun says I'll agree, he obviously does more work than I do. कहाँ अपना 20 बिग ब्लाइंड यार, ये कैसे होता है? मतलब हमेशा टूर्नामेंट जो स्टार्ट होता है, मॉन्स्टर स्टैक में भी यही होता है. मतलब ब्लाइंड चल रही हैं 600, मेरे पास है 1.5 लाख चिप्स, 250 बिग ब्लाइंड डीप खेल रहा हूँ मैं, और यहाँ पर भी मतलब 100 बिग ब्लाइंड से, और अचानक से अब मैं देख रहा हूँ मेरे पास 20 बिग ब्लाइंड है. कहाँ से 20 बिग ब्लाइंड पहुँच गया मैं? दिस इज अ शेम. All right, Arshanai, and we go all in. पिछली बार भी ऑल इन गया था, उस टाइम एस किंग था, इस टाइम क्वीन 4 था. So things have been going our way, that is for sure. And मुझे आवाज आ रही है, लग रहा है निशांत उठ चुका है. एक्सटेसी नाम तो देखो. एंड बटन पे रेज. Arsh folds. Amod is thinking. Amod calls. Flop is King Jack 7. We are gonna bet this much. And Amod is gonna think. And he check raises. And we are all in, and we have aces, and he has king 7, and king 7 is good, bro, because aces likes to be cracked on the final level of the day. कैसे करते हैं यार ये? Yeah, it's fine. King 7, yeah, he has to defend, he has to check raise, and he has to win. हमोद को देखो, अर्जुन सर को, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, जी जी थैंक यू सर, गुड गेम. ऑलराइट, वी बस्टेड. इतनी मेहनत सब डे 2 भी नहीं करने देते हैं कमीने लोग. दिस वाज द सेकंड लास्ट लेवल और द लास्ट लेवल? दिस वाज the second last level. Last level starts in 1 minute. So I guess this was how it's supposed to be. So I'll have to end the stream over here. Thanks for joining in. मज़ा तो आया, कुछ तो अलग करने को मिला पिछले 2 दिनों में. I've just been cursing my luck on the bed. Now I can curse it while I'm running my aces into 2 pairs. So thanks for watching, and I hope you guys had fun, and we'll do this again soon enough, probably in like less than 24 hours. Chalo, enjoy.
Thanks for hanging around and do like the stream. Comment afterwards if you like it. Take care. Bye.